and all welcome for everyone. Those who are just tuned just now in your YouTube channel, we'd like to give a special good morning for every viewers of Mangalore Media YouTube channel. So we'll short while we're going to start the match number one of the day number final between Kodical Indians versus Kodical Create Challengers.
I request the two teams captain, please report here for the tossing ceremony. The captain of Kodical Indians Yatiraj as well as captain of Kodical Create Challengers Sandeep, please report to the commentary box immediately for the toss. I request the captain of Create Challengers to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
So welcome back. Good morning, cricket lovers. Once again, it's a very good day for cricket, and Vishal cricketers Kodical proudly organizing Kodical Premier League Season 3. And after that, the match is resumed because of rain in the last day of this cricket tournament, and we're going to continue now. And everything is looks to be fine here for this prestigious Kodical Premier League Season 3. And as a silver jubilee celebration from Vishal cricketers Kodical, and in the occasion of that silver jubilee, they wanted to make that silver jubilee the memorable one, and so that so far it's a very good tournament in the name of Kodical Premier League Season 3, and we are into the very interesting match. Two toppers of the Group A will go into clash in the first match of the day number final. Kodical Indians under the leadership of Yatiraj and create challenges. Kodical create challenges under the leadership of Sandeep. Definitely this is going to be a fantastic match, high voltage match for the first match itself. The two teams we are talking about, they've done a great job actually in the league matches. They're unbeatable, unstoppable in this particular tournament, so that the level of competition is definitely, it's going to be very interesting, and it's really electrifying and between these two teams, and certainly they wanted to continue their winning runs in this prestigious KPL Season 3, and wait and see which team will go in to get full points and which team will becomes unbeatable in the league stages. So now, after winning the toss, captain of Indians are elected to bat first, so that captain himself is walking towards the middle along with this partner. The very successful opening pair. Hafiz has got a run from the bat so far in this tournament. He's really got a good tournament from the bat. And Yatiraj also, they got one or two matches. He played a very good innings, captain's knock. And they wanted to continue that opening stance in this the big match as well. Hafiz coming back to Hafiz. His first match he scored 15 valuable runs, and then second match he scored 28 valuable runs. He is a hunter as far as in this particular tournament is concerned. As far as the run is concerned, he's stocked with the bat already, and already scored 40 plus runs from his bat, and along with his captain Yatiraj, he got some runs from his bat. But this match, certainly the two toppers wanted to continue their winning track in this league matches as well. So straight away, two umpires are walking towards the middle, two very experienced umpires out there in the center in the field, and umpire Arish Padil, and at square leg umpire Roland Pinto, two very good umpires for this wonderful Kodical Premier League Season 3. Will going to start with a bright sunny morning out here in this UCG cricket ground, and everything seems to be perfect. And the first ball from the commentary box, and first delivery of the final day of this Kodical Premier League. Lovely delivery indeed, right on the money, right on the target. The first ball itself, the bowler knows that the condition is so good for the bowling. The Prashant is just bowling a right line and length, slower one. Yatiraj looking for the drive, but not really getting that much of timing behind the stroke, and back to bowler, and there is no chance of any run. This time he lost it. Keep that one towards the mid-wicket region. No, there is no fielder in that deep mid-wicket region. The long on fielder have to run across towards his right to field the ball down at deep mid-wicket region. Ample time for Yatiraj before the throw coming from Sumit, who is standing in the deep wideish long on region. And a couple of runs here for Yatiraj straight away, and looks like it's a cramp here for Yatiraj, and he's just got a couple of runs. He run hard between the wicket to get that couple of runs, but he's got a positive start from his bat. Prashant away from us, right arm over the wicket. Oh my goodness, can you believe this? Opportunity is missed out by the wicket keeper behind the stump. Will it going to be the big miss? Why not? Yes, it is a big miss, because Yatiraj is a very dangerous batter as far as the opposition is concerned. Little bit, maybe the wicket keeper behind the stump early into the try. Ball is little bit came late to his hand. Already just tried to dive to his right to take the catch, but couldn't manage to hold that catch. And unfortunately, that ball fallen, and after hitting the palm of his hand, and then ball is just dropped
by him. But Yatiraj is not feeling good in the middle, as far as I just already mentioned. The first ball, second ball itself, when you are running hard for the second run, is one of the biggest problem I've seen for my Yatiraj so far. And whenever he's running hard, might be he's having a little bit problem with this right leg, as he got a little bit cramp, and looks like he's now fine. Two without loss of any after getting a chance in the previous delivery of the over number first, and wait and see how Yatiraj will going to continue. Prashant, right arm over the wicket. Delhi was beautifully driven. That was straight down the ground towards a deep long on boundary for 4 runs. This is a one stroke. You can't set a field for that. Whenever the batsman hitting it straight down the ground, as straight as an arrow, just passing the bowler, right of the bowler, just pass of the umpire Harish Patel, right of umpire Harish Patel, and ball running down to deep long on boundary for 4 runs. Delightful stroke there from Yatiraj. He is a very good striker of the ball, especially in front of the wicket. He's very strong. He's never really missed the opportunity whenever the ball is around the middle and leg stump. He's really loves to play that one. Look at the field set actually. The previous delivery, there's some deep mid wicket, one a deeper long off, wideish long off, so that Yatiraj finds the gap and he got a positive start. 6 without loss of any wicket. Prashant, right arm. Ooh, that was a delivery which is little bit with his offer there for Yatiraj. He's going for the slash, but missed it completely. Might be a little bit extra bounce in the occasion there from Prashant, defeating the bat of Yatiraj, and the wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. 6 without loss of any wicket. Kodical Indians in this first over of the power play. Right arm over the wicket. Delhi was. This time he lofted it beautifully down to deep longer. Will it go into a chance? No! It's not a chance here. Look at the two very good strokes coming from the blade of Yatiraj. One towards the deep long on, and the next now it's towards the deep long off. He's such a wonderful striker of the ball when he's in a rhythm. Absolutely nothing much wrong with the delivery, but he know exactly where the fielder is. The mid-off is up in the circle, so you're just choosing that ball to go over the top of that mid-off fielder, and there's no chance at all for the wideish long-off fielder to cut it off. One bounce over the off for 4 runs. So captain himself has got a good start, positive start. Maybe Yatiraj is thinking about if I'm not really having a fit enough to run between the wicket, why not I'm deal with some boundaries so that I avoid the running between the wicket. This is a good strategy again from Yatiraj to picking up the boundaries. He's dealing with the boundaries, and after he run hard for the second run, the second ball of the over, then he was just choosing that that technique of hitting the ball over the top of the fielders, and he got 2 valuable boundaries. 10 without loss of any wicket after completion of over number first. What a fantastic tournament we have got in the last Saturday and Sunday. Actually, it's a very good tournament. It's a successful day number 1, Saturday, but unfortunately, the day number 2 of this cricket tournament, when it's rain interrupted that the match. It's a heavy rain actually in the afternoon from 12 to 3:30, so that a lot of rain stocked in the UCG cricket ground, so that very difficult for the organizers and for the umpires to continue that match. So that is a day which is called off. Today, this is a fantastic day of cricket, isn't it? Absolutely bright sunny morning out here. There is no clue at all for the rain here. The very, very good shiny morning out here in the UCG cricket ground. So from the Aloysius D'Souza and proprietor of Jack's Panji Maguru, one of the big sponsor of this cricket tournament. And we really would like to give special thanks to Aloysius D'Souza for your contribution for the success of this wonderful cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3. Prithviraj brought into attack from the far end. Second and last over of the power play. Hafiz is on strike. First ball outside the line of off stump, and umpire just wanted to see that whether the ball is going away or not. Roland Pinto absolutely right. There's a wide delivery, because the bowler came right in front of umpire, so very difficult for umpire to see the line of the ball. Absolutely, that is a wide delivery. Ball just deviating and going away from Hafiz and further away the line of that wide outside the line of off stump. Again, the second wide of this over. So starts with some shackling start here for the bowler, as Prithviraj couldn't manage to find his line, and he's getting some extra turn, but he couldn't manage to contain the line what he wanted to do. This is a better line, absolutely better line. Appeal for leg before wicket. Certainly that ball is going to miss outside the line of off stump, going to miss the stump off stump because of the deviation as you bowling a leg cutter, and certainly the impact of the line is outside the line of off stump. Just seeing the turn of the delivery. Right call from umpire Roland Pinto. Good decision
13 without loss of any wicket here in over number second in progress. Prithviraj from the far end. This time straight to the hands of mid-on. Yatiraj this time couldn't manage to clear the infield as he got a really good two connection in the previous over. He's able to clear the infield. This time he didn't got that much of elevation he was looking for. And ball went straight to the hands of mid-on. He's making no mistake at all. The wicket number 2 is first is back into pavilion. 13 for the loss of 1 wicket. So this is a really good breakthrough here for create challengers as they knows that Yatiraj is a very very dangerous player. And it's a very interesting to see that Prithviraj picking up the wicket of Yatiraj. 2 Rajs out here. One is Prithvi, one of the Yati, and Prithvi is won the battle against Yati. 2 Rajs out there, and 1 Raj is won the battle. And it's going to be a big breakthrough here for Kodical Indians, losing captain in the first. Actually, it's the first legal delivery of this over as he bowled 2 wide deliveries. So that a new batsman. 2 balls completed, little correction. Chetan bowling from the far end. Little bit. Chetan is a new batsman facing Prithviraj. This time again that ball is just curving around the legs of the batsman. He tried to push that on the onside region, but not really able to make a good contact with the bat, and there is no possibility of any run. Good comeback by Prithviraj after he got a shackling start with the wide deliveries. This some lovely shot, beautifully driven down to deep extra cover region before the fielder from deep long off region to run across to his left to field the ball. Ample time for Chetan to complete the single. He's off the mark with the single with the confident looking off drive. And with that one scoreboard now moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket here in over number second in progress. Prithviraj again with a short run up right above the wicket. There he was, the 3rd wide of this over. Again, that was a one area where Prithviraj have to work hard as he was bowling outside the line of off stump. When you're bowling a leg cutter, when you're choosing that line, suddenly that ball definitely going away from the batsman, right-hander batsman. So that might be the line you need to bowl around the midland of stump so that he can beat the bat of the batter. Again, Prithviraj from the Aloysius D'Souza end. Right arm over the wicket, Delhi was nicely driven. That was a good placement there from Hafiz. This time is off the back foot, just waiting for the turn of the delivery. It's well behind the line of the delivery and pushes that one down to right of Sandeep at short extra cover. And they got ample time to complete the single. 16 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Prithviraj. Right now over the wicket, Delhi ball. Oh, beautifully bowled. That was not too far from that outside, too far from the off stump, but that ball very close to that off stump. Chetan is looking for an expansive drive on the offside run. Missed it completely. Very good over there from Prithviraj, excluding that 3 wides. Excluding that 3 wides, 1 to 3 runs he conceded from the bat. That is a really good over there from Prithviraj. There's a much required comeback over from the side of create challengers. 16 for the loss of 1 wicket after completion of over number 2. For the loss of 1 wicket, 2 overs, 8 runs per over, the run rate progressing. Good morning to the every cricket lovers out here in USG Cricket Ground. Myself, Satish Salian in English, and my friend Mr. Gopi will going to entertain you in the final day of cricket. Of course, Gopi, everybody knows, one of the legendary commentator as far as Hindi language is concerned. He got more than 26 years of experience, unbelievable. And me and Gopi almost 170 tournaments together. We are having a partnership unbeaten, and we are cruising towards double 100 soon, maybe the next season of this next season, and in just 14 years, and Gopi will tell you the strike rate of our match. 14.50 will be going to be not the strike rate, it's a match rate. It's a tournament rate per year, and not per over. That's per year. And there's a very very happy face here out here in the commentary box. Gopis looks like it's a very good morning, and 12.50 exactly. That was per year rate of the tournament. As a 16 for the loss of 1 wicket. And good morning everyone. Just we are talking about those who are just tuned
into the YouTube channel from your mobile, and Mangalore Media having a live telecast of this cricket tournament. Under the great leadership of Udip and Salam, the two pillars of this Mangalore Media, along with some very energetic youngsters in the technical field, the cameramans out here in the coming to box this time. Appeal for like before his given him is gone. His plumb in front of wicket. It's not a good choosing, I must say, because you are facing the first delivery of one of the best bowler of the tournament, Sumit, and Afi's a wrong technique to implement as far as the first delivery is concerned. He's just right across the line of the delivery. Try to swing that one. Look at an absolutely right decision there from umpire Harish Patel. No hesitation in his mind, because the back foot of the batsman right in front of the off stump, and wicket number second is back into pavilion, and back into pavilion of Kodical Indians. This is a big blow, isn't it? The Afi is one who got runs from the bat, more than 45 runs he already scored in this particular tournament. Losing him in this juncture, I will say, little bit onto the back foot, and Kodical create challengers are really back into this game after that first expensive over, the 10 runs which came from the first 6 in the second, and very good start in the third as Sumit producing a very, very important breakthrough. As far as the wicket is concerned, I think Sumit is also in 6 wickets so far in this tournament. Ganesh, Pratik and Sumit is there in a run, and 6 each. Everyone has got 6 wickets, and that was the competition is on for the best bowler of the tournament. Lovely delivery. Look at that one. Sumit a little bit misfield on his follow through, as the batsman Pratik just came into middle, tried to hit that one back to bowler, and of course it right came into the hands of Sumit, but it's just a little bit fumble, so that the batter has got opportunity to complete the single. 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd in progress. Again right arm over the wicket. This time ball is almost dripping down the leg stump. Nicely turns that one on the onside region, just whips that one down to square leg region for a easy single by Chetan, and with that single scorer numbers on to 18 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Again Sumit right arm over the, oh, beautiful delivery, absolutely fantastic. Looks like it's a drop catch behind the stump. This is a second opportunity missed out with wicket behind the stump. Maybe he's telling that ball a little bit away from him, but it is a catchable. It's definitely going to be catchable, because Sumit, everybody knows, the captain have to know that Sumit is a very good leg cutter bowler, and he need to be settled for that wicket keeper behind the stump. This time he's looking for the quicker one, but going down the leg stump further away. Wide signal umpire Harish Patel, rightly so. One more addition to total in the form of extra. 19 for the loss of 2 wicket now. Pratik facing Sumit from the very good line. Lovely delivery. This is a beauty, absolutely beauty. You can't get better than that kind of delivery which Sumit is dealing with. It's unplayable leg cuttering again from him. The moving from the good length spot, leaving the outside edge of the bat, and that was a fantastic delivery. What a delivery! Absolutely, said really the peach of the delivery, and ball is just came in just such a direction where the batsman has got no answer for particular delivery. Just I want to see it in the replay. Look at the way that ball, the Yorker land, absolutely right on the block hold. And the batsman really surprised seeing that the line of the delivery where he was a little bit late to react to that Yorker land delivery there from Sumit, and cleaned him up by the beauty of the delivery. And Pratik is back with the wicket, 2 wickets, and he is going to become now highest wicket taker of this tournament. 7 for him now, and he will definitely going to be now the purple cap holder of this tournament. 19 for the loss of 3 wicket. Coming back to the orange cap holder, there is a lot of competition as well from the run. Afiz still is in a run, and he's got runs in this 43 runs in this particular match. He couldn't manage to contribute that much, and he is out for just 1 run. And in the second place, Ganesh, who scored 38 valuable runs, and of course they are the 2 toppers actually in this particular tournament. They are in a run in the competition of getting an orange cap. So captain brought in to attack himself from the Aloysius D'Souza end. After that fantastic comeback by his bowlers, 2 overs. Now Sandeep with a different bowling action actually, and this time chance of run out, and Sandeep thought it might be a direct hit. That's why he's left the ball.
And if you're able to collect the ball to make that run out, absolutely Chetan is in trouble. And Sandeep just not really collecting the throw from that fielder, and the batsman survived from that run out. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Usually Sandeep is bowling with the run up, but today is just seeing the condition. Why not? I am just wanted to stand and deliver, and he was almost standing right off. Left of umpires over the wicket, and his delivers. One more single is added total. This time the ball is went a little bit wide of short mid wicket fielder, so ample time for the new batsman Roshan to pick the single and score, but now was on to 21 for the loss of 3 wicket. This time lovely delivery in there, the squared him up. You get chance of run out. Oh my goodness, so many opportunities is missed out. This time little bit unlucky for the bowl, the fielder I must say, because that was looks like ball is very close to the stumps. The wicketkeeper thought it might be directed. Again the batsman Roshan very lucky indeed. Chetan and Roshan both are got a life in this particular over in the form of run out. 22 for the loss of 3 wicket. Again lovely delivery indeed. Witt is offered outside of Roshan, a little bit late to react to that square cut, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump, Alfaz did the off job. Oh, lovely delivery. Look at that, almost away from the body. That's a huge gap in between bat and pad in the occasion. He tried to push that one. Again he missed it completely from the middle of the bat. Lovely Yorker and delivery. What a fantastic over there from captain Sandeep, just changing his technique of bowling, which is really helping him to create the problem for the batters in this particular over. So 4 overs completed. Struggle time continues here for Indians. After they getting a good start in the first over, they got only 12 runs after that. 3 overs at a rate of exactly 4 runs per over. This is a good comeback, isn't it? Absolutely good comeback. And the Wittinson, absolutely. Sandeep's over is a 3 runs, and Sumit's over is a 3 runs, and Prithviraj's over is a 6 runs. Altogether, it's a good comeback. And wait and see, and the strategy from these 2 batsmen in the remaining overs. And before the next over will go into commence, it's a time for my friend Mr. Gopi to take over the microphone first time today. And good morning, Gopi. It's a very good morning, isn't it? A sunny morning out here in this UCG cricket ground, and the final day of this cricket. Vishal cricketers. Kodical organizing this wonderful cricket tournament in the name of KPL Season 3, and it's a good comeback by the challengers, of course, after they got the start. And I think there might be that was a big difference in the wicket of Yatiraj. When Yatiraj back into pavilion, they couldn't manage to come out from that the big breakthrough, and wickets are tumbling, and very good overs also coming for challenges. But 3 overs, Gopi, still there is time for the batsmen of Indians to come back with some good overs, productive overs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, हालांकि पहले ओवर में तो चौका जब यतिराज ने लगाया था तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि कोडिकल इंडियंस के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए इस वक्त बाद के 3 ओवर में सिर्फ 12 रन प्रदान करते हुए 3 बहुमूल्य विकेटों को प्राप्त कर चुके हैं और एक बेहतरीन कमबैक कर चुके हैं। लेकिन 3 ओवर का खेल जैसा कि आपने फरमाया सतीश, और 5वें ओवर की पहली गेंद थी, लेग कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए, और गेंद लगभग पैर पर टकराई जरूर, लेकिन लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिले। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के सुमित तैयार, दाहिना तो बड़ा विकेट अंदर की ओर आते हुए गेंद एक्स्ट्रा क्विकर थे, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता और अंतिम क्षण में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। लगभग गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद वहीं पर गिर गए और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। सुमित एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी का फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद उनके पैरों पर टकराने के बाद हवा में जरूर उछली, लेकिन पॉइंट पर फीडर थे काफी पीछे। और जहां तक सवाल है सुमित की गेंदबाजी का, तो काफी तेज रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी इस वक्त करते हुए बल्लेबाज को इस वक्त मौका ही नहीं प्रदान कर रहे हैं कि वो खुलकर स्ट्रोक से खेल सके। और इस बार गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट सुमित इस वक्त तैयार गेंदबाजी करते हुए। सुमित की गेंद, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्विकर, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए और इस बार ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। विकेट कीपर का फेंका गया हुआ थ्रो गेंदबाज सुमित के पहुंच से बाहर और 2 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए
माफ कीजिए बाई के रूप में यहाँ पर टीम प्राप्त करता हुआ बल्लेबाज के खाते में ये रन नहीं जाएंगे और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। सुमित एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा और इस बीच ये विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का हो चुका है और यहां पर देखिए जोखिम भरा रन था, वहां पर रन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और बल्लेबाज ने रन चुराने की हड़बड़ाहट यहां पर दिखाई और इससे पहले के नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिया और चौथा विकेट गिर चुका 26 रनों के ऊपर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर, नंबर 5 इन प्रोग्रेस फॉर कोडिकल इंडियंस। मैच ये श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए, कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई, हालांकि इस श्रृंखला का तीसरा दिन रविवार को दोपहर को वर्षा होने के कारण ये श्रृंखला को रोक दिया गया था और उसके बाद आज गुरुवार के दिन ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई 6 मैचेस आज खेले जाएंगे और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली 25th year in the name of Kodical Premier League Season 3 2022 in this beautiful prestigious UCG Urva Cricket Ground. Lots of cricket और lots of undrawn cricket in fact और इस बीच कुछ हद तक बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है और नए बल्लेबाज इस वक्त थर्ड अंपायर के लिए दिया गया है और इस बीच निर्धार यहाँ पर आ चुका है आउट का और यहां पर 26 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो कुछ हद तक बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है और 2 लीग मैचेस बचे हुए 2 लीग मैचेस आज खेले जाएंगे। उसके बाद में प्ले ऑफ मैचेस क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। उसके बाद मैच शाम को यहां पर इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच खेला जाएगा। तो इस वक्त 2 टॉपर्स टीमों के बीच में मुकाबला जारी है ग्रुप स्टेज पर टॉप होने के लिए और बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं इस वक्त रितेश, सामना करने के लिए तैयार। सुमित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए लंबा ओवर उनका प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद थी, वाइड का इशारा, अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए इस वक्त सुमित लेग स्टंप से काफी बाहर की और गेंद उन्होंने फेंकी और 1 रन इस बीच कोडिकल इंडियंस के खाते में जुड़ता हुआ 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। सुमित एक बार फिर से तैयार, बेटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी, गेंद को पीछा करना चाहता लेकिन गेंद इस वक्त घुमाव लेती हुई, टर्न लेती हुई सीधे पहुंची बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के हाथों में बेहतरीन गेंदबाजी और सुमित एक बार फिर से तैयार, ये गेंद और इस बार बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखड़ चुका है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी तेज रफ्तार के साथ अपने रफ्तार को वृद्धि करते हुए आई कि बल्लेबाज को इस गेंद पर कोई स्ट्रोक्स खेलने का अवसर ही गेंदबाज ने प्रदान नहीं किया और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ ले गई और इसी के साथ ये 5वां विकेट गिर चुका, 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। ओवर कंप्लीटेड, 5 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। तो ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन कमबैक कर चुके हैं इस वक्त कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स के गेंदबाज। पहले ओवर में 10 रन प्रदान करने के बाद के 4 ओवर में 17 रन केवल प्रदान करते हुए 5 बहुमूल्य सफलताओं को वो प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा कोडिकल इंडियंस के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष यहां पर करते हुए। संदीप एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते थे और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती है। अपना पहले ओवर में संदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे और उस सफलता के सिलसिले को यहां पर दूसरे ओवर में आगे बढ़ाने की कोशिश में नया ओवर शुरू करते हुए उछाला लोगों पर फील्डर गेंद के लिए नीचे आते हुए सुमित वहां पर और इसी के साथ 6वां विकेट यहां पर गिर चुका है।
गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लंग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपनी दाईं ओर 4 से 5 कदम, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और ऐसा कहना पड़ेगा कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के खिलाफ कोडिकल इंडियंस इस वक्त अपनी सही राह को तलाशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सिनान सीनियर, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार स्वार्थक, और संदीप एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए एक बार फिर से मैदान पर बदली भरा वातावरण छा चुका है। सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है, और इस बीच ये गेंद थी फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा था लेकिन गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। संदीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फ्लाइटेड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केप्ट ओवर एट द लास्ट मोमेंट and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। ये गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, रन से नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतर गेंद थी सीधी रफ्तार के साथ, चूंकि एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, 27 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और संदीप इस ओवर में अगली बार यह गेंद ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। पहला मेडन विकेट यहां पर संदीप फेंक चुके हैं। मैं निश्चित रूप से उनका गेंदबाजी का विश्लेषण देखना चाहूंगा। 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 1 विकेट, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फिगर्स फ्रॉम संदीप। 2 overs 1 wicket and 3 runs and 1 wicket, और बेहतरीन स्पेल उनका समाप्त हो चुका है। ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾಕಂದ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो 6 ओवर की समाप्ति, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, यानी बिलवेर कुडला एंड की ओर से। पृथ्वीराज गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए स्वार्थक का सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। रन्स बल्लेबाज को तो नहीं मिलेगा लेकिन टीम को जरूर मिलेगा 1 रन वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 for the loss of 7 wicket at the start of the 7th and a final over in their innings। और पृथ्वीराज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्वार्थक के लिए, और इस बीच अपने गेंदबाजी में रुक गए, वहां पर कप्तान संदीप फील्डिंग में जमावट कर रहे थे, और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से गेंद, बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लगभग जमीन के सहारे गेंद आए अलोंग द ग्राउंड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और बेहतर गेंदबाजी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके पृथ्वीराज। एक बार फिर से उछाला लंगोल पर, फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए और आखिरकार इसके हाथ को लपकने में सफल। प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। एक और विकेट गिर चुका है 28 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त कोडिकल इंडियंस की पारी यहां पर लड़खड़ाती दिखाई देती है। सिर्फ 2 विकेट सुरक्षित, 4 गेंदें बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में बचे हुए 2 विकेटों की मदद से उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तौसीर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से, और पृथ्वीराज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनान जूनियर के लिए।
सीनियर का विकेट गिर चुका है, सीनियर जूनियर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि आ चुके तौसीर, जबकि सीनियर जूनियर स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाज की गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉट में विकेट फील्डर की दाईं ओर, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वी पूर्ण कर चुके हैं। मिसफील्ड वहां पर शॉट में विकेट फील्डर द्वारा, और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। सुबह का वक्त 9:40 बज चुके हैं। हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, और यहाँ पर धूप कुछ हद तक अपना अस्तित्व का प्रदर्शन कर चुका है मैदान की दाईं ओर, और लगभग ऐसा कहना पड़ेगा बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। और इस कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला के तीसरे दिन का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ। ये गेंद ऑफ स्टंप पर बल्ले का बाहरी किनारा, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपना बल्ला उन्होंने अड़ाया। और इस बीच गेंद जब तक फील्ड और शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 31 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें बाकी। पृथ्वीराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, टॉप एज शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा फिर से। 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर पृथ्वीराज इस वक्त तैयार और तौसीर सामना करते हुए पृथ्वीराज की गेंदों का। द लास्ट बॉल इज नाउ कमिंग अप डाउन द ट्रैक, मिसेस एंड स्टंप्ड, एंड द इनिंग्स इज अप फॉर Kodical Indians. They finished with 32 for the loss of 9 wickets in the stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 33 now for Kodical Create Challengers for victory in the stipulated 7 overs. And as far as the required run rate is concerned, just under 5 runs per over they have to score for victory. That means exactly calculation, it's going to be 4.74 runs per over they have to score for victory. 33 they have to score in the stipulated 7 overs, and their innings now going to start within just short while. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So welcome back. And 33 is the target for Kodical Create Challengers to win this match. It's a signal coming from umpire Roland, rate of correction Arish Padil towards our scorer receiving the signal here. And today, little bit change in scoring. We have Naushad will go in to take over, and Ratish little bit he's in a rest, and now the first ball, it's the first ball of the innings of
create challengers. 33 is a moderate total, not a big total, but one must say that's a total we can expecting some the great finish for this match as a seeing the morning condition. Of course, there's no that much of problem with the condition of the weather, but might be little bit wetness in the pitch. We can see that because of the rain in the early morning, and that's why it's a ball is not really coming to the bat. If the bowler ball good line and length, they can create the problem, just like what we're mentioning about. Look at the way the bowler batsman little bit struggling to get the ball right from the middle of the bat in the occasion. A little bit lately that ball came into the bat of Alfaz, and he wanted to play that defensively, but not the perfect defensive stroke, but he managed to negotiate that delivery very well in the last moment. And here is the first next delivery, nicely driven in the gap towards the wideish long on region. He's just choosing that gap between mid-on and short mid-wicket. So one without loss of any wicket in the over number first in progress. Swartak, what a fantastic tournament he's got. He's the one, he's become the hero when his team is required 6 runs in the last delivery. And that was definitely one of the best moment of this tournament. This time he lofted, but I don't think we'll going to get the distance. But he's just choosing the fielder. Of course, it's a short pitch delivery, it's a punishable delivery, but not a right direction to play the ball. Only 2 fielders outside the circle. He's got a plenty of time to choose the direction of the stroke he wanted to play. He can play that one down to deep mid-wicket and deep backward square like the vacant area. But the fact that he's just going for the big shot towards a deeper long on region, he didn't got the distance. There is a fielder waiting for that catch. The first wicket is which is back into pavilion of create challengers. Of course, the challengers taking a challenge from one more well-performed team in the league matches. Kodical Indians, and it's a very good start, positive start, which is given by Swartak. Swartak is a very good all-rounder for the side of Indians, and wait and see how well we're going to continue that the bowling. Here is Alfaz will going to face next delivery. Again, that ball little bit dripping down the leg stump. I don't think any contact with the bat, but certainly it's a contact with the bat. No signal coming from umpire. And a little bit inside edge of the bat, and then hitting his back leg, and one more addition to total scoreboard numbers are 2 on the board. Alfaz is a brother of his opposition team, Afiz, and 2 brothers are playing in the same matches, but in the opposition, their brothers only had home. But this time they are the rivals as far as Kodical Premier League is concerned. There is, as far as cricket is concerned, there's no relation in the ground. Oh, that was a beautiful delivery. Almost they tried to york that one, and it was a low full toss, and the batsman's very slow to react to that stroke on the offside region. And Prashant just missed out delivery from his bat, and there is no possibility of any run. A good start, very good start from Swartak in this first over. They're depending a small total, and just that kind of start which is really required. Beautifully bowled, yorking the batsman on the block hold. Beautiful delivery indeed to finish the over number first. What a good start, great start for Kodical Indians. First over Swartak bowled right on the money, right on the target, chasing 33 to win this match. They got a shackling start, create challenges, 2 for the loss of 1 wicket. Look at the trophy now. The just trophy is arrived in our main stage. We can see that right off our commentary box. We have very beautiful stage out here, and the right of that stage we can see the beautiful, absolutely attractive trophy out here, and it's really a fantastic one, isn't it? Every teams which is participating in this particular KPL season 3, they got an eye onto that. They wanted to lift that dream trophy, and wait and see. For that you had to wait for till evening which team will going to become the champion of this prestigious Silver Jubilee Kodical Premier League season 3. Of course season 3, but it's a name which is given as a Silver Jubilee celebration. Vishal cricketers are celebrating a Silver Jubilee, so that we can say the silver coating with the crown we have the gold coating, and it's a silver coated beautiful trophy out here in the main stage. From the far end, Aloysius D'Souza end bowls, beautifully bowled, excellent delivery indeed, looking for the off drive but not quite intended. That stroke went towards the short mid wicket region, and there is no possibility of any run at all. So second over is in progress.
Again, nicely bowled, the same line and length. Alphaz a little bit struggling to get the timing behind the stroke. Just like I mentioning about earlier, it's not a pitch which is bowler, batsman will going to dominate, but in the morning it's definitely bowler will going to dominate if they bowl well. This time again looking for the off drive. This time he just able to place that one left of Yatiraj, who is standing at mid off region, and before he fields the ball down at short extra cover region, ample time for Alphaz to pick the single, and Alphaz's individual score now 3, and his team's total score also 3. That means all contribution which came from the bat of Alphaz, 3 without loss of any wicket, chasing 33 to win this match. That means another 30 runs required for the victory. This is the last over of the power play is in progress. Aloysius D'Souza, right arm over wicket, lovely delivery, beautifully bowled, fantastic. Very impressive line and length in the game from Chetan. He's not really missed out that line. Every time he's bowling that good line actually. Try to pick the wickets. That's really good to see that the bowler is trying for the wicket. They know exactly that they're defending a small total. Some attacking bowling which is required to win this match. Chetan right arm over the wicket. Lovely shot. Crashing that one beautifully between backward point and short cover point region. And before the short cover point fielder to run back to field the ball. An ample time for the batter Prashant to pick the couple of runs. Even though he's not really getting a big runs for that stroke, but it's a very good stroke indeed. Just leaning into the drive, beautiful looking cover drive, and a couple of runs for Prashant, and scoreboard now moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Chetan, right arm over the wicket again, nice looking drive right in the gap. Yatiraj couldn't move quickly. Ball running down to deep extra cover boundary for 4 runs. Imperious extra cover drive coming from the blade of Chetan. Little correction, Prashant, of the bowling of Chetan. This is now standing, isn't it? You know exactly where the fielder is. All we can see that no fielder in the deep in the offside region. So little margin for error. He cannot give that width for the batsman to freeze his arm. Look at the stroke. Absolutely just beating the Yatiraj. Almost we are talking about Yatiraj is not that much of good moving actually. He's having injuries little bit. Cramp he has got when he was batting. And that's why he couldn't manage to move quickly, and the batsman just taking advantage of that one, just play that one left of Yatiraj. He got the placement right and he got the boundary as well. Welcome boundary coming up here for Kodical create challenges. They're back into this game very strongly because of that boundary. 9 for the loss of 1 wicket. Just coming back to the equation, if you deduct 9 from 33, another 24 runs required for the victory, and the remaining 30 balls remaining. They have to get another 24 runs to win this match. 30 ball, 24, and the equation certainly is favoring the chasing team because they lost only 1 wicket, and still they've a lot batting to come. And just we are talking about the youngest player we are talking about. We can see that short extra cover region. If the cameraman is just wanted to show him as a 0, jersey number 07. Hitin, we are talking about only 13 years of age, and he's in a competition, the big competition, Kodical Premier League Season 3, and one of the impressive part of this cricket tournament. They are providing the perfect stage for the talents, the young talents in this tournament. Again, Yatiraj very close in the relegation. Almost is standing in unorthodox, I must say, it's the test fielding field set actually, which is a short mid wicket, very close to the batsman, and Yatiraj couldn't manage to react quickly to that catch, but just passing to his left, fast to his left, and a double figure coming up here for create challenges. 10 for the loss of 1 wicket. Pratvik bowls a ball, lovely delivery, but pitched outside the line of leg stump. At the same time, that's a bat which is involved in the relegation. Prashant is just growing his confidence, isn't it? He got some runs in the previous over. He got lovely 2 extra cover, one is extra cover and 1 cover drives, so that he is a confident player in the middle. Alphaz facing the Pratik's wicket taking bowler, left arm round the wicket. Again! I really don't really understand the strategy from the captain himself, because if you're standing that much up close, it's very difficult to take the catch, because reaction time is always going to be 0.003 seconds, and if you're standing there, it's very difficult for you to react quickly. And the second chance actually, if it's a little bit far, I think it's good enough to stand there and try to take the catch. 12 for the loss of 1 wicket. Pratik, left arm round the wicket, delivers. Nice looking improvisation here from
13 for the loss of 1 wicket. So 13-14 now for the loss of 1 wicket, and the over number third in progress. Pratik is really trying for his level best. And for the next match, I request two teams captain please report to the commentary box immediately. Kalakanda CS Strikers takes a challenge from Kutty Titans. Last match of the league. Appeal for leg before wicket again. They're going for the run. Leg by call by umpire. And Pratik couldn't manage to make any impress in this particular over. Both the batsmen are dealing with some runs. Rotation of strike and chasing 33 to win this match. Kodical create challengers are looking in a commanding position. 15 for the loss of 1 wicket and required another 18 runs to win this match. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಕಂಡ ಸಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಲರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. So wait and see how it's going to be very turning point of this match also as well, because Sandeep is bowled, the captain of the opposition bowled very good overs, and can Yatiraj will going to make the impressive here. Can he make, when he able to break this partnership? The partnership breaking is very important here for Kodical Indians if they wanted to back out this game, so that Yatiraj wanted to implement his all experience in this particular over. 15 for the loss of 1 wicket. Again, nicely bowled. The chance of run out, and the wicketkeeper Pratik couldn't manage to catch that throw coming from the fielder, and it's a little bit in bat involved, and one more addition to total scoreboard now moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 4 in progress. Again, Yatiraj nicely bowled, full toss delivery, no problem whatsoever, as Alfaz quite nicely placed that one down to deep extra cover region for a easy single, and with that single scoreboard moves on to 17 for the loss of 1 wicket. Another 16 more runs required for the victory for create challenges to win this match. Yatiraj searching for the wicket, right arm balls again, that ball going down the leg stump, going to be a wide. One more addition to total 18 on the board, and slowly the match is really going inching towards favor of the chasing team create challenges. So one more addition for Prashant. Again, both the batsmen are really playing as per the condition required. No need to panic at all, and but something different which is required here from the bowling department of Indians. Again, this time clever, absolutely clever and intelligent batting performance here from Alfaz, seeing that was a well flighted turning delivery. Just not only given all respect for that delivery, but at the same time is converting that into single now. Yatiraj bowls again, one more addition to total. Again, that ball went towards a deep long on region for an easy single. With that single scoreboard numbers on to 20 now. 20 for the loss of 1 wicket at the over number 4 in progress. 13 more runs required for the victory. Over number 4 in progress. 21, that means 12 required for the victory. This time ball is in the air, and youngest player, the player Hitin takes a catch, and that's a big moment of this dismissal. And look at the level of confidence. Maybe that was an easy catch, but sometime when you're playing in a high voltage match like this, when you're playing a high voltage tournament like Kodical Premier League, I think that this player Hitin surely will go into be the future player for Kodical. 21 for the loss of 2 wicket. So 12 more runs required for the victory.
12 to get, and wait and see how well they will going to defend that 12. Now Sandeep walks towards the middle, walking towards the middle here as a captain of the side. Nothing much worried about the run rate required, just 4 runs per over is the required run rate. But cricket, everybody knows it's an unpredictable game. You can't say anything in cricket, and still the opportunities for the opposition team to bounce back if they bowl well, if they fix the wickets and frequent intervals, they can bounce back to this match. And wait and see how well they will going to bounce back. But so far, looks like Cricket Challengers are driver's seat of winning this match. And it's over to go before the further explanation of a match in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। और यहाँ पर तख्ता भारी रखता हुआ कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स का सिर्फ 12 रन चाहिए 3 ओवर में विजय के लिए। और अल्फाज और प्रशांत इस वक्त पारी के भागदौड़ को यहाँ पर गेंद को खेल दिया था गली की दिशा में, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद प्रशांत और संदीप, हालांकि अल्फाज और प्रशांत के बीच में 20 रनों की साझेदारी बनी थी, और इस ओवर में वो जोड़ी जो कि टूट चुकी है, वो साझेदारी टूट चुकी है। और इस वक्त जहां तक सवाल है रनों का, तो सिर्फ 11 रन चाहिए विजय के लिए, कोई जल्दबाजी की यहां पर जरूरत नहीं है। और इस बीच कप्तान संदीप जो कि सामना करने के लिए तैयार, तो इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तो 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। प्रतीक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, कवरिंग द स्टंप्स, फ्लिक दैट वन ऑफ द टोस डाउन टू डीप मिड विकेट फॉर अ सिंगल बाय संदीप। और निस्संदेह बेहतर स्ट्रोक था ऑफ द टोस, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त। और जब तक गेंद को डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक कोडिकल इंडियंस का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए चंद विकेटें, चंद कसे हुए ओवर्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। और प्रतीक हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। प्रशांत जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। प्रतीक बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद की टर्न को भापा, अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ले को अड़ाते हुए गेंद को खेल दिया। हालांकि गेंद को खेलना चाहते तो ऑफसाइड पर, गेंद बल्ले का भीतरी हिस्सा लगने के बाद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। और प्रतीक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है संदीप ने। 2 रन कम से कम बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास समय था कि वो 2 रन प्राप्त कर सके। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप तकनीकी तौर पर बेहतर बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से खाली क्षेत्र चुनते हुए, और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। और प्रतीक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, और गेंद को इस वक्त छोड़ चुके हैं। गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपने हाथों को लाने में असफल, गेंद उनके हाथों को चीर कर निकल गई। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, डीप कवर पॉइंट पर 2 रनों का इजाफा एक बार फिर से हो चुका है। 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप पिछले 2 गेंदों में 4 रन प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से प्रतीक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, टॉप एज यतिराज गेंद के नीचे आते हुए, और इस कैच को यशस्वी तम लपकने में सफल। तो यहां पर तीसरा विकेट गिर चुका है, और संदीप आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए। अगला मैच जो कि खेला जाएगा कट्टे टाइटंस और कलाकंदासिया स्ट्राइकर्स के बीच में, और इस मैच में कलाकंदासिया स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले
बल्लेबाजी बैटिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है। तो अगला मैच जो कि लीग दौर का अंतिम मैच होगा और उसके बाद प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे। क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच आज शाम को यहां पर खेला जाएगा और उसके बाद भव्य समारोह यहां पर होगा इस बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत। और यहां पर यह मैच इस लीग दौर का दूसरा अंतिम मैच खेला जाता है और तख्ता काफी हद तक भारी लगता है। इस वक्त कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का सिर्फ 5 रन चाहिए बचे हुए 2 ओवर में। स्वार्थक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुमित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका है। और इस वक्त छठा ओवर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स की पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट करने के बाद स्वार्थक ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सुमित के लिए। 5 to get from remaining 12 balls। और स्वार्थक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद इस बार लेग स्पिन गेंद थी, बेहतर गेंद थी। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर स्वीप करना चाहता, चूंकि गेंद लगभग उनके हाथों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। ऐसे ही चंद और डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है इस वक्त कोडिकल इंडियंस को कम बैक करने के लिए। स्वार्थक गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए सुमित सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेटर सेंसिबल, ओह मिसअंडरस्टैंडिंग, ओह दिस टाइम स्लॉपी, दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। यतिराज जो फील्डर थे अगर धीरे से वो चलकर आकर भी विकेटों पर गेंद लगा देते तो वहां पर आउट हो जाता था, लेकिन यहां पर उन्होंने गेंद को फेंका था लेकिन उस गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर। हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को थोड़ा सा ऊंचा तेज तरीके से उन्होंने फेंका था और गेंद इस वक्त विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया। जहां पर एक आसान सा रन आउट हो सकता था वहां पर सुमित यहां पर बच चुके हैं और जीवदान प्राप्त करने के बाद क्रीज पर मौजूद तो 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच सुमित पिछले गेंद पर अपना विकेट बचाने के बाद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार स्वार्थक की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, स्वार्थक का गेंदबाजी करते हुए बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बेहतर गेंदबाजी, सेंसिबल, एब्सोल्युटली परफेक्ट डिफेंस। गेंद को वहीं पर दबा दिया था अंतिम क्षण में जमीन के सहारे और तेजी के साथ 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 29 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। 29 for 3, 6th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज स्वार्थक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 4 रन चाहिए बचे हुए 9 गेंदों में। 4 to get from 9 balls। स्वार्थक प्रशांत के लिए जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए गेंद ऑफ कटर गेंद थी, गेंद को खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े निशाना और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। विकेट कीपर का थ्रो सीधे समसो को बिखेर कर ले जाता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर और प्रशांत की बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। रन आउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और जहां तक प्रशांत का सवाल है 13 रन उन्होंने बनाई, स्कोर 13 रन इन टू क्रेडिट इंक्लूडिंग 1 बाउंड्री। और अपना किरदार अदा करने के बाद बाखूबी वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। चौथा विकेट गिर चुका है। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए। और निस्संदेह जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए स्वार्थक सुमित स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 2 गेंदों पहले उनका विकेट बच चुका था रनआउट के रूप में और यहां पर वो सामना करने के लिए तैयार स्वार्थक की गेंदों का। अविनाश का आगमन यहां पर हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और सुमित
तो इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। सुमित स्वार्थक की गेंदों का सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, लेकिन जो छोटे खिलाड़ी है जो 13 साल के वो इस कैच को लपक नहीं सके, लेकिन बेहतर प्रयत्न उन्होंने जरूर किया था। और निस्संदेह जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, इसी श्रृंखला के सबसे छोटे खिलाड़ी 13 साल उम्र के हितेन, जो कि यहां पर इस स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच को लपक नहीं पाए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस गेंद पर बल्लेबाज को मिला 30 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए स्वार्थक 7 गेंदों में चाहिए सिर्फ 3 रन विजय के लिए। अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार स्वार्थक। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी का फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर गेंद को टटोलते रह गए और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। मैं समझता हूं बल्ले का बाहरी किनारा सिरा यहां पर टकराया था और इस कैच को लपक नहीं पाया विकेटों के पीछे। न सिर्फ कैच को लपक नहीं पाया बल्कि कैच छूटने के बाद वो गेंद को टटोलते रह गए और आखिरकार बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है स्वार्थक का, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। 2 रन चाहिए 6 गेंदों पर। 2 to get from 6 balls now। अगला मैच कट्टे टाइटंस और कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच में कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी बैट करने का निर्णय उन्होंने लिया है। दो रन सिर्फ चाहिए 6 गेंदों पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा कोडिकल इंडियंस को एक घातक गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है, चमत्कारी गेंदबाजी कहना पड़ेगा इस मैच में वापस ला सकती है। चेतन अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अविनाश। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए कप्तान कोडिकल इंडियंस के यतिराज। लगभग 6 खिलाड़ियों को 20 करके दायरे के अंदर तैनात किया गया है खुद कप्तान के साथ। और ओवर की पहले गेंद लेकर तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, शॉट टच मार पा रहे, रन के लिए दौड़ पड़े, लोग सेकंड पर थ्रो पहुंचा और इस बीच थ्रो पहुंचे इससे पहले बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। अगर स्ट्राइकर पर थ्रो करते तो शायद कुछ बात जरूर बन सकती थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो जब तक पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 32 रन, द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। 1 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी और चेतन इस वक्त तैयार। सुमित सामना करते हुए लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अगली गेंद, एक गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, स्ट्राइटर लाइन, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 गेंदें बाकी है, 1 रन चाहिए सिर्फ विजय के लिए। जस्ट 1 to get from 4 डिलीवरीज। और चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फैलने के दिशा में निशाना चूका और इसी के साथ कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स or won the match by 6 runs, 6 wickets in fact, with just 3 balls to spare in their innings, and with that victory they become the topper of the points table। तो यहाँ पर ग्रुप के अग्रस्थानी होकर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स अपने लीग के काम को समाप्त कर चुका है और यहाँ पर कोडिकल इंडियंस द्वितीय स्थानी हो चुका है पॉइंट्स टेबल में। अब इस दौर का अंतिम मैच यहां पर खेला जाएगा कट्टे टाइटंस और कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बीच में, द लास्ट लीग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। और इस मैच में कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी बैट करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और वो मैच चंद लम्हों बाद यहां पर शुरू होगा। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So now it's a time to announce a Man of the Match award, and Man of the Match, which is goes to, of course, it's a very difficult for selector to select the Man of the Match, because there is a very good competition for the Man of the Match, and three players actually they had put 100% in this game, but at last one who really able to put some break on the run because of this excellent spell of 2 overs, no maiden, 8 runs, and he picked up 3 wickets. That's none other than Sumit of Create Challengers. So I request Sumit, who bowled well, 2 overs, 8 runs, and picked up a 3 wickets, who is the one responsible for the dismantling the batting department, and he scored 2 runs as well from the bat, so that Sumit is the man of the match of this match. And I request Dhruva Sharan, proprietor of SMS Hardware, SMS Hairdressers, kindly request you to present this Man of the Match award. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಧ್ರುವ ಶರಣ್, ಮಾಲಕರು SMS ಹ್ಯಾಡ್ರೆಸಸ್, ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜೇತ ಸುಮಿತ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Now it's time for the presentation here in the presentation dais, and Sumit, and well-deserved Man of the Match winner for his excellent bowling figure of 2 overs, no maiden, 8 runs, and picked up 3 valuable wickets at economy of exactly 4 runs per hour, and he remains unbeaten by scoring 2 valuable runs as well. So congratulations Sumit. Thank you very much Dhruva Sharan for coming here and spending your important time in this prestigious Kodical Premier League Season 3. Thank you very much on behalf of Vishal Cricketers Kodical. We are coming to the last and final match of the league matches. Katte Titans takes the challenge of Kalakanda CS Strikers. After winning the toss, Kalakanda CS Strikers won the toss, and they are elected to bat first. So very interesting decision so far in this particular tournament, and most of the teams which is batted first actually they won the match. That's why in this tournament the captains really wanted to bat first in the previous match also, and I think after winning the toss, captain of Create Challengers elected to bat first, and here is again the captain of Kalakanda CS Strikers. After winning the toss, they elected to bat first, so that opening batters just coming into the middle. So one more match, which is a match between the 2 toppers. Now it's the match for the Group B, the last league match, and winner of this match will going to get the top place in the B group of this Kodical Premier League Season 3. Already Create Challengers are in the top in the Group A. This time first ball just going over the top of that square leg fielder, and before the square leg fielder run back and stop the ball just inside the boundary line, just pulling the ball and inside the boundary line, and the ample time for the batter Mahesh to pick a couple of runs. Quite premeditated. You can see that the batsman trying for the scoop over the top of the square leg region, improvisation, and he managed to get that one over the top of that square leg fielder. 2 without loss of any wicket here in over number 3. Let me correction. They scored 3 valuable runs. Again, the bowler's back drive. Dhanush this time bowled right on the middle stump, and the batsman Shivaram
played that one right back into the into the bowler, and bowler on his follow through fields the ball and back to his bowling mark. Again, Dhanush, right about, lovely shot, beautiful driven, but straight to the hands of mid wicket. Can you believe this? Nothing wrong with the stroke, beautifully driven that one, but unfortunately he's finding the fielder. Absolutely unfortunate and disaster for any batsman after getting that much of a neat collection. Look at the sound from the bat having a contact with the ball. Absolutely terrific shot, but unfortunately just finds the fielder in the wideish long on. He takes a catch a little bit low down to him. Good catch, good judgment there by the fielder. There in the wideish long on, and the first wicket is back into pavilion now for Kalakanda Strikers. 3 for the loss of 1 wicket. Dhanush has got a very, very important breakthrough. So new batsman is just walking towards the middle. Guru Prasad with the jersey number 24. The two top performer so far in this Group B of this KPL Season 3. And wait and see which team will going to remain unbeaten in the league matches, in the league stage matches from the Birvir Kudla end. Guru Prasad will going to face next delivery, the first delivery in fact, and the next delivery, the fourth delivery of the over number first. Dhanush right arm over the wicket delivers. Across the line, appeal for leg before wicket. Certainly that ball, I don't know for what they're appealing. Once the bowler is appealing for the leg before wicket, and immediately the wicketkeeper behind the stump is very confident behind the stump, is asking square leg umpire for the caught behind, but might be the ball is just deflected his leg, not the bat, and that's what umpires are not really interested to raise the finger. The good decision there from umpire Sriraj as well as umpire Roland Pinto. This time again looking for the off drive, not quite getting a hold of that one properly. He's got a little bit outside edge of the bat, and after completion of over number the first, it's a 4 for the loss of 1 wicket. Immediately umpire sending Gururaj to go and change your bat as far as the rules and regulation of cricket is concerned. As far as a bat is concerned, the width is not more than a 4.25 inches, so that maybe the first warning already given for him to not bring that bat. And sir, 1 ball remaining in this over. 1 ball remaining. 4 for the loss of 1 wicket. First ball it's a 3 runs. Second one is a dotted delivery. Third ball is a wicket. And the fourth ball is again the dot, and the fifth ball is a single run. So 5 balls, 4 runs and 1 wicket, so that the bowler Dhanush will going to continue. The last and final time is over. Shivaram is back into pavilion, so Mahesh will go into face. He's batting on 3. And Dhanush bowling final time is in this over. Again swept that one, good piece of fielding there by that square leg fielder, just moving to his right and stops some runs for his team's completion of over number first, and shackling start. In fact, they got a 5 runs and they lost 1 wicket, and which is a good start given there by the bowler Dhanush for Cuttack Titans. Praneeth brought into attack from the Aloysius D'Souza end. Will go into bowl second over and last over of the power play of the innings of Kalakanda. Lovely shot, beautifully driven down to deep cover point region. There is chase here for the fielder at the defects cover, but ball just defeating the trying hands of that fielder, and boundary comes up here for Kalakanda Strikers. The welcome bound in fact, and the batsman got the boundary
is Mahesh, and he's in a good nick after getting 3-run single and boundary in this first delivery of the over number second. That was a juicy full toss, isn't it? And look at the batsman, the way he's getting the placement, just going over the top of that cover point fielder. There is a deep extra cover, but he couldn't manage to reach there. He's trying his level best to reach there to stop the boundary, and ball just defeating the trying hands of that fielder. 9 for the loss of 1 wicket. Again, that was a good shot. Bowled him, cleaned him up. Very good comeback here by the bowler Praneeth. He knows that for the comeback. It's a very good bowler, in fact. And just a back into this over with the beauty of the delivery. Look at that one. Looking for the expansive drive. And that was a fantastic leg cutter. And against the line of the delivery, across the line, the batsman Mahesh swinging his bat, but missing the line completely. And the ball is hitting the stumps, and stumps is uprooted. Absolutely perfect leg cutter here from Praneeth. Look at that one again in the replay. And he's just tossed up, inviting the batsman to go for the big shot. And batsman nowhere near the line of the delivery. And ball just defeating him. 9 for the loss of 2 wicket. Another leading run getter of this tournament, Ganesh, walking towards the middle. He scored 38 valuable runs, and even he's got a wicket as well, 6 wickets, and he's a perfect all-rounder and a perfect man in a competition for the best, in fact, the man of the series, and as a good all-rounder as well. 9 for the loss of 2 wicket. Again, Ganesh, that was a fantastic technique, isn't it? That shows the maturity of the player, isn't it? You know exactly the playing against one of the good bowler of the opposition, and he's got a very good technique to implement to pick the single. And 10 for the loss of 2 wicket. Again, ball is in the air, but the fielder couldn't manage to reach there. And Bharat Raj, who is standing at short mid-off region, is running back. Even the mid-off fielder also running back. But that ball is just landed safely out of the reach of that 2 fielders, and scoreboard now moves on to 12 for the loss of 2 wicket. Again, ball is in there. Oh, chance of run out, but a landing throw is definitely needed towards the non-striker's end. Ganesh almost already started his run to pick the runs, but his partner is not interested, rightly so, because the ball went straight to the hands of short, the third man region, and there is no question of run at all. The right call from umpire, right call from his partner to not run for that single. This time again, ball is in there. Chance here for oh my goodness. Mohan Das, one more of experience and senior most. The fielder is a very good fielder actually at that cover point region. Look at the effort from fielder. Ball is in there, and Mohan Das is standing at short cover point region, charging to the ball. Look at the, oh, he's just diving. I don't think a diving is required or not in that situation. He can't take the catch without diving the ball, diving to front, because he's almost reached that catch. And because he's try to take the catch by diving to his front, maybe that ball, look at that one, just what we're talking about. Absolutely right. Ball just slipped out of his hand when he was hit hard into the ground, and because of that, that ball just slipped out of the hands, and the batter got a life here. 12 for the loss of 2 wicket. And lot of entertainment day for cricket today, and not only we are going to watch the cricket here, but good news here is that we need to witness one of the most popular the film actress will go into present in this cricket tournament, Kodical Premier League. We definitely we are going to witness Chirashri Anchan. She will going to join very soon this cricket ground, and one of the most popular and multi-language actress who acted in so many movies, not only in Tulu but in Kannada and Tamil as well, and Telugu as well. So we are proud to see her, and she will going to join very soon in this most beautiful Kodical Premier League Season 3. 13 for the loss of 2 wicket. Here is the next one. Right arm over the wicket. Delivers that ball pitched outside the line of leg stump. No hesitation in the mind of umpire Roland Pinto to signal the wide. And Ratish Raj is replaced here as a scorer. And he just receiving the signal from umpire. Scoreboard numbers on to 14 for the loss of 2 wicket.
again, lovely delivery, beautifully bowled, absolutely perfect one there from bowler Dhanush. He looks pretty good in this particular match. First over he bowled a very good one, just a 6 runs and picked up a wicket. Now in the second over also he is almost trying to get some wicket here. Right arm over wicket delivery. This time appeal given. I think umpire saying that yes, you are right in front of me, and how can I see that the line of the ball, the impact might be a little bit outside the line of off time, but look at the way, the frustration from the bowler. That's what I'm talking about. Even the day number 1 also I'm just mentioning about, because you are the loser, and the bowler is a big loser. If you come in front of umpire after the follow through, every time I'm saying that don't come to your right, you just need to go towards your left after delivering the ball. After that delivering the ball, the follow through is so important for each and every bowler, and umpire is not given any decision. That means it's from the bat. 15 for the loss of a 2 wicket, and here is again the bowler Dhanush, a little bit disappointed because might be that is a very close call, but it cannot do anything in this situation when you're coming right in front of umpire. Again down the leg stump, going to be a wide, and 1+1. This is not good to see that Dhanush a little bit frustrated, but couldn't handle the emotion, and that's why he's ball a little bit try to ball a little bit different delivery, trying for the innovative delivery, but that ball going down the leg stump further away. 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. That brings Guru Prasad into strike now. Guru Prasad, very good player for the side. Again looking for the big shot. He's a good, every time he's looking for the blind stroke actually. He's not really waiting for the ball to come into his bat. And again that was appeal for the run out, but umpire rightly so is not interested. And there's one more dotted delivery. 17 for the loss of 2 wicket. Guru Prasad, we can see that is looking for some big shot. So far he is batted on 5 runs, and for that he took 8 deliveries, and scoreboard 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd in progress. The competition for the top in the points table between these two very good performer in the Group B. Dhanush back to his bowling mark. Bowling from the Birvirikudla end. Right arm over wicket delivers. Again that ball little bit dripping down the leg stump. Batsman couldn't manage to connect that one properly. And one more addition to total addition of that single. Scoreboard numbers on to 18 for the loss of 2 wicket here in over number 3 in progress. Dhanush back to his bowling mark. Wide of the crease delivers. Again shuffled across. This time he flum. Absolutely flum in front of wicket. This time no problem whatsoever for umpire Roland Pinto to judge, because just like I just mentioned about when you after delivering the ball you need to come to your left, and this time the bowler did a right job. Look at that one in the replay, and look at that umpire is able to see that. Look at that. I just want to mention this is a good test strategy. Maybe little bit is coming right to right, but he's stopping there only, and umpires has got having a good view enough to signal that leg before wicket. Ball pitched in a line, slightly leg cutter, and finding the batsman's back leg right in front of the midline leg stump. And the wicket number 3 is back into pavilion. 18 for the loss of 3 wicket. Kalakanda's CS strikers, after winning the toss, elected to bat first. It's an equal battle is on between these two top teams, because each and every team they certainly wanted to see their team in the top. They wanted to finish their league stage matches as unbeaten, and wait and see which team will going to become unbeaten in this league matches. You are watching the last match of the league. Bhagwan, captain of the side, is came into middle, straight away is off the mark with a single, and just working the ball towards a square leg region. So good over from Dhanush, and after completion of over number 4, searching for the right track, struggling in the middle. 19, 3 limitation, 3 overs completed, 19 for the loss of 3 wicket. We are talking about the film actress will going to join soon here in this final day of this cricket tournament, Kodical Premier League. Chirashri Anchan, and Chirashri Anchan, she's an Indian actress who works
primarily in Tulu language and Kannada cinema. Her best performance in Kannada film like Kalpana 2 in 2016 and Huliraya in 2017, and other notable acting credits includes Ram Bharot in 2016, Pavitra in 2016, and Karne in 2018, and so far so many movies she acted, and definitely going to be a proud moment for the cricket lovers when she is joining here of the final day of this prestigious Kodical Premier League Season 3. 19 for the loss of 3 wickets. Fourth over is going to start from the far end. Suman brought on to attack from the Aloysius D'Souza end. Deep long off, wideish long on, deep mid wicket, deep backward square leg, and one fielder we can see that in the short cover, and Bharatraj this time running back, the good placement here by Bhagwan, and before Bharatraj to run back towards the deep cover point region to field the ball. Ample time for Bhagwan to complete that couple of runs. With that couple of runs, and scoreboard now moves on to 21 for the loss of 3 wicket. Bhagwan being the captain of the side, fantastic all-rounder for the side, and he knows exactly the kind of batting which is required in this situation. Again, right arm over the wicket. This time, this is absolutely a poor technique there from Bhagwan. This is nothing a stroke, nothing a push, nothing a defense. Everything we can see that the technique is not proper in that occasion. Look at the way he's batted that delivery, faced that delivery, ball by Suman. That was a leg cutter, and look at the way Bhagwan played that one. He's not really looking for the sweep shot. He's not looking for a stroke as well. He just wanted to across the line, not really coming to the line of the delivery, against the turning delivery, not bending a front foot, not stretching a front foot. He was not really playing that one with the line of the delivery, the merit of the delivery, and he pays the penalty for that. And Bhagwan back into pavilion with the beauty of the delivery there from Suman. 21 for the loss of 4 wicket here in over number 4 in progress. Prashant is a new batter just coming into middle. Suman will go into ball from the Aloysius D'Souza end. The very friendly atmosphere out here in the commentary box as well. We have, of course, Abdul Qadir is a very proud president of Vishal Cricketers Kodical. And here we have one more very experienced senior cricketer, the mentor, and one more former cricketer of Sneha Malamar, enjoying the game of cricket. Srishant out here, right of our commentary box, and a lot of dignitaries out here in the commentary box as well, enjoying the game of cricket here. Because it's a very good view, isn't it? When you're watching cricket matches, particularly in the commentary box of a UCG cricket ground, it definitely looks like you're watching a cricket in Eden Garden, and it's lots of undrawn cricket. UCG, it's the best, one of the best view we can watch the cricket here in our commentary box. So something went wrong, and I think the fielder is not comfortable with the shoe. Mohan Das. He wanted to change his shoes actually, but he was maybe yes, he wanted to change the shoes and he was not really comfortable. After seeing that he is trying for the catch in the previous over when he was diving to his friend to take the catch, maybe he was not comfortable as far as the shoes is concerned, because one of the greatest part, like we can see that in cricket, if you're not having the good shoes in your foot, and then very difficult to give your 100%. And it's very important part, isn't it, having the very good shoes, and that is almost actually the thanks to Roland Pinto sir, because he is the one who has implemented, especially in underarm cricket. There is a time where the players are playing with empty bad legs. There is no shoes at all, and the times of the 90s or 80s cricket, and most of the cricketers, even I also started with my cricket with without shoes, and most of the cricketers actually, those who are started their career in the 80s and 90s, they played the cricket without wearing shoes.
once the rules are implemented in UCG cricket ground, especially when Roland Pintos are asking for every players to wear the shoes, then some players started to feel the pressure how to wear the shoes in our underarm cricket. But I think that will give a lot of discipline for the cricket. And again, two more total, and 24 for the loss of a 4 wicket here in over number 4 in progress. So 4 are completed. We are coming back to that, the more interesting stories of underarm cricket, because now it's a time for Gopi to take over the microphone. He will definitely give some the stories in 90s and 90s, because he is the one, is more than 26 years in a commentary box, and he will definitely going to tell you about the development of underarm cricket especially. And rightly, isn't it, Gopi? And you are also witnessing when I am also playing in UCG cricket, you observe me, I am playing with the bad foot, not having any shoes. But once the rules as implemented by Roland Pinto UCG cricket, and discipline which is came into underarm cricket. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, स्पेशली इन द 90s अंडरआर्म क्रिकेट सिर्फ खाली पैरों में खेला करते थे, खाली पैर या चप्पल पहनकर खेला करते थे। तब उसके बाद मैं मैच देखने के लिए आया करता था। ये बात है 1992-93 की। इट वाज इन 1992-93 जब मैं मैच देखने के लिए आया करता था। तब प्रतिष्ठित टीमें, काफी प्रतिष्ठित टीमें थी, जैसा कि कहा जाए तो जुगल स्पोर्ट्स क्लब, जैसा कि विजय लक्ष्मी कहा जाए, गोरी यंग बॉयज, मंगला देवी, मंगला मंकी स्टैंड, ऑफ कोर्स इट्स यूएफसी है, हनुमान क्रिकेटर्स जैसे घटानुघटी टीमें थी। और वहां पर जब क्रिकेट खाली पैर में खेला जाया करता था, और वो दौर जो कि था काफी अलग था। तब जब मैंने 1996 में मेरी क्रिकेटिंग कमेंट्री शुरू की थी, तब बिल्कुल अलग माहौल था, और आज जो माहौल है काफी अलग है। आज क्रिकेट बिल्कुल प्रोफेशनल बन चुका है। पहले जो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला करते हैं, लेकिन आज कई खिलाड़ियों का गुजारा जो कि इस अंडरआर्म क्रिकेट से चलता है। इस बार गेंद को उछाला है लंबा पर, सीधे गेंद लंबन सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है, कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर। 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त गुरु प्रसाद के बल्ले से लग चुका है। मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर 6 रन्स। और देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को उन्होंने उछाला था, जस्ट कनेक्टेड दैट वन मिडल ऑफ द बैट। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची थी इस वक्त उनके पैरों पर टकरा कर वहीं पर गिर गई, और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो जिस तरीके से मेरे काबिल दोस्त सतीश ने जिक्र किया था, निस्संदेह काबिल तारीफ बात उन्होंने की है। जो 90वें दशक और 2000 के दशक का जो क्रिकेट का माहौल था वो बिल्कुल अलग था। और यहाँ पर इस बार बेहतर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद उनके पैरों पर टकराई, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रमोद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। कुल मिलाकर उनकी पारी का 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। ओवर की समाप्ति कलाकंद स्ट्राइकर्स 5 ओवर के बाद 32 रन जोड़ चुका 4 विकेट के नुकसान पर। कहा तक और जहां तक यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान का सवाल है, निस्संदेह अगर उर्वा क्रिकेट मैदान पर अंडरआर्म क्रिकेट जो अंडरआर्म क्रिकेट के नियम के बारे में अगर कहा जाए तो एक ही नाम यहां पर उठता है, सिर्फ ऑफ कोर्स इट्स रोलैंड पिंटो, जिन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट के लिए एक नया आयाम इस मैदान पर दिया। न सिर्फ अंडरआर्म क्रिकेट, जबकि क्रिकेट काशी लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट माना जाता है, यहाँ पर नियमों के बारे में अगर कहा जाए तो निस्संदेह ऐसे नियम कुछ अंडरआर्म क्रिकेट में रोलैंड पिंटो ने लाए हैं, जिसकी वजह से अंडरआर्म क्रिकेट खासकर इस उर्वा मैदान पर आज भी अपना वर्चस्व बरकरार रख चुका है। Absolutely, Gopi. Not only that brings discipline for the cricket, Gopi, but at the same time, wearing the shoes and those days there is a lot of injuries because of the bad legs. A lot of injuries, isn't it? But that is prevented the injuries as well for the players. Even when I started my career in 1987 for Hanuman cricketers. This time, lovely shot, beautifully driven down to deep backward square leg boundary for a huge 6. As coming back to that, Gopi, and
After 5 years, I wear the shoes, isn't it? And that also shows that lot will give lot of confidence for me as well as for the fielding point of view, because the better grip shoes definitely will going to perform a very good fielding as well, and even running between the wickets it helps a lot for me, not only for me but all the cricket players in those days, 90s, Gopi. तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। और यहाँ पर इस बार गेंद को उछालना चाहता चुके, और यहाँ पर कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के लिए हर बल्लेबाज के लिए इस वक्त एक इनाम रखा गया है। हर छक्के के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार रोहित मोहिली इनकी ओर से दिया जाएगा। फॉर एवरी 6 will be rewarded by 500 for any batsman if he hitting a 6 declared by रोहित मोहिली। इस बार गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, और एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया थी, खाली पैरों में खेलने के वो दिन थे जहां पर काफी चोट लगा करती थी, और उसके बाद यहां पर शूज कंपलसरी कर दिए गए। और इसके प्रमुख सूत्रधार निस्संदेह रोलान पिंटो कहा जाएगा। तो निस्संदेह यहां पर उनकी वजह से यहां पर अंडरआर्म क्रिकेट के लिए एक नया आयाम यहां पर हुआ, नया आयाम के तरीके से यहां पर खेला जा रहा है। और इसके मुख्य सूत्रधार कहना पड़ेगा श्रीमान रोलान पिंटो। तो एक बार फिर से उनको धन्यवाद अभिवादन करते हुए मैच की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर 41 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 4 विकेट के नुकसान पर तैनात ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 6 ओवर के समाप्ति 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। तो व्यू यहां पर दिखाया जा रहा है टीवी मॉनिटर पर, देखिए किस तरीके से। हालांकि मैंगलोर भारत के किस जगह पर इस वक्त है, बिल्कुल समंदर किनारे। देखिए यहां पर हाईवे दिखाया जा रहा है। तो एक बेहतरीन व्यू जो कि मंगलूर नेत्रावती ब्रिज जो कि यहां पर कई गाड़ियां गुजर रहे हैं, और बेंगलुरु की कई इमारतें जो कि इस वक्त दिखाई दिए जा रहे हैं। इस वक्त खासकर स्मार्ट सिटी बनने की ओर पूरी तरह इस वक्त मैंगलोर बढ़ता हुआ, और निस्संदेह आने वाले दिनों में मंगलूर भारत के प्रमुख नगरों में से एक जाना जाएगा। और ये हाई व्यू जो कि लिया जा रहा है इस वक्त मैंगलोर मीडिया द्वारा, मैंगलोर के अंदर और बाहर के इलाकों का नजारा आप देख सकते हैं। कई बड़े इमारतें इस वक्त दिखाई देते हुए। तो ये सब बात ये दर्शाता है कि मैंगलोर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर होता हुआ, और आने वाले दिनों में मैंगलोर जो कि भारत के प्रमुख शहरों में से एक शायद जाना जाएगा। और जहां तक सवाल है अंडरआर्म क्रिकेट का, तो बेंगलुरु का जब तक नाम रहेगा तब तक अंडरआर्म क्रिकेट का नाम भी बरकरार रहेगा मंगलूर में। तो अस्तित्व भी बरकरार रहेगा कहना पड़ेगा। तो जहां तक सवाल है अंतिम ओवर का, तो 7वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, 1 रन का इजाफा। कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के लिए हैट्रिक छक्के के लिए 2000 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया है। विशाल कोटारा इनकी ओर से हैट्रिक 6, 2000 रुपए कैश प्राइज फॉर हैट्रिक 6 डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर विशाल कोटारा। और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर, वाइड का इशारा। और हर छक्के के लिए फॉर एवरी 6 500 रुपीज कैश प्राइज फ्रॉम मिस्टर रोहित मोहली डिक्लेयर्ड फॉर द बैट्समैन ऑफ कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। और गेंदबाज की गेंद इस बार उछालना चाहा, आई थिंक नो,
इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल, अपील लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 43 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा लेकिन चूंकि विकेट कीपर की बाईं ओर से गेंद निकल गई शॉर्ट फाइन लेग पर और इस बीच 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 44 रन जोड़ चुका है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स, जबकि उनकी पारी का 7वां और अंतिम ओवर इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज कार्तिक का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर। 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 45-45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। 2 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, सिर्फ 2 गेंदें बाकी। कार्तिक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुके हैं। सुबह के 10:50 यहां पर बच चुके हैं और यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर। फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को इस वक्त खींचते हुए 1 रन का इजाफा। 46 नाउ, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज यहां पर क्या करते हैं। और कार्तिक का गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए गुरुप्रसाद जो कि एक लंबी पारी खेलते हुए इस वक्त ऑन साइड पर एंड दिस टाइम ही फिनिश द इनिंग्स इन अ स्टाइल। गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ वो 500 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं श्रीमान जिसकी घोषणा की है श्रीमान रोहित मोइली ने। और इस छक्के के साथ अंतिम गेंद पर 50 का आंकड़ा पार कर चुका है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। 52 दे स्कोर फॉर लूजिंग 4 विकेट। So all the marks going to the batsmen who remained unbeaten after being playing a marathon innings for their side. गुरुप्रसाद, और देखते हैं गुरुप्रसाद ने कितने रन अपने पारी में बनाए। 3 छक्के उन्होंने लगाए, 31 रन उन्होंने बनाए। He scored remain unbeaten on 31 runs including 3 massive sixers. And because of his health, Kalakanda Sia Strikers finished well with 52 for the loss of 4 wicket in the stipulated 7 overs after being a slower start. So absolutely fantastic piece of batting performance came from Guru Prasad, who remained unbeaten on 31 including 3 massive sixes. And Kalakanda registered a fighting total in the scoreboard 52 and 53 the target for Kate Titans in the last league match of this competition. And 53 they have to score under 7 runs per over. That means in exactly calculation just over 7.5 runs per over they have to score for victory. 53 they have to score in the stipulated 42 delivers with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. और जहां तक ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So 53 in 7 overs they have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब कटे टाइटंस की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. And now it's time for break. Thank you. धन्यवाद.
So welcome back, and a lot of best wishes we can see all around the ground. We have very respected MLA of South constituency, Vedabas Kamath, wishing very best wishes for Silver Jubilee celebration of official cricketers Kodical, and we have MLA of North constituency, and Dr. V. Bharat Shetty, wishing the very best wishes for Kodical Premier League Season 3, and we have Inayat Ali Mulki, and Secretary of Karnataka Pradesh Congress Samiti, and we have dignitaries like Aloysius D'Souza, and we have one more founder, President of Birver Kudla, and we have Aloysius D'Souza. That is the end, that was a far end, and he is the one who is responsible for the success of cricket tournament by giving a lot of support for this KPL Season 3. The first ball, Bhagwan starts with a warm-up delivery, ball outside the line of off stamp, and nothing much to do with the delivery. Of course, batsman's first intention to reach the delivery, quickly realizing that ball is going further away, outside the line of off stamp and wide signal. First run coming up, the long way to go here, across the line, swinging that one beautifully, down to deep square leg boundary, ball running down to deep square leg boundary, but little bit the grass out here in the outfield, especially at the deep backward square leg region, and because of that huge grasses out here in that outfield, ball really not traveled very quickly, but once when the ball is left the bat of the batsman, looks like that will go into a boundary, but unfortunately ball little bit stopped because of that huge grass out here in the square leg, deep square leg, and the batsman have to settle for the couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard now moves on to 3 on the board without loss of any wicket here in over number the first in progress. Bhagwan is the captain of the side, certainly wanted to give a good start, but at the same time, the opening batters of Kate Titans, they wanted to get a good start because they're chasing a big total of 53 to win this match, and Bhagwan bowling right arm delivers. Oh, total misjudgment, absolutely good delivery indeed. And batsman Suman seeing the line first, it's outside the line of leg stamp, but Bhagwan bowling a leg cutter in that occasion, ball just curving between that outside the line of leg stamp and coming in around the legs, and the misjudgment by the batter again across the line, swinging that one, and off stop by the fielder at square leg, and because of that the batsman in front of square in that occasion, that ball went, and the fielder from shorter square leg region in front of square fields the ball, ample time for the batsman Suman to complete the single. Scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Bhagwan bowling away from us, right arm over the wicket, this time lovely shot, D1 firmly, this time again the ball will go into stop a little bit, and the fielder from deep mid wicket run really very well to stop the ball just an inches inside the boundary line, but umpire Roland Pinto and scoring umpire have to see that whether the ball is stopped cleanly or not. Yes, they are satisfied, and 3 valuable runs here for Kamal. With the 3 valuable runs, scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket here in over number the first in progress. Very hot indeed. The time is exactly 11 o'clock. Looks like Kamal, little bit correction, Suman is maybe having again the that hamstring injury. Looks like maybe the dehydration. I don't know what the kind of problem he's facing here, because running hard between the wicket, they run hard 2 runs and then they 1 runs and then 3 runs, and altogether they run 7 runs, so that is looking little bit tired in the middle. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ, ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೂ acted the many movies in languages like Tulu as well as Kannada cinema. She is best known for her work in Kannada
films like Kalpana 2 in 2016, and she is played a very big role in the film Huli Raya in 2017, and other notable acting credits includes Ramba Ratti in 2016 and Pavitra in 2016 and Karne in 2018 and 2019. She has played a very big roles for the success of the movies, the Tulu and Kannada languages. Meanwhile, one more wicket. The first wicket is back into pavilion, and Bhagwan picked up a valuable wickets here, and the batsman Suman this time is caught at mid wicket, and the wicket number is back into pavilion. It's absolutely big wicket. The Suman is a kind of batsman who can be very, very effective in the power play overs, and losing him, I think it's definitely is a big breakthrough. Here is an announcement, 250 rupees for each and every wickets for bowler. And that means 250 rupees already went into the pocket of Bhagwan. It's not there. Rohit Moily is announcing that 250 rupees. So once again, warm welcome for the multi-language actor and our proud actress Chirashri Anchan she is arriving here. So welcoming her, wholehearted welcome for her for this wonderful cricket tournament. 8 for the loss of 1 wicket. So first over completed of completion of over number first is 8 on the board for the loss of 1 wicket. So warm welcome for Chirashri Anchan for this wonderful cricket tournament, Kodical Premier League Season 3, which is proudly organized by Vishal Kodical as they are celebrating their silver jubilee, and it's a proud moment for this cricket tournament having one of the very talented, very popular multi-language actress Chirashri Anchan. So on behalf of all cricket lovers, a warm welcome for Chirashri Anchan for this wonderful cricket tournament. Multi-language actress, of course, she performed in both Tulu and Kannada language as well, and some of the most popular movies. She done a great job in Kalpana 2 in 2016 and Huli Raya in 2017, and noticeable some performance in Ramba Ratti in 2016 and Pavitra in 2016. So warm welcome for KPL Season 3 for Chirashri Anchan on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, and of course on behalf of all film lovers. So appeal for leg before wicket, umpire unmoved, rightly so. That ball is just going to miss the leg stump, and again leg by call by umpire. Mottome Chirashri Anchan actress ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ very talented Chirashri Anchan for this cricket tournament. One more wicket, she's gone. The wicket number 2 is back into pavilion, and 250 rupees in the pocket for the bowler Ganesh. He's got a fantastic tournament from the bat, from the ball, and now he's got 7 wickets. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರೇಷ್ಮಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್
Kodical Premier League Season 3. We have one more dignitaries out here on the stage. Elosis D'Souza, proprietor of Jack's Panjimugir, having him in this cricket tournament definitely will going to lift the spirit of the cricket lovers. Absolutely, that's for again the chance of run out in the low cycle set, and the first attempt he missed it, second attempt directly that is gone. Again the wicket number 3 is back in the pavilion, wide signal umpire, that means one run is just added to total in the form of extra and 10 for the loss of 3 wicket. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಇವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. Definitely she is a proud mother of Shirashri Anchan, is going to present in the main stage of this cricket tournament. So warm welcome for all dignitaries for this cricket tournament. And now it's a 200 rupees, 250 rupees for the run out as well. And Vishal Rohit Moili and announcing that the cash prize for the best performance by their teams. So from the far end, Ganesh right above the wicket, across the line, swinging at one, appeal for leg before wicket, but umpire not satisfied. Might be the ball is going to miss the off stamp, a little bit across the line of the delivery, and pitching outside the line of leg stamp again. That's why umpire not interested to raise his finger. 10 for the loss of 3 wicket. Ganesh to Pranit. Right above the wicket, was swinging that one again. Not a not a good attempt there from the batsman. Trying and missing. And fantastic over this comes in after completion of over number 2, chasing 53 to win this match. Still struggle time continues here for Katte Titans at 10 for the loss of 3 wicket. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸುಮಾ ಚರಣ್ SK ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ವುಮೆನ್ ವಿಂಗ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವರೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And Ashok Nagar Women Wing Birwer Kudla Cricket Tournament BK Champions Trophy, which is organized in this particular cricket. It's a successful cricket tournament under the great leadership of Suma Charan SK. So I request Suma Charan SK to please come and have your seat in our main stage. So 10 for the loss of 3 wickets. So over number 3 will go into continue. Let me get correction. Shivaram will going to bowl that over number 3rd. Oh, bowl him, clean him up. This is the beauty of the delivery, and Bharat Raj no clue whatsoever as far as that turn of the delivery is concerned. He is not really reading the turn and just couldn't manage to save his wicket from the beauty of the delivery. The wicket number 4 is back into pavilion of Titans. 10 for the loss of 4 wicket. Now Shivaram he's got a 250 rupees in the pocket, and at the same time Ganesh already got a 500 rupees for his 2 wickets. And what a fantastic performance here by the bowlers of Kalakanda CS Strikers. This time again, lovely delivery indeed. And one more announcement is coming here. If any bowler will going to get a hat-trick wicket, he will going to get 2,500 rupees. And once again, Vishal Kotara announcing that prize money. Again, the lovely delivery indeed. Batsman looking for the reverse stroke, missed it completely. No chance of any run. The deep in trouble now. 10 for the loss of a 4 wicket. And Katte Titans are not really coming out of that. The breakthrough and the early breakthrough, and that looks like Kalkanda CS Strikers are in a complete control over this match.
And again, right arm over the wicket. Delivers again a square drive, beautifully driven down to deep cover point region for an easy single. There is a protection has been given in the deep, and with the addition of that single scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 4 wicket. What a fantastic atmosphere out here in this most beautiful and historical UCG cricket ground, and you're watching an on more historical cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3, which is having a live telecast with Mangalore media and one of the popular and quality YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament. And here is again Shivaram bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Again that ball is outside the line of off time. Again the batter Praneeth is looking for the reverse stroke, missed it completely, and the wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. And 11 for the loss of 4 wicket here in over number 3rd in progress. They're deep in trouble. They need to break the shackle with some big shots if they want it back in this game. Again, looking for the reverse stroke, but there is no result for that one. But certainly it's a result for the fielding team. What a fantastic over is completed by Shivaram. Just a single run and 1 wicket in this particular over. So completion of over number 3. It's 11 for the loss of 4 wickets. Still long way to go. 42 runs required in remaining 4 overs, and more than 10 runs per over is the required run rate. But a little bit difficult task in front of Cutter Titans, and before the next over will going to start is a time for Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. Satish. So struggling time continuing here for the batsmen of Cutter Titans. 11 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs. 3 overs in fact, and 41 more runs now they have to score for victory. 42 in fact. First ball of the 4th over, इस बार गेंद को ड्राइव किया था, फॉलो थ्रू में पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहा, लेकिन ठीक तरह से रोक नहीं पाया, और गेंद जब तक फील्ड और सीलिंग डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 12 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। निस्संदेह एक लंबी सांसदारी की पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है। गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए कलाकंदासिया स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी है। गेंद इस बार गेंद लेग स्टंप पर टकरा चुकी है। 250 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज गणेश। गेंद इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और गेंद सीधा टकराई लेग स्टंप पर जाकर रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके, और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है इस वक्त कट्टे टाइटंस का। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So back to this game. Still the batsmen of Cutter Titans are searching for the right track. It's 13 for the loss of 5 wicket, और चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज शोभित का आगमन यहाँ पर हो चुका है। गणेश गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर छोड़ दिया था, और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को स्वयं विकेट कीपर के द्वारा फील्ड कर लिया गया। वाइड का इशारा अंपायर कर वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और अगली गेंद अच्छी गेंद एब्सोल्युटली मच स्ट्रेट वन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज
एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद चिप किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। कपल ऑफ बाउंसर्स, इनफैक्ट स्लाइट बिट ऑफ मिसफील्डिंग देयर। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। कोडिकल क्रिएट ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. तो अगली गेंद के लिए तैयारी है गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 overs completed is 17 for the loss of 5 wickets. 36 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 12 runs per over. 36 और 12 रन प्रति ओवर रिकॉर्ड रन रेट की औसत से इस वक्त 36 रन बनाने हैं बचे हुए 18 गेंदों पर, 2 रन प्रति गेंद इस वक्त बनाने हैं, और निस्संदेह कठिन सा लक्ष्य इस वक्त कटे टाइटंस के सामने, और देखना यह है कि उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और गेंदबाज, द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक फ्रॉम बिरवेर कुडलैंड इज हितेन, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शोभित के लिए, जबकि प्रणीत नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, सुबह का वक्त 11:15 यहां पर बच चुके हैं। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है, और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर करते हुए नहीं। और की पहले गेंद हितेन दाहिना तो ओवर द विकेट, बोल्ड आउट। ऑन साइड पर गेंद तो खेलना चाहा, लेग कटर गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए, और इसी के साथ यह गेंद जहां टकरा चुकी है ऑफ स्टंप पर। छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। 17 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इनफैक्ट फॉर कट्टे टाइटंस। जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो लक्ष्य अभी अब काफी मुश्किल दिखाई देता है, और हितेन 250 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पर प्राप्त कर चुके इस विकेट के जरिए, और हर विकेट के लिए 250 रुपए का नकद पुरस्कार श्रीमान रोहित मोइली इन्होंने घोषित किया है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए, और हर हैट्रिक विकेट के लिए 2500 रुपए का नकद पुरस्कार विशाल कोट्टारा इन्होंने, श्रीमान विशाल कोट्टारा इन्होंने घोषित किया है। और यहां पर 17 गेंदें बाकी हैं और 36 और रन चाहिए। 36 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 17 डिलीवरीज। गेंदबाज हितेन गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और हितेन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, मिड विकेट पर फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक वो एक टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया था इस वक्त, और गेंद इस वक्त जब तक मिड विकेट पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 19 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 19 for the loss of 6 wickets in the over number 5 in progress. हितेन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद bowled out inside edge out to the stumps, dragged down to the stumps, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 7 फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके बल्ले के भीतरी किनारे को टकराने के बाद सीधे स्टंप पर टकरा चुके। एक और 250 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त गेंदबाज हितेन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और 4 गेंदों में 2 गेंदों के जरिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके इस ओवर में हितेन, और 19 रनों पर 7वां विकेट यहां पर खो चुका। कट्टे टाइटंस काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। तो इस वक्त नए बल्लेबाज प्रज्वल का आगमन यहां पर होता हुआ, अब ऐसा कहना पड़ेगा कट्टे टाइटंस को इस वक्त कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस बार लेग स्टंप पर वाइड का इशारा, और हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है चिरश्री अंचन, जो कि मल्टी लैंग्वेज एक्ट्रेस है, बेहतरीन कलाकार,
तुलु और कन्नड़ा सिनेमा में उन्होंने अपना किरदार बतौर एक्टिंग के तौर पर बाखूबी अदा किया है। कल्पना 2 जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और 2017 में हुलिराया जो फिल्म थी, इसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और उसके अलावा रंबा रोटी, पवित्र और करने जो कि तुलु फिल्म्स थे, इसमें भी उन्होंने बेहतरीन अपना किरदार अदा किया था बतौर एक्टर। तो एक प्रतिभाशाली एक्टर चिरश्री अंचन जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टेज पर, हम एक बार फिर से उनका अभिवादन करते हैं संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से। आपका हार्दिक स्वागत है चिरश्री अंचन जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर 22 रन बच चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड ओवर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। सो जस्ट 2 overs remaining and 31 more runs now they have to score for victory with the required run rate of exactly 15.5 runs per over. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अब कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही कटे टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकती है। अंतिम लीग मैच इस कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द सिल्वर जुबली 25th ईयर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए एलोशियस डिसोजा इनकी ओर से। भगवान पहली गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, गेंद को हल्के से मोड़ दिया। इस वक्त 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 23 रन 23 for the loss of 7 wicket at the start of the 6th over. In fact, for Kalakanda स्ट्राइकर्स ये गेंद मोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 29 more runs they have to score for victory in remaining 10 deliveries. 25 1 + 1 2 runs added to the total. It's a 25. ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, सिंगल रन एडेड। 26 now for the loss of 7 wickets. 27 more runs now they have to score for victory. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, फ्लाइटेड उछाला लंबॉल पर 6 रनों के लिए। इस वक्त चौकिया छक्के ही उनको इस मैच में वापस ला सकते हैं और यहां पर छक्का जड़ चुके हैं फील्डर, माफ कीजिए बल्लेबाज, और 6 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अल्फाज दयविಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಫಾಸ್। 32 for the loss of 7 wickets. So 21 more runs now they have to score for victory in remaining 9 balls. और बेहतरीन छक्का इस वक्त लग चुका है प्रणीत के बल्ले से और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। पैरों पर टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर निशाना और आउट। 8वां विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। 32 for the loss of 8 wickets. यत्विज जिन्होंने रनआउट किया था और इस रनआउट के लिए भी वो 250 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 32 for the loss of 8 wickets. 6th over in progress. So 8 balls now remaining and 21 more runs now they have to score for victory. Again इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। It's 33 for the loss of 8 wickets in the over number 6 in progress. 20 runs more required, 7 balls left in their innings. और गेंदबाज ये गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, not more than a single. It's 34 now for the loss of 8 wickets and 6th over has been came to an end. 6 overs completed, 34 for 8, 19 to get from last over. 19 रनों की दरकार अंतिम ओवर में और गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर शुरू करते हुए
Shivaram, the bowler, is now starts the proceedings from Birwer Kudland, that means from the commentator box end. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत, जो कि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। 19 रन चाहिए 6 गेंदों में, 19 टू गेट फ्रॉम 6 बॉल्स। पहली गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, रन्स लेना नहीं चाहते बल्लेबाज, और 5 गेंदें बाकी है, अब 19 रन चाहिए विजय के लिए। 19 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स नाउ। ऑन साइड पर उछलना चाहा, एक बार फिर से चूके, नॉट क्वाइट मिडल गेट, स्लिम इट ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से नहीं मिलेगा। सो 19 टू गेट स्टिल नाउ फ्रॉम 4 बॉल्स। फुल टॉस, स्विंग किया खूबसूरती के साथ, फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था, ऐसा कहना पड़ेगा, बल्ले के भीतरी किनारे पर, अंदरूनी किनारे पर फुल टॉस गेंद टकराने के बाद निकल गई थी फाइन लेग पर, फाइन है, और इस चौके के साथ 38 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 38 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 15 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स। 3 गेंदें 15 रन चाहिए। इस बार ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिलेगा। नाउ इट्स 36 now for the loss, 39 now for the loss of 8 wickets, and now 14 to get from 2 balls. 2 गेंदें 14 रन चाहिए। अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो कलाकंदा की विजय निश्चित है। इस बार गेंद को उछाला और इस बार रन आउट होता हुआ। 9th विकेट फॉलन, 39 for 9, और गेंदबाज शिवराम 250 रुपए प्राप्त कर चुके हैं इस रनआउट के लिए। The last ball remaining in the innings, and the last batsman is now comes out to the middle. Number 11 and the last batsman at the now striker end, and the last ball of the match is now coming up. अंतिम गेंद मैच का लेकर तैयार गेंदबाज शिवराम। ये गेंद बेहतर गेंद थी, और इसी के साथ the innings is now up. The stipulated overs are completed, and Kalakanda Sia Strikers are won the match by 13 runs against Katti Titans in the last league match, and with that victory they bagged the complete points. So all league matches has been ended, and now the playoff match will have to play within just short while, and we'll be taking a short break and we'll be back right after the short break when the playoff match will resume. Thank you. धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಕಲಾಕಾಂತ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 31 ರನ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ
ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾದಂಥ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಇವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮಂಡಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have one more dignitaries now here stage Purnima Madhusudan Malayangadi, the proud mother of our actress Sridhari Ansan. So warm welcome madam for this wonderful moment. Kodical Premier League ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ Kodical ಇದರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು Kodical Premier League ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. So big hand for convener. Absolutely, she's the convener as well.
It's the last and final call for Kalakanda CS Strikers players to sign the official chart. I request all the players of CS Strikers Kalakanda. ದಯಮಾಡಿ CS Strikers Kalakanda ತರದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So first qualifier number one match will be played between Kalakanda CS Strikers versus Kodical Create Challengers. So Kalakanda are won the toss and what the decision we are taking, just we have to wait and see.
luck, and the strikers have won the toss. They elected to bat first. And I request all the players to please start the match immediately. And for the next further comments, I would like to invite my friend Satish in English, where the match will going to resume. Thank you.
Right, the first qualifier match, in fact, is going to start between Kalakanda Sia Strikers versus Kodical Create Challengers. And Kalakanda Sia Strikers have won the toss. They elected to bat first, and their openers are the crease. And just we are waiting for the first ball of the match. So the first ball of the match is now coming up. Of the qualifier number 1, and the bowler starts the proceedings is Prashant. Meantime the striker is Mahesh and the non-striker is Shivram. और पहले गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार प्रशांत क्वालिफायर मैच नंबर 1 का, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार महेश. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. 7 fielders stood inside the 20-yard circle. As far as the rules and regulations of this power play is concerned, in the first 2 overs, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर रहा. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स का 1 रन बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था. मैं समझता हूं उन्होंने अपना बैकफुट थोड़ा सा लिफ्ट किया था, थोड़ा सा उठाया था अंतिम क्षण में, और जैसे गेंद विकेट कीपर के हाथ में पहुंची, विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया, और इसी के साथ शिवराम का विकेट पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में गिर चुका है. 1 रन पर 1 विकेट यहां पर खो चुका है कलाकंदा. और जहां तक सवाल है सतीश, कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स और कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स, ये दोनों टीमें अपने संतुलित प्रदर्शन से पहले 2 स्थान प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला के क्वालिफायर मैच नंबर 1 में खेल रही है. तो मैं समझता हूं यहां पर एक कांटे की टक्कर हमें उम्मीद की जा सकती है. लेकिन जहां तक सवाल है, पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है. अब मैं समझता हूं कलाकंदा स्ट्राइकर्स को एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है, तो एक साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर निभानी होगी. Exactly, Gopi. And the 2 teams, they're unbeaten in their league matches, and there are 2 top teams. Definitely, they're playing the qualifier number 1. Might be that was both the teams doesn't want to take a second chance. The losing team will go into play eliminator round, and I think this match, both the teams, they are definitely taking very seriously, and they wanted to win the match in the first attempt itself to get into the place in the Kodical Premier League Season 3. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर दोनों टीमें अपने ग्रुप में टॉपर होकर इस क्वालिफायर मैच नंबर 1 में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, और यहां पर निस्संदेह इस मैच में विजय दर्ज करके दोनों टीमों का यह प्रयत्न रहेगा कि इस क्वालिफायर मैच नंबर 1 में विजय दर्ज करके सीधे फाइनल में प्रवेश कर सके. इस बार देखते हैं क्या होता है. ये गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को स्कूप करते हैं ऑफ द बैकफुट. संदीप गेंद का पीछा करते हुए बेहतर फील्डिंग वहां पर, और इससे पहले कि जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल सके. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಯಶೀಲ ಇವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜಯಶೀಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. और इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को निकाल दिया है. थर्ड मैन सी मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए. He just played that one with a reverse shot and finds the gap as well between short third man and gully, and because of that he gets in a boundary for that. और निस्संदेह एक और मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, विशाल क्रिकेटर्स के जयशील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टेज पर, और जयशील इनको सर्व क्रीड़ा प्रेमी और संगठक की ओर से हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं. आपका हृदयपूर्वक स्वागत है सर. और यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर 2 कदम आगे जरूर निकले, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित ओवर की समाप्ति. 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति. और जहां तक सवाल है पहले ओवर का, तो पहली गेंद पर दूसरी गेंद पर विकेट जरूर गिरा था सतीश यहाँ पर शिवराम का, लेकिन उसके बाद एक चौका लगाने के बाद महेश अपने टीम को कुछ हद तक बेहतर शुरुआत देने में सफल रहे, और 8 रन पहले ओवर में एक विकेट खोने के बावजूद मैं कहूंगा ये एक अच्छी शुरुआत यहां पर कर चुका है कलाकंदा. Absolutely, Gopi. It's an equal start both the teams. As far as the wicket is concerned, I think the opposition team they able to pick the wickets, and at the same time for Siastar
strikers Kalakanda. They got 8 runs. I think it's a good score, Gopi. In a power play over getting 8 runs. I think no matter they lost 1 wicket, but they just intention is very clear that they are only looking towards the runs. Even they lost the wicket of the first wicket they lost, but still they managed to maintain the run rate. It's so good to see because the 2 hours the power play is going to be very key here for the team first team. Batting first because they wanted to set a good target. 45 to 50 definitely Gopi. It's a good score to depend and wait and see how well they will going to continue that good start in the remaining overs. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जहाँ तक सवाल है एक बेहतर स्कोर की इस वक्त जरूरत है और साझेदारी जहाँ तक सवाल है इस वक्त साझेदारी निभानी होगी। ये गेंद लेग साइड बाहर, गेंद कौन साइड पर स्विंग करने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे, गिर पड़े। विकेट कीपर ने विकेट भी जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। पृथ्वीराज गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और गुरु प्रसाद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए। गुरु प्रसाद का जहां तक सवाल है पिछले मैच में 31 नाबाद अविचित नॉट आउट उन्होंने बनाए थे और इस मैच में उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की वो कोशिश में और एक बार फिर से सामना करते हुए पृथ्वीराज की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। पृथ्वीराज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार वन साइड पर उछाला है, लंगोल पर रस्सी में लगा जवाब 6 रनों के लिए। तो गुरु प्रसाद जो कि पिछले मैच के सफलता के सिलसिले को बल्लेबाजी में इस मैच में भी आगे बढ़ाने की सूचना यहां पर दे चुके हैं। मिडल ऑफ द बैट इस वक्त गेंद को कनेक्ट किया था, वाइड लॉन्ग ऑन के बाहर गेंद को भेजने में सफल और छक्का उनके पक्ष में आता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज पृथ्वीराज स्ट्रेट अवे इस वक्त गेंदबाज के ऊपर दबाव, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और दबाव का प्रतिफलन यहां पर दिखाई देता हुआ ऑफ स्टंप से काफी बाहर के और उन्होंने गेंद फेंकी थी, दिशाहीन गेंद और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 16 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और गेंदबाज पृथ्वीराज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पृथ्वीराज धीरे धीरे अपनी बेहतर गेंदबाजी की वापसी पर की तैयारी में ये गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों में नहीं, गेंद यहां पर छूट चुका है और निशाना लग चुका है इस वक्त, लेकिन इस बीच अंपायर इशारा कर चुके हैं 3rd अंपायर के लिए। तो यहां पर गेंद पर देखिए किस तरीके से हुआ था, टॉप पे टकराई थी, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट, बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने किया था जरूर लेकिन दूसरे प्रयत्न में भी वो गेंद को यहां पर लपक नहीं पाया और इस बीच नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज जब तक स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो इस वक्त स्टंप्सों को बिखर कर ले जाता हुआ। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया था। Great attempt, Gopi. Just look at the attempt there from wicketkeeper behind the stump. And this particular match is so impressive. The first wicket, which because of his electrifying work behind the stump, just in a fraction of a second, he complete the job. The first dismissal we're talking about. And the next one, actually, in the same over, he made one more brilliant attempt for the stump out. But now he's attempting for the catch. And of course, after first attempt, second attempt, ball looks like it's going to fell into the ground. He's made a diving effort to his friend, and he just dropped the catch. But still, he managed to trying for the run out in that occasion. But so far, I think it's very impressive. Alphas behind the stump. It's a great work. And Gopi definitely come back. These two teams, I think both the teams, the well balanced team, isn't it? Both the teams has got some very good players in the side, and a number of all rounders. Both the team has got. That's why both the teams has got top places in the respective pool, and that's why the level of competition is going to be very, very high here. And but coming back to the strategy, the game plan, what CS Strikers Kalakanda has got, they're only looking towards
run rate, Gopi. Especially they wanted to exploit the fielding condition in the first over of the power play. And Gururaj once again, he's got a very good runs in the previous match, and now he's just continuing that form in this particular match as well. He's, I think, going to be a very, very key player now, but he's not in danger. I think he's in a non-striker's end, and his partner definitely need to see that whether what the kind of decision will going to come here from third umpire Roland Pinto. Altogether, it's a very good competition. बिल्कुल सतीश, एक बेहतरीन स्पर्धा कंपटीशन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और गुरुराज जो जीवदान पिछले गेंद पर प्राप्त कर चुका है, विकेट कीपर के हाथों में लगता है काफी हद तक चोट आई है यहाँ पर, अपने हाथों को वो झटकते हुए। और इस बीच अंपायर, तृतीय अंपायर उस निर्धार का परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और जहाँ तक सवाल है खेल का, जो कि खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, तो एक बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन करने के बाद इसी श्रृंखला के प्लेऑफ में ये दोनों टीमें पहुंची। काफी संतुलित टीम है, काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, दोनों टीमें में मौजूद है और हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं कि इस मैच में हमें एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। Absolutely, Gopi. And actually IPL pure is going on, and there also the playoff round already started. And one team, the Gujarat Titans, came into the finals. And yesterday's match, Gopi, it is a fantastic, isn't it? And of course, all of the followers, the fans of RCB, definitely they cheered that the victory what they got. And surprise package in that match is Rajput Padikar, and it's a surprise package. The player one who really unsold in the auction base, and then RCB is retained him as a substitute player for the team, and he's done a fantastic job, Gopi. And now not out, which is a signal coming from umpire Roland Pinto, and the same kind of fever here in KPL, Gopi, just like what the fever we have got in IPL, the same fever is going on here in the playoff round in this Kodical Premier League as well. बिल्कुल, जिस तरीके का बुखार, क्रिकेट का बुखार आईपीएल में छाया हुआ है, उसी तरीके का बुखार यहाँ पर क्रिकेट का बुखार केपीएल में इस वक्त, यानी कोडिकल प्रीमियर लीग में इस वक्त छा चुका है और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और जहां तक सवाल है, पिछले गेंद पर नॉट आउट का निर्धार दे चुके हैं तृतीय अंपायर रोलैंड पिंटो, और यहां पर गेंद आगे बढ़ता हुआ ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और जहां तक सवाल है ओवर का, तो दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कोप किया, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक रन मिलेगा। इससे पहले कि डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ वो अपना छोड़ बदल सके। 18 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर इस वक्त उछाला है गुरु प्रसाद ने, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वाइड इस लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच जो खाली क्षेत्र था, उस क्षेत्र को चुनते हुए इस वक्त गेंद को उछाला, मिडल ऑफ द बाद गेंद को कनेक्ट करते हुए, गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और जहां तक सतीश मैं समझता हूं, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, गुरुप्रसाद की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरुप्रसाद ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 रन उन्होंने बनाए थे, और इस मैच में भी एक छक्का एक चौका वो जड़ चुके हैं, और मैं समझता एक बेहतर स्कोर की ओर अगर अग्रसर होना है तो गुरुप्रसाद को यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी। Absolutely, Gopi. It's all about the game plan, isn't it? The game came in a perfect game plan that they need to exploit that 2 over of the power play, and we can see that the first over it's the 10 runs and 8 runs in fact, and 14 runs which is came from the second over, and domination once again the man in form, and Gururaj getting that runs, and Guru Prasad 16 runs in just 6 deliveries he faced with the help of 1 boundary and 6, and now we would like to see the game plan from these 2 batsmen, Gopi. After that power play, everybody knows that the fielding restriction is up, and we can see that so many bodies out there in the deep, and now I want to see that strategy from Guru Prasad in delegation and his partner, what kind of strategy they will going to implement to maintain the run rate what they got in the first over of the power play. बिल्कुल सतीश, और देखना यह है कि 2 ओवर के बाद फील्डिंग के प्रतिबद्ध यहाँ पर हट चुके हैं। अब बल्लेबाज किस तरह की रणनीति यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रन बनाने के लिए। सुमित जो कि ट्रम्प कार्ड गेंदबाज इस वक्त
क्रिएट चैलेंजर्स की ओर से पहली गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया, सिली मिड ऑन पर रन्स नहीं मिलेगा। और जहां तक सुमित का सवाल है, इस श्रृंखला के लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज है और वो इस वक्त ओवर यहां पर शुरू कर चुके हैं। और गेंदबाज एक बार फिर से सुमित की गेंद लेग स्टंप से बाहर, बल्ला उड़ा चुके हैं, गेंद जाती हुई फाइन लेग पर, टॉप एज पर टकराने के बाद 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, छोड़ देते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन बल्ला अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने अड़ाया। तो इस बीच बल्लेबाज और टीम के पास 1 रन मिल चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 ओवर पर। सुमित गेंदबाजी के लिए ड्राइव किया, खूबसूरत व्हाट अ शॉट ऑफ द बैक फुट, और गेंद को सीधे इस वक्त ड्राइव कर दिया गुरु प्रसाद ने। और जहां तक गुरु प्रसाद का सवाल है, लीडिंग रन गेटर इस श्रृंखला के 46 रन अब तक वो जोड़ चुके हैं। 46 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर इन दिस टूर्नामेंट फॉर गुरु प्रसाद। और इस बार अपील, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट घोषित। तो यही तो खासियत है सुमित की, कभी कभी गेंद को अंदर की ओर लाते हैं तो कभी कभी बाहर की ओर निकालते हैं, कभी कभी सीधे गेंद फेंक देते हैं। और यहां पर इस गेंद पर बल्लेबाज गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद को ठीक तरह से वो बल्ले पर ले नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज महेश 6 रन बनाने के बाद आउट होकर 7 रन बनाने के बाद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 24 रनों के ऊपर। इट्स 24 for 2 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। And once again, Gopi, it's a very good strategy. Actually, the captain Sandeep just waiting for when the power play over will go into complete, because he wanted to bring this wicket-taking bowler, the trump card bowler Sumit. He is a leading wicket getter of this tournament, and straight away Sumit Juarek again not disappointing his captain, and is a very important breakthrough, vital breakthrough here for challenge Kodical. बिल्कुल सतीश, ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया। फुल टॉस गेंद पर डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ ऑफ कटर गेंद पर स्ट्रोक खेलना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 25 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। तो चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ पहली गेंद इस बार पैरों पर टकराई, ऑफ स्टंप पर आती हुई और अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर हरीश पटेल ने। 1 रन का इजाफा। आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट। इनफैक्ट बल्ले का भीतरी किनारा यहां पर टकराया था और 1 रन का इजाफा हो चुका है और 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहता ऑफ साइड पर गुरु प्रसाद ने चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 2 बेहतर गेंदें प्रज्वल इस ओवर में अब तक फेंक चुके हैं। तीसरी बार इस ओवर में ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिड विकेट पर रन नहीं मिलेगा, गेंद को फील्ड कर लिया गया और स्कोर रुक चुका है 26 रन। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है प्रज्वल का। एक बार फिर से तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 22 का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज प्रज्वल दाहिना तो द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद 10 विकेट कीपर के हाथों में। और मैदान की दाईं ओर जो फ्लेक्स इस वक्त दिखाई दे रहा है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के
मालक सुरेश पुजारी का उस फ्लेक्स पर अगर कोई छक्का लगाता है तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। मनोज कॉर्पोरेटर और विशाल कोट्टारा की ओर से गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 रन सिर्फ इस ओवर में बने। 4 ओवर की समाप्ति, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो 4 ओवर की समाप्ति और मैं समझता हूं इस ओवर में अच्छा कमबैक किया है सतीश। गेंदबाज प्रतिबल में 2 रन इस ओवर में सिर्फ उन्होंने प्रदान किए और 3 ओवर का खेल बाकी। अगर 3 ओवर में इसी तरह की गेंदबाजी अगर करते हैं गेंदबाज कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के, तो निस्संदेह वो कम से कम स्कोर में यहाँ पर कलाकंदा को रोक कर रख सकते हैं। लेकिन जब तक गुरु प्रसाद की उपस्थिति है, मैं समझता हूँ कलाकंदा के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने की उम्मीदें अपेक्षाएं बरकरार हैं। So absolutely, Gopi, and thank you very much for coming back to the over number 5, and the starts with the delivery, which is a little bit outside the line of leg stump, and the batsman Guru Prasad, little correction, is nicely turns that one down to square leg region for a single, and with a single score now moves on to 28 for the loss of 2 wicket. Sumit is a man with the golden hand, and wait and see how we'll going to get the wicket here. Again, almost the full toss delivery, the batsman couldn't manage to take advantage of the delivery because the line of the delivery outside the line of off stump, the full toss, the batsman intention to play that one on the onside region, so that he didn't got that much of enough timing in that stroke. Now, leading wicket getter will go into ball to leading run getter. It's a very good contest between bat and ball. Again, just ball is just passing around the legs of Gururaj. He's not really happy with himself because it's a delivery which can hit the ball anywhere in the square leg and fine leg region. There is no fine leg. And certainly just missed the opportunity here to get some runs. Sumit again bowling right arm over the wicket. This time again looking for the expansive drive, not quite getting control over that stroke. Of course, he's wanted to get a big stroke down to mid-wicket region. Again, the Sumit is not really settling the batsman for the big shot, and score now moves on to 30 for the loss of 2 wicket. Now 30 for the loss of 2 wicket as Sumit bowling away from us, right arm over the wicket. Delivers this time, lovely shot. This time he played that switch it so beautifully. One bounce over the rope for 4 and just breaking the shackle in the right time. Mahesh, look at the exquisite footwork. I want to see that in a replay, how quickly he's taking his position in the occasion. That was really not a easy stroke to play the box. Look at that one, picking up the line and length so quickly with the exquisite footwork. And I think the bat speed has been lovely here. Because of it's a very quick bat speed out here, he got a very good connection down to deep backward boundary for 4 runs. Bowled him, clean him up. This is a speciality of a good bowlers. Whenever the batsman getting a punishment and immediately very next ball, Sumit back into this over by picking a very dangerous Mahesh wicket, and 34 for the loss of 3 wicket. What a fantastic comeback by Sumit. Again, he is a leading wicket getter, and that is what I'm mentioning about the potential of bouncing back. It's so important for the bowlers. Of course, the batsman every time when the slog overs, they're looking for some big shot, and in that situation when the batsman hitting the ball and immediately very next ball he's got a potential of bouncing back. Now here is the announcement, 500 rupees now onwards for each and every batsman. If they're able to hit the 6, they will going to get 500 cash prize, which is Rohit Moily will going to present this 500 rupees for every 6s, and the player will going to hit the banner that was Kalakanda Sia Strikers banner, owned by Suresh Pujari, and they will going to get a cash prize as well from Manoj Corporator as well as Vishal Kottara. This time on my wicket, looks like yes, he's gone. Gururaj looks like he's so tired in the middle, and this is what the result we are seeing, that he really got a good start in the first 2 overs of the power play, and a different attitude after that power play. He looks like so tired, and this is the result here. The Gururaj again just throwing his wicket, not giving the wicket, he's just throwing the wicket, and definitely is a wicket now for Prajwal.
Pajwal picked up a wicket here, and 34 for the loss of 4 wicket. And Guru Prasad, his innings comes to an end. A little bit struggled, I think, in that particular innings, as he consumed some deliveries, and he scored 17 valuable runs in 14 deliveries. I think good score. And even though a little bit in the middle of the innings, he consumed some deliveries, dotted deliveries, but still he got a good score. Now captain came into middle, and straight away Bhagwan is off the mark. Little bit shuffled across the line, but intention is to rotate the strike, give the strike as much as possible to Mahesh, because they're dealing with the slog overs. 35 for the loss of 4 wicket. What a fantastic atmosphere out here in UCG cricket ground. Everyone wanted to see the champions of this Kodical Premier League Season 3. Right arm over the wicket delivers. Wide outside the run of off tap. This time Alphas might be a little bit fumble, but quickly recovered, and the batsmen are looking for the run, but going against that, and rightly so. White call by umpire. 36 for the loss of 4 wicket. Again, bowling from the far end, Prajwal. Right arm over the wicket. Mahesh looking for the expansive drive. Wicket keeper missed that one completely. But batters are not missing the opportunity to cross off for a single in the form of bye, which is signaled by umpire Arish Padil. Scoreboard moves on to 37 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. And after that, 2 very good power play overs. Good comeback by the bowlers of Create Challengers Kodical. This time full toss, Bhagwan right across the line, swinging the ball. Oh, what a good piece of fielding there by the fielder. Sumit again is in the picture. Excellent collection. He's a tall fielder than the whitish long on, and because of that he managed to tackle with the bounce what he has got. After that one bounce, he collected quite neatly and returns that one very nicely to the hands of bowler. Again, beautifully bowled. Look at the wicket keeper behind the stump. He's been outstanding today. Incredible piece of stamping there by Alphas. This is the second time he's getting the result by his electrifying work behind the stump. Just look at that one in the replay. The fraction of that was absolutely presence of mind, isn't it? At one stage when he's got a ball is in hand, I think the back foot of the batsman is in the crease, and he's just waiting for the batsman to lift his back leg, and he's just completed the job. That was absolutely a very good presence of mind here from Alphas to pick the wicket of a danger batter. Mahesh is back into pavilion. 38 for the loss of 5 wicket here in over number 6 in progress. So far after that 2 overs, which belongs to the batting first team. And now afterwards, the remaining 3 or 4th over, it's a really good bowling performance by the bowlers of Create Challengers. Next match, it's eliminator round. That means Kodical Kings will going to change the challenge of Cutte Titans. So that I request both the teams players complete the signatures as soon as possible. Very bright and sunny afternoon out here in UCG cricket ground after a long time. Again, lovely delivery in there, direct right across the line of the delivery. Perfect delivery for the fresh legs. And the new batsman just came into middle. This is a very good delivery to bowl that delivery to the fresh legs. And Pajwal completes a wicket-taking overs. Excellent 3 overs, 4 overs which is bowled. And after completion of over number 6, searching for the right track. And looks like a little bit under pressure. CS strikers Kalakanda, the managed to score a 38 for the loss of 5 wicket. Just look at the bowling figure of Prajwal. Absolutely impressive. 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. That means economy. Look at the economy. Of course, more than the wicket, if you're playing in the limited over matches, the economy rate always comes into play. And 3 runs per over. Absolutely. It's a match-winning performance with the 2 wickets. The very young, talented Prajwal is really justifying and why he is one of the best bowler. Even they're having a good bowlers like Sumit in the other end. His bowling figure is 2 overs, 10 runs and 2 wickets, but economy is better than him. It's 6 runs in 2 overs. The last over of the innings. Prithviraj is in action, and first ball the batsman, the captain Bhagwan wanted to break the shackle, but not really getting into the line of the delivery. Mistimed that one. Bowler's back drive, and there is no chance of any run. Prithviraj, right arm. This time Gururaj, a little bit correction. Bhagwan making a little bit room to play the inside out cricketing stroke, and he got a success as well. And before the fielder from the deep cover point region to run across to his right to field the ball in the deep extra cover region, ample time for the batters to complete that couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 40 for the loss of 5 wicket. Last 4 deliveries remaining. Prithviraj away from us to Bhagwan. Bhagwan lofted that one down to deep, long off region, right in the gap,
And again, the couple of runs here for Gururaj. Excellent placement again. But I think we can see that the body languages of the infield fielder is not happy the effort by the fielder in the deep long off. Why you are not trying for that catch? And not only their missed opportunity, but two valuable runs which is conceded to Captain Bhagwan. Again, that was a fantastic thinking there by Prithviraj. This is a premeditated switch which is attended by Bhagwan, and cleverly Prithviraj changing the line, bowled outside the line of leg stump and defeat the bat of this time Bhagwan. Again, using his feet, and Alpha's wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire, might be a little bit opportunity of making a stump out, but because of that extra deviation in that ball, and Alphas couldn't manage to gather the ball. But anyhow, single is added to total in the form of extra. His scoreboard now moves on to 43 for the loss of 5 wickets. What a fantastic atmosphere out here. Just like you're mentioning about the fear of IPL, and here is a pure fear of KPL here in UCG cricket ground of Vishal cricketers. Kodical organized such a wonderful cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3, and we are watching the first qualifier number 1 of this cricket tournament. Again, lovely delivery, absolutely perfect one, and he got a result for that in the form of run out, and it looks like the batsman Prashant will go into little correction. Akshay will go into sacrifice his wicket in the last delivery of the over. So that's it. 7 overs completed, and CS strikers Kalakanda not really happy to see the scoreboard, because after seeing 22 runs in 2 overs and remaining 5 overs, they have managed to get only 21 runs in 5 overs in just over 4 runs per over. This shows how well the opposition team, the fielding team under the leadership of Sandeep and challenge creators, the great challenges Kodicals managed to pull the things in their favor, and they're restricting the some big runs from the opposition, and that's all because of the 3 very good bowling performance. 3 bowlers that managed to pull the things back is Sumit, Prajwal, and then of course Prashant, and 8 runs in his first over, and afterwards I think all marks go to Sumit as well as Prajwal, who really shared that 4 overs, and they considered just 16 runs, and they're claiming 4 wickets. That means 2 wickets each for both the team, both the bowlers. That was a fantastic scenario out here. Now 42 is a target. 43 is a score. 44 will go into be a target for Kodical create challenges to enter into the finals of prestigious Kodical Premier League Season 3. It's going to be a very interesting game of cricket is coming up, and before the innings will go into start of the opposition team, CS strikers Kalakanda, time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi, and Gopi, fantastic, isn't it? 22 runs in 2 hours, and everybody thought that it might be a high scoring game, the qualifier number 1, because the run per ball, definitely is a 50 plus runs on the board. But afterwards I think Sumit and Prajwal, the 2 bowlers, really changing the complexion of this game and pulling the things back once again back in the favor of a fielding team. But match is not yet over. The 43 cannot underestimate a total. It's a fighting total, it's a winning total, because the opposition team also got some very good bowling department as well, and we're expecting the great battle between these 2 teams, and whoever will going to win, Gopi, they will definitely going to get the direct chance to enter into the finals of the prestigious cricket tournament. But we are hoping some good battle between bat and ball between 2 very good teams, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, पहले 2 ओवर में 22 रन जब बन चुके थे कलाकंदा के, तब ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया गया था कि कलाकंदा के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद आउटस्टैंडिंग कमबैक इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट मेड बाय द बॉलर्स ऑफ कोडिकल क्रिएट चैलेंजेस, कंसीडेड just 21 runs in the next 5 overs, and they come back very well with the exquisite bowling, and at last they restricted the batsmen of Kalakanda for just 43 runs, and now the 44 the target for Kodical create challenges to qualify for the grand finale of this competition. और जहाँ तक सवाल है सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर विजय जिसकी भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन बैटल हमें यहाँ पर इस मैच में, इस क्वालिफायर मैच नंबर 1 में देखने को मिलेगा.
₹500 हर विकेट के लिए इस वक्त घोषित किया गया है। रोहित मोहिली इनके द्वारा कलाकंदा के गेंदबाज के लिए ₹300 फॉर एवरी विकेट कैश प्राइज declared by Mr. Rohit Mohili for the bowlers of Kalakanda, and their innings now going to start off. Kodical create challenges, पहली गेंद को उछाला straight down the ground, और गेंद को इस वक्त मैं समझता हूं वहां पर शायद दो फील्डर छोड़ चुके हैं। मैं देखना चाहूंगा रिप्ले में एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर, वहां पर क्या हुआ था। 6 रन अंपायर की घोषणा जरूर आ चुकी है इस वक्त, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था देखना पड़ेगा। इस वक्त गेंद को उछाला था, देखिए किस तरीके से गेंद हवा में उछली, और बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर हो चुकी है। 6 रनों के लिए उनके सिर के ऊपर से निकल चुकी थी, और छक्के के साथ पॉजिटिव स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं धनात्मक शुरुआत इस वक्त कर चुके अल्फाज कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के लिए। पहली गेंद पर छक्का उछालने के बाद भगवान की गेंद पर, और इस छक्के के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका। 6 रन बिना किसी नुकसान के पहली गेंद के समाप्ति के बाद गेंदबाजी में तैयार इस वक्त भगवान फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिना तो बढ़ता विकेट, एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है, लेकिन इस बीच बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित वहां पर। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 12:40 बजते हुए, और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती हुई। कुल मिलाकर इस कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 के अंतर्गत पहला क्वालिफायर मैच यहां पर खेला जाता हुआ। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन मैं समझता हूं यहां पर गेंद सीमा रेखा को पार करेगी। 6 रनों के लिए छक्का नंबर 2 अल्फाज के बल्ले से, और इन 2 छक्कों की बदौलत वो अपने इरादों को बुलंद यहां पर कर चुके हैं। अब स्ट्रेट अवे सीधा दबाव गेंदबाज के ऊपर, और 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। तो पिछला गेंद पर जो स्ट्रोक उछाला था सतीश, बेहतर स्ट्रोक था। इस वक्त गेंद की उछाल को भापते हुए जस्ट राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ दैट बॉल आते हुए गेंद को कनेक्ट करते हुए मिड ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज दिया, और इन 2 छक्कों की बदौलत अब मैं समझता हूं इस ओवर में एक बेहतर शुरुआत दे चुके हैं अल्फाज अपने टीम के लिए। Absolutely, Gopi. It's a perfect hitting, isn't it? We can see that. You can see that in a replay, and it at the same time we can hear the sound, Gopi. The when ball has a contact with the bat of Alphas, it's absolutely instrumental sound. Absolutely, it's an instrumental sound for the fans of his team, but not instrumental sound for the opposition team. And definitely the Bhagwan will not going to like that sound, but certainly Alphas is going to really like that sound. The beautiful shot, Gopi. It's a fantastic timing in that stroke, and 2 6 takes the match away from the opposition. इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा, और 2 रन इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। इस बार गेंद पिछले गेंद पर जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो आवाज आई थी, उस आवाज को जरूर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के समर्थक पसंद करेंगे, लेकिन कलाकंद के नहीं। और यहां पर यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट स्कोर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। बेहतरीन शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं अल्फाज, और भगवान इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं। अब पृथ्वीराज सामना करने के लिए तैयार भगवान की गेंदों का। पृथ्वीराज जो कि एक और बेहतर बल्लेबाजों में से एक जाने जाते हैं, इस बीच सामना करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद का पीछा करना चाहा, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 15 रन बिना किसी नुकसान के, और सतीश ये एक बेहतर शुरुआत है। 44 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 ओवर में अगर आप पहले ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन बनाते तो निस्संदेह बेहतरीन शुरुआत यहां पर कहलाती है। Exactly, Gopi. The kind of shot which is really required, especially in the power play overs, isn't it? Intention is very clear, just like what the opening batsmen of the opposition did. I think they also got a very good start in the first 2 overs, and same start, but this time they're chasing the runs, Gopi. They know exactly the idea, what runs they will going to get, and what kind of batting which is required in this power play overs. And I think Alphas is the man behind that good start, hitting 2 massive sixes, absolutely fantastic. And because of 2 sixes, I think they're strongly back in this game. And but if the opposition team Kalakanda wanted to back into this game, Gopi, they need to have some breakthrough. The very important in this second over
the power play. Not only they need to restrict the runs, but at the same time they need some wickets as well. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर गेंद को, जब तक फील्डर गेंद सीमा रेखा के अंदर रोकते, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए वाइड स्लॉग बॉल से डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस ओवर में कमबैक करना जरूरी बन चुका है गेंदबाजों के लिए, अगर उन्हें कोडिकल क्रिएट स्ट्राइकर्स क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाजों के रन के बहाव पर अगर अंकुश लगाना है तो। और गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी और पैरों पर टकराने के बाद गेंद जब तक फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर फील्ड, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 18 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत यहां पर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स कर चुका है, 44 रनों के पीछा लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रन जोड़ चुका है दूसरे ओवर में। यह गेंद इस बार स्क्वायर होता विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा पृथ्वीराज और टीम के खाते में। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस इन द सेकंड ओवर। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स। और अगली गेंद लेकर तैयार गणेश, दाहिना तो ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर गेंद पहुंची, शॉट फाइन लेग पर, रन्स नहीं मिलेगा, शायद बल्लेबाज के पैर से लगकर गेंद निकली थी शॉट फाइन लेग पर। और आखिरकार इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, स्कोर रुक चुका है 20 रनों पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े, हालांकि अल्फाज थोड़ी देरी से दौड़े लेकिन वहां पर मिसफील्ड होने की वजह से बल्लेबाज 1 रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अल्फाज के लिए, यह गेंद उछालना चाहा, शॉट स्क्वायर लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े अल्फाज के लिए, खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, यहां पर भुगतान उन्हें करना पड़ा, अपना विकेट यहां पर खो चुके हैं और कुल मिलाकर 21 रनों के ऊपर अपना पहला विकेट खो चुका है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स। 2 ओवर की समाप्ति 21 रनों के साथ दरी टूट चुकी है और इस ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन गणेश ने प्रदान किया और अंतिम गेंद पर अल्फाज का विकेट गिर चुका है। और अब 22 रन चाहिए, माफ कीजिए 23 रन चाहिए विजय के लिए। 5 ओवर का खेल बाकी, 30 गेंदे 23 रन। मैं समझता हूं अल्फाज अपना किरदार बाखूबी अदा करने के बाद इस वक्त पवेलियन वापस लौटते हुए 17 रन उन्होंने बनाए 2 छक्कों की मदद से। He scored 17 runs into his credit, including 2 massive sixes, and after playing a good job for their side, he is back into pavilion. And Kodical Create Challengers are now losing their first wicket. It's 21 for 1 after completion of 2 overs. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और शिवराम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, शॉर्ट बैट पर बेहतर फील्डिंग वहां पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 22 रन बन चुके हैं, 22 रन और बनाने हैं और 4.5 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। इस बीच पृथ्वीराज को कुछ समझाते हुए प्रशांत जो कि दूसरे छोड़ के बल्लेबाज और इस वक्त पृथ्वीराज सामना करने के लिए तैयार। शिवराम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ऑफ द टोस गेंद को बोलना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में गेंद पहुंची, गेंद उनके लगभग कमर पर टकराने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद अंतिम क्षण में और गेंद को विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में तेजी के साथ दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है और विकेट और डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त कलाकंदा को इस मैच में वापस आने के लिए। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार विकेट से हटते हुए जस्ट अवे फ्रॉम हिज बॉडी गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन के लिए और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर।
24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. शिवराज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शिवराम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंदबाज की बाईं ओर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs कंप्लीटेड, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और कुल मिलाकर 18 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 24 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए। और इस वक्त लक्ष्य कुछ हद तक आसान नजर आता हुआ कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के लिए, जबकि इस वक्त जी तोड़ मेहनत मुशक्कत की जरूरत है कलाकंदा के गेंदबाजों को अगर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करनी है तो। अगला मैच एलिमिनेटर दौर का मैच खेला जाएगा कट्टे टाइटंस और कोडिकल इंडियंस के बीच में। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वो स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और जहां तक सवाल है मैदान की दाईं ओर, स्टेज की दाईं ओर जहां पर जो फ्लेक्स इस वक्त लगाया गया है कलाकंदा स्ट्राइकर्स के मालिक सुरेश पुजारी का, उस फ्लेक्स पर अगर कोई छक्का लगाता है तो छक्का उनके पक्ष में प्राप्त होएगा। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस बार ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन गेंद को ठीक तरह से रोक नहीं पाया और इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिला। अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए डाइविंग माफ कीजिए, अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को रोकना चाहता और गेंद उनके हाथों से अंतिम क्षण में छूट चुकी थी। 1 रन का इजाफा, 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद इस वक्त विकेटों के पीछे फील्ड कर ली गई। यह रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो वहां पर शायद कुछ हुआ है। डीप मिड विकेट फील्डर को कुछ हद तक वो इस वक्त दर्द महसूस करते हुए शायद उनके पैर में मोच आ गई या फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जो फील्डर डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा के पास खड़े हुए थे शिवराम, शायद उनके पैर पर कुछ हद तक वो दर्द इस वक्त महसूस करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है और दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार करते हुए। कुल मिलाकर अगर इस श्रृंखला के बारे में कहा जाए तो पहला क्वार्टर फाइनल मैच, पहला क्वालिफायर मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ इस श्रृंखला के अंतर्गत और कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 25th year they are organized a fantastic tournament, prestigious tournament in the name of Kodical Premier League Season 3 2022 और तो इस वक्त सब कुछ सही सलामत फील्डर के लिए और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ होता हुआ 26 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका, 18 और रन चाहिए विजय के लिए। कुल मिलाकर 3.2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 3.4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, यानी 22 गेंदें बाकी हैं, 18 रन और चाहिए विजय के लिए। 22 balls remaining and 18 runs more run now they have to score for victory। और गेंदबाज गणेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। गणेश दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 21 गेंदें बाकी है, 18 रन चाहिए। धीरे धीरे इस मैच में वापस आते हुए कलाकंदा
सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाज और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद विकेट से हटते विकेट को ड्राइव कर दिया गेंदबाज की दाईं ओर से लंगआउट के दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 20 बॉल्स। और फिर से एक बार गणेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची सीली मिड ऑफ फील्डर की दाईं ओर से लॉन्ग ऑफ के दिशा में। एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 28 एक विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, 16 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 19 बॉल्स। और गणेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर फील्डर के आगे और गेंद को रन को तोड़ पड़े स्ट्रोक्स के साथ। एक रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए ओवर की समाप्ति 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 29 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs scored by Kodical create challengers। 15 to get in remaining 18 balls। 3 ओवर का खेल बाकी, 15 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। देखते हैं बचे हुए 3 ओवर की पारी में उनकी पारी में क्या होता है। तो हैट्रिक छक्का अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो 3000 रुपए का नकद पुरस्कार विशाल कोट्टारा इनकी ओर से घोषित किया गया है। हर हैट्रिक छक्के के लिए 3000 रुपए का नकद पुरस्कार। तो चौथा ओवर यहां पर शुरू होता है और सतीश आइए आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। लगभग मैच बराबरी पर रुक चुका है, तख्ता कुछ हद तक यहाँ पर भारी लगता हुआ कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के, लेकिन मैं समझता हूँ अंतिम 2 ओवर में एक बेहतरीन कमबैक कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने की है। अब 18 गेंदे 15 रन चाहिए और चंद डॉट गेंदे निस्संदेह सिया स्ट्राइकर्स को इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकते हैं। जहां तक सवाल है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का, तो हर गेंद पर इस वक्त रन्स बनाना उनके लिए जरूरी बन चुका है। Well, thank you, Gopi, and you are just mentioning about that 2 overs. Absolutely, it's a good comeback by the bowlers of Kalakanda Sia Strikers to pull the things a little bit back in their favor, but not fully, because the match is now looks like it's evenly balanced. 14 still more runs required for the victory in remaining 17 deliveries. 30 for the loss of 1 wicket from the commentary box, and the bowler is introduced is Shivaram, and one more the good bowler for the side of Sia Strikers. Again, almost not quite intended. Not a good piece of fielding there by Mahesh at short mid wicket, and not a really good try from that fielder at short mid wicket. Is looking for the run, looking for stop of the ball, but he couldn't manage to stop the ball, and scoreboard moves on to 31 for the loss of 1 wicket. And it's always the encouragement for Sia Strikers every time when they're batting when they're bowling. Now it's for the hat-trick wicket, there will be a 3,000 rupees for the hat-trick wicket getter by Vishal Kottara. Again, lovely delivery, beautifully bowled. That was a fantastic delivery, and the wicketkeeper behind the stamp, Gururaj, completes the job in a fraction of second, and umpire now looks like he's asking for the third umpire. And third umpire definitely will going to get the best result as much as possible, and it's going to be, oh, that was so out is addition. I think the back foot of the batsman almost not in the crease as well. Ball, the back foot is almost lifted here, and so that electrifying work, Guru Prasad behind the stump, just like the alphas of the opposition team, did a fantastic job. Alphas of course
create challengers, done a great job behind the stump. The similar attempt here from wicketkeeper behind the stump. In a fraction, he completes the job, and he got a very important breakthrough for his team. Will it going to be a comeback dismissal? Wait and see. Why not? The match is now evenly poised. 31 for the loss of 2 wickets. 13 more runs required for the victory. And you are watching over number 5, that 3 balls completed. That means 15 balls remaining and 13 runs required for the victory. What a fantastic match. Now captain with lot of responsibility, Sandeep, and just came into middle, and wait and see how Sandeep will going to handle the pressure here. And he's got a very experience behind him, and more than 30 years, almost more than 25 years of experience in underarm cricket. And wait and see how he'll going to lead his team and takes his team into the final. First ball, next ball, little bit nicely flicks that one off his legs. Beautiful stroke there from Sandeep, one of his favorite. Just whipping that one off his legs down to short square leg region for a single. He's off the mark and scoreboard 32 for the loss of 2 wicket. Target 44. That means 12 runs more. 12 runs required for the victory. Right arm over the wicket, nicely played. He plays it down. That was a really clever cricket there from Prithviraj. He came into the middle as an opening batsman, and Alphaz has got a start with some firework in the beginning and scored a 17 valuable runs. And then on other end, Prithviraj is playing an acting role. That's very important in cricket and in a partnership. One player has to play a long innings. This time give that ball is in there, and the fielder I don't think will going to reach there, because that ball's landed well in front of that deep long off fielder. Of course, he cannot reach there, and quickly realizing that very difficult to reach that catch, and he just collected that one after one bounce. So over number 5 completed, chasing 44 to enter into the finals of prestigious cricket tournament. And Kodical create challengers managed 34 valuable runs by the loss of 2 wickets in the over number 5 completed. Now 2 overs remaining, 12 balls remaining, and they have to get 10 runs to win this match, and they got 8 wickets in hand. And now the discussion is going here, as Bhagwan is a little bit expensive in his first over. He bowled first over from Birvir Kudla end, and he is considered 15 valuable runs, and that point of time, I think looks like this match is definitely going to easy victory for create challengers. And then the second over also a little bit expensive, and 6 runs which came from the over of Ganesh, but afterwards they slowly they're pulling the things back, and now they've taken this match into very interesting. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Very friendly atmosphere in our commentary box as well. We have the legendary bowler and present underarm cricket, Ashwin Tamanna, is just joining here in the commentary box as well. And on behalf of organizers and cricket lovers, and welcoming him for this Kodical Premier League Season 3. So Ashwin Taman has so far has been a fantastic bowler for young friends Sirwa, and 34 for the loss of 2 wicket. And now Bhagwan, can he get some inspiration after hearing the name of Ashwin? Can he able to get the wicket here? Again, the first ball, that was an excellent batting. Clever, intelligent cricket there from Sandeep. Look at the way he's handled that deliveries. That was really good to see that. That's what I'm talking about. The experience always comes into play, and converting experience into performance is so important. And now Sandeep is converting his experience into the performance. That was a clever piece of batting. Again, this is what we're talking about. He's so good. Again, the way he's handled that turning delivery is so good to watch. And off the back foot in that occasion. This time he's off the back foot. You know exactly there is a huge gap between bowler and short extra cover point fielder.
and he picked a gap very well and picked up a single as well. This time lovely shot, just correcting that stroke down to deep cover point region there by Prithviraj. Both the batsmen are looking pretty good in this over, and Bhagwan couldn't manage to get any kind of impression in this important over where his team needed some breakthrough. 38 for the loss of 2 wicket. 6 more runs required for the wicket. Down the leg stump, going to be a wide. Wait for the umpire signal because the ball is running down to the short final. It's not a wide ball, just passing between the little bit around the legs of the batsman, and rightly so umpire Anish Patel is calling that a bye. With that bye, scoreboard moves on to 39 for the loss of 2 wicket. Quicker on there from Bhagwan. And again, oh, lovely delivery. At last, the winnings of Prithviraj comes to an end, and Bhagwan, at last he got the breakthrough, just like I mentioned about, can he get some impression by hearing the name of Ashwin, the same kind of delivery what Ashwin bowls, the leg cutter, the beauty of the delivery, and this is the one where batsman completely misreading the leg cutter of Bhagwan and cleaned him up of the beauty of the delivery, almost forcing the batsman onto the back foot, and batsman tried to take that one on the off the back foot, and he just pays the penalty for that without looking for that defensive stroke on the front foot, and he just played a very good innings actually. Just we are talking about when the partnership is required, one player has to play acting role in the other end, and I think Prithviraj has played a very good innings for his team, scored 10 valuable runs, even though he faced 14 deliveries for that, but he is so good by getting a partnership. Now 5 runs required, 7 deliveries remaining. Prajwal Jr. came into middle. This time tipped that one, ball is in there and landed safely towards a deep cover point region field, and couldn't manage to reach there, and half-hearted push there from Prajwal, and he's got a big smile in his face that why not, because if it is a catch, maybe a little bit a turning point of that match, but 1 run is added in the last delivery of the over. Now 40 for the loss of 3 wicket, and final over of the qualifier number 1, and 4 runs which is required for Create Challengers to qualify for the finals of the prestigious Kodical Premier League Season 3. A little 4 runs to be get. Just like my favorite English commentator Jeffrey Boycott when he was in the commentary box, where he's always mentioning about why you are taking that much of a tense in your mind when it's 4 little runs to get. Just an what a presence of mind and cool mind which is required in the middle, and of course when you are talking about that 4 runs, you are not really bothered about that extra deliveries and extra runs, excluding the wides and no balls. And now I think the bowlers of Kalakanda strikers have to do something special in the bowling. I request eliminator round will going to start after this match, so that I request Cutted Titans as well as Kodical Indians please complete the signatures as soon as possible. Now can Prashant do the magic here? We can see that closing fielder, the 5 fielders inside the ring to save the singles. That is a good move there by the captain, keeping 5 fielders inside the ring to save the singles, and Prajwal will be going to face the bowling of Prashant. This time he lofted just over that cover point region. Oh, that is not a good effort there for the fielder. Not only drop the catch, but a couple of runs, and going for the 3rd run as well, and they completed. Look at the dugouts. Look at the dugouts of the supporters of Kodical Create Challengers. They knows that they will not going to lose the match because the scores are level, and if the only opportunity for the fielding team, at least they need to tie this match and takes this match into the super over. For that 5 magical deliveries is required, and I don't think Sandeep will going to provide that opportunity, but he is a very experienced player, and just a single runs required for the victory, and that's a winning stroke. That's a winning stroke which is coming from the captain Sandeep, and ball is running towards the deep extra cover boundary for 4 runs, and before that I think Sandeep completed a single, and now Kodical Creator Challengers are really taking the challenge, winning the challenge of their opposition
Kalakanda CS Strikers, they entering into the finals of the prestigious cricket tournament, Kodical Premier League Season 3, the first team which is entering into the finals of KPL Season 3 under the great captaincy of Sandeep and of course Jagadish Suvarna, the franchise, the owner of Create Challengers, happy with the result. He is a very happy owner, and once again under the great captaincy of Sandeep, they are entering into the prestigious Kodical Premier League Season 3. Congratulations for the winners. Nothing much to lose the heart here for the loser, because they got another chance to play the qualifier number 2. And the winners of Cutter Titans versus winners of Kodical Indians will going to get the chance of playing a qualifier number 2 of a loser of this qualifier number 1, that is none other than CS Strikers CS Strikers Kalakanda. Definitely they got one more opportunity, and the winner of this eliminator will going to clash to get the place in the finals of this prestigious cricket tournament. So congratulations the winners, and now time to announce a man of the match, and it's now a little bit time to take to get the man of the match award. So now time to announce a man of the match. And I said it is a very difficult one, because someone is contributed from the bat, someone is contributed from the ball, but one who is contributed behind the wicket and then he came into bat as an opening batsman, and he is changing the complexion of the match in the first over itself. It's none other than Alfaz of Kodical Create Challengers, so just as a man of the match for his wonderful 17 runs, quick fired 17 runs in just 8 deliveries, and hit 2 sixes, and he is the one who is responsible for the 2 wickets with his electrifying work behind the stumps, and that's why he is judged as a ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಫಾಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಫಾಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 bowlers, that is Shivaraj who bowled 2 overs 9 runs and 1 wicket, and of course Ganesh who bowled 2 overs 10 runs but didn't got a wicket. But it's all we can see that we can see that domination there from Alfaz in the power play overs, and he deserved this man of the match award. Thank you. So here is a presentation of a man of the match award for Alfaz for his wonderful performance, and certainly he's deserved this man of the match award. What a fantastic performance. Absolutely good to watch him from the bat, and then behind the stump is electrifying. So thank you very much our chief guest, and we are coming to the eliminator round of this KPL Season 3, and before the match will going to start, here is an very good announcement, big announcement here for the supporters of Kodical Indians, that any batsman hit hat-trick sixes, hat-trick six, there will be a 2,000 cash prize which is announced by our scorer
Ratish Raj will going to give this 2000 cash prize for Kodical Indians. Any batsman hits a hat-trick 6, they will going to get 2000 rupees from Ratish Raj. Thank you very much. धन्यवाद सतीश। तो एलिमिनेटर दौर का मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है और कोडिकल इंडियंस और कट्टे टाइटंस के बीच कोडिकल इंडियंस पहले बल्लेबाजी करता हुआ। कट्टे टाइटंस ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और गेंदबाज इस वक्त धनुष गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला पहली गेंद पर लेकिन स्कोर ऑफ द विकेट और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। यतिराज का शोक लेकिन अगेंस्ट द विंड इस वक्त गेंद को उछाला था और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए सीधे डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यतिराज का विकेट यहां पर गिर चुका है और कोडिकल इंडियंस पहली गेंद पर अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। तो हफीज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं और चेतन इस वक्त नए बल्लेबाज के तौर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपना कदम बढ़ाते हुए। तो पहला विकेट गिर चुका और प्रणीत, धनुष और सुमन ये तीन गेंदबाजों के लिए 700 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त रखा गया। अगर अपने 2 ओवर की कोटे में वो चार विकेट अगर प्राप्त करते हैं तो ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधा पहुंची शॉर्ट फायर लेग पर। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन मिड ऑन फील्डर के 20 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, 1 रन का इजाफा। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था
तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी और एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। धनुष, सुमन, प्रणीत, ये तीन जो गेंदबाज हैं कटे टाइटंस की ओर से, ये तीन गेंदबाज में से कोई भी गेंदबाज अगर अपने 2 ओवर के कोटे में 3 विकेट प्राप्त करता है तो 700 रुपए का नकद पुरस्कार रोहित कटे टाइटंस के इन्होंने घोषित किया है। और देखते हैं, एक विकेट यहां पर धनुष प्राप्त कर चुके हैं। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अंदर की ओर आती है, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर यहां पर प्रगति पर और धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिना तो ओवर द विकेट, ओह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, स्ट्राइट लाइन, एक्स्ट्रा किकर और गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम धनुष, जस्ट अ सिंगल रन ही कंसीडेड, 1 ओवर नो मेडन, 1 रन एंड 1 विकेट और स्कोर बोर्ड पर 3 इक्के इस वक्त दिखाई देते हुए 1 रन 1 ओवर और 1 विकेट और एक धीमा शुरुआत यहां पर कोडिकल इंडियंस कर चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಾದ ಧನುಷ್, ಸುಮನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣೀತ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇವರು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಇವರು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. तो दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ प्रणीत इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाजी, पहले गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और यतिराज का विकेट गिर जाने के बाद हफीज की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी बन चुकी है कोडिकल इंडियंस के लिए। इस बार हफीज का स्ट्रोक लंबोल सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, सीधे गेंद वृक्ष के डालों के बीच, डालों के पत्तों के बीच इस वक्त जाकर टिप्पा खाते हुए और 6 रन इस वक्त हफीज के खाते में जुड़ चुका। जैसा कि मैं पहले भी तो 6 रन हफीज के खाते में और यहां पर 2000 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया है बल्लेबाजों के लिए कोडिकल इंडियंस के। कोई हैट्रिक छक्का लगाता है तो 2000 रुपए का नकद पुरस्कार श्रीमान रतीश राज इनकी ओर से घोषित किया गया है। और देखते हैं, हफीज एक छक्का यहां पर लगा चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद उछाला लंबा पर और चौका नहीं मिलेगा। इस बीच फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को उछाला था इनफील्ड क्लियर करते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. What a fantastic tournament is now progressing here in the name of Kodical Premier League Season 3 2022 which proudly organized by Vishal Kodical Vishal Cricketers Kodical in the celebration of their Silver Jubilee 25th year. They are organizing a prestigious tournament in the name of Kodical Premier League Season 3 2022. इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, चूंकि स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हफीज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और प्रणीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस पुल किया है। इस बार कैच हो सकता है, 3 फील्डर गेंद के नीचे अंदर आते हुए और उनमें से एक फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर कैच को लपकने में सफल। He just played that one away from his body और गेंद को ठीक तरह से मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं कर पाया। टॉप एज पर टकराने के बाद गेंद उछली और लॉन्ग ऑफ पर 20 गज के दायरे के अंदर मिड ऑफ पर गेंद को लपक लिया गया एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर द्वारा। दूसरा विकेट गिर चुका। तो हफीज छक्का लगाने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी की मुंसूचना दे चुके थे और उसी ओवर में उनका विकेट गिर चुका है। प्रणीत एक अच्छा कमबैक कर चुका है छक्का प्रदान करने के बाद। हफीज का विकेट प्राप्त करते हुए दूसरा विकेट गिर चुका है 9 रनों पर कोडिकल इंडियंस का। इट्स 9 for the loss of 2 wicket in the over number, second in progress. प्रतीक का आगमन यहां पर होता हुआ चेतन का साथ निभाने के लिए
वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए चेतन और गेंदबाज प्रणीत इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ उम्र विकेट। गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs with the exactly run rate of 5 runs per over they scored। एक बेहतरीन फैंटास्टिक लाइव कवरेज मैंगलोर मीडिया द्वारा हम इस वक्त देख रहे हैं YouTube पर, जो इस वक्त कर रहे हैं मैंगलोर मीडिया के सर्व सदस्य एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी धनुष अपना दूसरा ओवर यहां पर शुरू करते हुए चेतन सामना करने के लिए तैयार। एलिमिनेटर दौर का मैच यहां पर खेला जाता हुआ बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। 1:20 दोपहर के बज चुके हैं। सूरज आसमान की ठीक बुलंदियों को छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और धूप की तीव्रता बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर करते हुए, और इस भीषण गर्मी तले इस श्रृंखला का एलिमिनेटर दौर मैच यहां पर खेला जाता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार धनुष। ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को ढकेला इस वक्त लॉन्ग की दिशा में। धनुष अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंक चुके हैं। सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए उन्होंने 1 विकेट अपने पहले ओवर में प्राप्त किया है। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन वो प्रदान कर चुके हैं और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी अंदर की ओर आती हुई। गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। Still the batsmen of Kodical Indians searching for the right track। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया अवे फ्रॉम हिज बॉडी, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया डीप बैक ऑन पॉइंट पर। थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर डीप ओवर पॉइंट से डीप बैक ऑन थर्ड मैन पर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 14 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। धनुष की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को आने दिया, गेंद को मोड़ा इस वक्त, लेकिन मिड ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे सिले मिड ऑन पर गेंद उनके हाथों में पहुंची और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद बल्ले का भीतर किनारा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं की इस गेंद पर, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले के बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर स्वयं विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। धनुष एक बार फिर से तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा डीप मिड विकेट पर। फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नहीं, ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। 1 रन के साथ संतुष्ट और इस 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 overs completed, 16 for the loss of 2 wicket with a present run rate of exactly 5.33 runs per over scored by the batsmen of Kodical Indians in the first 3 overs for losing 2 wickets and now still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा कोडिकल इंडियंस के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा लक्ष्य यहां पर खड़ा करना है तो कट्टे टाइटंस के सामने। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज उस स्कोर को पार करने की इस वक्त पूरी कोशिश में एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए सुमन गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। चौथा ओवर शुरू होता हुआ कोडिकल इंडियंस की पारी में और एलोशियस डिसोजा इनकी ओर से पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा घुटनों के बल बैठते हुए, लेकिन गेंद को वो इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पाया। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। शायद गेंद वहां पर फील्डर के हाथों से छूट चुकी थी और अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए क्या इस रन को यहां पर दिया जाए या नहीं। जो क्रीज पर मौजूद ये दोनों भाई जो कि इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए
प्रतीक और सुमन गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि इस वक्त भाई है, और पिछले गेंद अपने भाई की गेंद को इस वक्त खेला था प्रतीक ने, जो सुमन थे उनके भाई। और इस बार काफी बातचीत करने के बाद अंपायर्स देखना यह है कि क्या निर्धार लेते हैं। तो रन को इस वक्त रद्द किया गया है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर। अब प्रतीक जो कि अपने भाई सुमन के लिए अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर को कुछ हद तक पीछे इस वक्त भेजा जा रहा है। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मौजूद, अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद विकेट कीपर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपक नहीं पाए। उनका संपूर्ण शरीर हवा में था जब उन्होंने कैच का प्रयत्न किया था। देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने इस गेंद पर जरूर किया। इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और सुमन कुछ हद तक इस वक्त अपने पैर में दर्द महसूस करते हुए, और इस बीच अपने जूते को वो खोल चुके हैं और एक बार फिर से अपने मोजों को पहनकर जूते इस वक्त वो पहनते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस मैदान पर रुक चुका है। मेरे ख्याल से कुछ हद तक उनके पैर में इस वक्त कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए, पिछले गेंद पर कैच आउट लपकते समय शायद उनके पैर पर चोट आई है। कैच लपकते समय शायद उनके पैर पर कुछ हद तक चोट आई है, तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। कुल मिलाकर 3.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कोडिकल इंडियंस के कट्टे टाइटंस के खिलाफ इस क्वालिफायर दौर के मैच में फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, और बिल्कुल सही सलामत गेंदबाज सुमन के लिए, और एक बार फिर से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन सामना करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बेहतर गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा विकेट कीपर के पैर से लगकर गेंद निकल चुकी है, शॉर्ट फाइल लेग पर निशाना टकरा चुका है, और यहां पर ओवर तो में रन मिल सकता है, लेकिन चेतन ने कुछ खास दिलचस्पी वहां पर नहीं ली उस रन को लेने के लिए, तो यहां पर रन नहीं जुड़ेगा। गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराई थी, शॉर्ट फाइल लेग फील्डर का फेंका गया हुआ थ्रो स्टंप्सों पर टकरा कर निकल चुका था, वहां पर रन मिल सकता था ओवर थ्रो के रूप में, लेकिन चेतन ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई उस रन लेने में, और स्कोरबोर्ड यहां पर रुक चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ कोडिकल इंडियंस, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कट्टे टाइटंस के सुमन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद को खेला तो जरूर लेकिन जगह नहीं बना पाए, बैक टू द बॉलर की दिशा में, और रन इस बीच एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 17 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा कोडिकल इंडियंस के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए, ये गेंद चिप गया लंगोट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एकमात्र रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। श्रीला बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। सुमन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपने भाई प्रतीक के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार विकेट कीपर चूके, गेंद पहुंची उनके हाथों पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा, 22 के रूप में ओवर की समाप्ति, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद
कोडिकल इंडियंस इस वक्त बना चुका 3 ओवर का खेल इस वक्त बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, अब माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। सतीश, 4 ओवर, द फर्स्ट ओवर 4 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ कट्टे इन टाइटंस। अपनी क्षमता काबिलियत के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की है। हालांकि उस एक छक्के को एक्सक्लूड करके देखा जाए जो हफीज ने लगाया था, तो कहना पड़ेगा कि बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कट्टे टाइटंस के गेंदबाजों ने किया है। तो 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कोडिकल इंडियंस को मैं समझता हूं, जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका, 40 का आंकड़ा कम से कम पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो निर्धारित 7 ओवर में, और देखते हैं उनकी पारी में यहां पर क्या होता है। 23 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में 40 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, और देखते हैं वो 40 का आंकड़ा पार कर पाते हैं या नहीं। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you, Gopi. And just like you're mentioning about, of course, some acceleration of run rate which is badly required. And looking for the second, but throw is not quick enough and good enough to make that run out, and that's why both the batsmen completed that couple of runs so easily. Of course, Gopi, because they got a early breakthrough, isn't it? Yatiraj is out for duck, so that they after that couldn't manage to come out. Of course, Hafiz got 1-6 and looks like it's going to be a high scoring game, but after losing Hafiz, looks like the slow progressing here for the team Kodical Indians. Meanwhile, one more single is added to total in the form of bike called by umpire Arish Padil. Scoreboard moves on to 22 now for the loss of 2 wicket. So far, it's a good going actually by Kate Titans. They won the toss, elected to field first, and so far they're very good going here for Kata Titans. It's a lovely delivery, fantastic one there from Praneeth. He is knowing for that, and a little bit appeal coming behind the stump after that ball is delivered, and wicketkeeper behind the stump in the fraction removes the bails, but rightly so, and umpire are not interested. Umpires are not interested to call that any result for that. Of course, batsman safe. Of course, someone is moving in the deep backward point region with the same jersey color. So that's why umpire Roland Pinto asking that the extra players please don't move there, and it will definitely going to disturb the attention of the batsman as well. So 23 for the loss of 2 wicket. So 23 for the loss of 2 wicket. Now Praneeth get ready to bowling to the right-hander batsman Pratik. Praneeth to Pratik. Oh, what a delivery! Absolutely magnificent. But wicketkeeper behind the stump is not really up to the mark. It always frustration time for the bowler, isn't it? Whenever he defeats the batsman's bat with a fantastic outgoing delivery, and wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Of course, it's a frustration for a bowler like Praneeth. So 24 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Now the batsman Chetan will going to take the strike. Final time in this over, Praneeth. So far he's been fantastic. Oh, beautiful delivery indeed. That ball just fractionally missing the leg stump. So very good over there from Praneeth. So completion of over number 5. The struggle time continues here for the batsmen of Kodical Indians. 24 now for the loss of 2 wicket. Coming back to this cricket tournament, of course, Vishal cricketers organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3. Just like I mentioned about each and every team which is qualified for the playoff round, they got an eye on this most beautiful trophies we can see in the main stage. That was absolutely good, very attractive trophy out here in the main stage. And good thing to see is that the best batsman award will go into award with the new bat. It's a very good bat actually, and which is signed by some signed by the officials of this cricket tournament. At the same time, some very good legend players they got signed in this bat, and certainly the batsman who will go into win the best batsman award is one of the luckiest player of this KPL season 3. Meanwhile, from the far end, Suman brought into attack in his second over. Starts with a wide delivery. Bonus, absolutely bonus. And Kodical Indians didn't got runs on the board, but that's why they're definitely going to enjoy these extra runs and extra deliveries. They need to capitalize because now dealing with the slog overs, the death overs, and these kind of mistake will going to help Indians to get some good score. 26 for the loss of 2 wicket. Right arm over the base. Oh, lovely delivery indeed. Again the misfield by the wicketkeeper. Oh, what a work!
Absolutely fantastic. This is what I want to see from some bowlers. That was a commitment is so good, isn't it? The way that is diving towards the stumps to make that run out. And look at the wicketkeeper behind his fumble. And he picked that one, returns that one into the hands of bowler. And look at the Suman. Look at the diving here. Absolutely fantastic. It's a really incredible job there by the bowler Suman. You know exactly, he cannot reach there, and that's why he just wanted to make the run out, because hitting the stump, I think maybe a little bit chance for the batsman if the ball missed the stump. He doesn't want to see that. He want that to make the run out, and look at that. He's a little bit far from the stumps. That's why he just diving to the stumps and try to make the run out. Third umpire have to see that whether the bat is in or out. It's outside the crease, so that outcoming decision coming from umpire, third umpire Sriraj, and what a fantastic effort. Suman, of course, the three bowlers, they got opportunity to win the 700 rupees if they're able to get the 4 wickets. But here is, I think it's not lesser than that 4 wickets, where the Suman did a great job. 3 wickets, in fact, for each and every bowler. If they get the 3 wickets, they're going to get the 700 rupees. But Suman, absolutely fantastic to dispense a very dangerous batsman Chetan back into pavilion. But it's not a good innings. That's why I want to say that Chetan, who played the long innings of 16 deliveries, but he scored only 7 runs. That means he's consumed a lot of deliveries and played some dotted deliveries, but he couldn't manage to get the runs the team which is wanted. And at last, I think the struggled innings which is comes to an end of Chetan scored 7 runs. 26 for the loss of 3 wicket, and new batsman in is Swartak. This time he lost it straight down the ground, very straight indeed. 1 bounce over the row for 4 runs. Lovely shot there from Pratik, just breaking the shackle in the right time. That was a magnificent stroke, isn't it? Nothing wrong. Look at the way that is pick that line and length and full face of the bat. When you're playing that one in the straight bat and straight down the ground, it's very difficult for the fielder from deep long off and deep long on to field that ball. 1 bounce over the row for 4 runs. Here is one more announcement from the owner of Katte Titans, Rohit. If Suman able to get 1 more wicket here, he will going to get 700 cash prize. And wait and see how Suman will going to grab the opportunity. So just I'm appeal for like before we go. Oh my goodness, can you believe this? The batsman very lucky indeed, because the batsman looking for the reverse stroke missed the line completely. And again the fact that the bowler came right in front of umpire Roland Pinto, so that he couldn't manage to see the line of the delivery bat which is hitting, and that's why umpire not moved. Might be the benefit of doubt is given to the batsman, so no signal coming from umpire. That means it's from the bat. 31 for the loss of 3 wickets. So second warning for the bowler Suman not to continue that mistake. The remaining deliveries. This time he lost it. This time he lost it with the full face of the bat. And oh, what a good save! Absolutely good save by the fielder in the deep mid wicket. And I think because of that, I think they got only 2 runs here. And the scoreboard now will jump into 33 for the loss of 3 wicket. Look at that one in the replay. The fielder Shravan in the deep mid wicket is just jumping and saving the runs. Of course, instead of looking for the wicket, he's just looking for saving that runs for his team, and he succeeded. Again, appeal for leg before wicket. This time ball certainly going to miss the leg stamp, and leg by call by umpire. 1 more addition to total in the form of leg by. Scoreboard moves on to 34 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. What a fantastic game of cricket is going on here. 34 for the loss of 3 wicket. Both the teams wanted to be in the qualifier. This time again, 1 more appeal for the leg before wicket. Again, the umpire not interested. The impact of the line outside the line of off stamp. So Suman bowled a very good over. Of course, lucky that the fielder managed to pull the what could be a certain 6 in the deep mid wicket. At the same time, 2 opportunity actually is missed out, especially from his own mistake, as he is coming right in front of umpire when it's a loud appeal for leg before wicket, and he just missed out that opportunity because umpires can't do anything when you're coming right in front of umpire. So 35 for the loss of 3 wicket after completion of over number 6. The last over will going to start from the
Birivere Kodla end. Last opportunity for the batsmen of Kodical Indians to get some acceleration, to freeze some harm and get some big stroke in this final over, because any score less than 40, it's definitely going to be hard to depend, seeing that the result of qualifier number 1, where it was a 44, which is quite easily chased on by the chasing team. Kodical create challenges, won that qualifier number by chasing 43 runs, and that's why it's so important for for this time appeal for leg before wicket. Umpire not interested, rightly so. That ball is got a deviation, extra deviation leg cutter, so that the line, definitely the ball going to miss the off stump, seeing that batsman almost shuffling across the line of the delivery, is almost outside the line of off stump, and right call for umpire Rajesh Padil. 36 for the loss of 3 wicket in the over final in progress. Karthik again with a short run off, bowling away from us. Birivere Kodla end. The distance is a quicker one, the straighter one, little bit deviation, not a big deviation. That's why it's a ball is called as a fair delivery. Right call from umpire Rajesh Padil, because this man Swatak is looking for some big stroke on the outside region by shuffled across the line of the delivery, and he just missed that opportunity. And wicketkeeper behind the stump did the rest. This time lovely delivery, beautifully bowled. Karthik, excellent one. The excellent delivery indeed. This is a perfect delivery for the batsman. One who was looking for the big stroke. Look at the way he is getting that line and length, and not balled very quickly. This is a slower one. Batsman early into the stroke, and ball did the trick. High hit, you miss high hit. That's what Karthik did in this delivery. The wicket number 4 is back into pavilion. 36 for the loss of 4 wicket in the last over in progress. So 36 for the loss of 4 wicket. Last over going to start. Last over is in progress, and a new batsman just came into middle is Roshan, and the left-hand batsman. And for the left-hand batsman, there is a fielder, one from the deeper cow point region coming inside the ring, right off a square leg umpire. And of course, this is not a square leg actually; it's a backward point. Left-hand batsman is on a strike, so that one at backward point, one at short third man, short extra cover, one at deep mid wicket, one at short third man, one at short extra cover, a little correction, short mid wicket, and a fine leg going back to deep fine leg, square leg going back to deep backward square leg, and one at deep long on, and one at a deep long off. The field set here for Roshan. Karthik, right arm over the wicket, delivers, going for the slash, but got outside edge of the bat. Once again the single here. These singles will not going to get help the big total. 37 for the loss of 4 wickets. So far it's a very good over. Just a couple of runs and a wicket in this over by Karthik, and now it's bowling right arm over the wicket. 5th time in this over. The Pratik drives that one again, not quite getting hold of that one properly. Straight to the hands of a fielder at short extra cover. Mohandas is there in the short extra cover region, fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. The last delivery of the innings of Kodical Indians. Roshan is on strike. Can he able to finish this innings with a big stroke? Went for the big stroke. Fielder in the deep in the wide is long on, and that ball looks like I think the fielder takes the catch. Shobit there in the deep mid wicket region. Taken an excellent catch. I want to see in the replay, because we're not having a good view from the commentary box, but I want to see in the replay the kind of catch. Absolutely good judgment. Oh, because the way he is just able to balance the body balance, because he's almost in the end, just an inches in front of that boundary line. You need to make the body balance that he couldn't manage to go over that line, the boundary line, and this is an absolutely perfect judgment and good balance of the body as well when you finish the catch. And because of that very good catch, the wicket number 5 and the last delivery of the over, last delivery of the innings is ended in a wicket taking deliveries. 38 now for the loss of 5 wicket. 39 is going to be a target, and I think it's a very good performance by the bowlers of Cuttack Titans to restrict the opposition for just 38 runs, and 39 will go into a target for Cuttack Titans to qualify for the qualifier number 2 of this prestigious Kodical Premier League Season 3.
And before the innings will go into start of Cutter Titans, it's a time for Gopi to take over the microphone in our national language, Indian. Gopi, it's a really good fight between two very good teams actually. And both the teams desperately wanted to be in the qualifier number 2. But I think after winning the toss, elected to field first. And I think it's a good bowling performance. I think the bowlers did the job here for Cutter Titans. But now all of the batsmen of Cutter Titans, how well they managed to chase this, not a big total, just a 39 to win the match. But at the same time, Gopi, coming back to this team, I think Indians and under the leadership of Yatiraj, they, even though they're defending a small total, but they got a potential. They got a bowling department. They can restrict the batsmen of opposition of not to get that 39 runs. And all together, we're expecting some great battle between these two teams to qualify for the qualifier number 2 of this prestigious Kodical Premier League season 3. धन्यवाद सतीश। और जहां तक सवाल है 39 रनों के लक्ष्य का, तो 38 रन जरूर बनाए हैं इस वक्त कोडिकल इंडियंस के बल्लेबाजों ने। और यहां पर उनके पास गेंदबाजी के लाइनअप में, जैसा कि आपने फरमाया, तो बेहतरीन लाइनअप है गेंदबाजी का। और उनके गेंदबाज अपनी क्षमता एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी करते हैं, तो निस्संदेह कट्टे टाइटंस के बल्लेबाजी के ऊपर दबाव आ सकता है। लेकिन कट्टे टाइटंस का जहां तक सवाल है, लक्ष्य कुछ ज्यादा लंबा नहीं है और मैं समझता हूं यहां पर एक बेहतर शुरुआत, सतर्क शुरुआत उन्हें अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। और हमारे साथ मौजूद हमारे मित्र, जो कि बेहतरीन कन्नड़ा कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं, श्रीमान नागेश हमारे साथ मौजूद है कमेंटेटर बॉक्स में। और हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आपका हृदयपूर्वक स्वागत है श्रीमान नागेश जी। तो इस बीच जहां तक सवाल है, तो 39 रनों का लक्ष्य, 39 द टारगेट इन 7 ओवर्स। और स्वर तक का गेंदबाजी शुरू करते हैं। सुमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, प्रणीत नॉन स्ट्राइक रन पर। और देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त करते हैं कोडिकल इंडियंस के गेंदबाज कट्टे टाइटंस के बल्लेबाजों को बांध कर रखने के लिए। तो अंपायर हरीश पटेल ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई इस प्रखर धूप तले दोपहर के 1:45 यहां पर बज चुके हैं। और धूप अभी भी अपना कहर ढा चुका है मैदान पर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यतिराज, जो कि कोडिकल इंडियंस के कप्तान हैं, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार पावर प्ले के अंतर्गत। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज स्वार्थक तैयार। और जहां तक फील्डिंग के नजरिए का सवाल है, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन, 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ऑन साइड पर 20 गज के दायरे के अंदर स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान एक फील्डर तैनात, जबकि मिड ऑन बिल्कुल सीधा यतिराज के रूप में इस वक्त तैनात 20 गज के दायरे के अंदर। ओवर की पहली गेंद स्वास्थ्य तक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और अंतिम क्षण में सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन की स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुमन सामना करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइक रन पर प्रणीत इस वक्त मौजूद है। गेंद फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चुके। और इस बीच जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। वाइड का भी इशारा हो चुका है, 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में। और 2 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर बन चुके हैं, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और स्वार्थ तक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं प्रणीत। और अभी भी फील्डिंग में जमावट करते हुए कप्तान यतिराज कोडिकल इंडियंस के। और स्वार्थ तक का 7 से 8 कदम उनका रनअप अपनी ओर की अगली गेंद 6 से 7 कदम कहना पड़ेगा उनका रनअप। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का। तो 4 अतिरिक्त रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर स्वार्थक प्रदान कर चुके हैं और अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सुमन और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। तो
गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट, 1 रन मिलेगा, 5 रन बिना किसी नुकसान के बन चुके हैं 5 विदाउट लॉस। अगले हफ्ते सह्याद्री कॉलेज मैदान पर एमएलए प्रीमियर लीग खेला जाएगा, जिसमें 8 एमएलए फ्रेंचाइजी टीम्स के मालिक के टीम्स हिस्सा लेंगे। डॉक्टर भरत शेट्टी, डी वेदव्यास का मत, यूटी कादर, हरीश पूजा और अंगारा। और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लंग ऑफ, सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में नाकामयाब और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए। 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। जैसा कि मैं फरमा रहा था, एमएलए प्रीमियर लीग शुभान अंगारा, सीयू राजेश नायक, उमानाथ कोटियान और संजीव मटंदूर, ये 8 शासकों के एमएलए के फ्रेंचाइजी टीम से वहां पर हिस्सा लेंगे। सह्याद्री कॉलेज अड्यार पर एमएलए प्रीमियर लीग 2022 के नाम पर यह मेगा श्रृंखला परसों शनिवार रविवार यानी 28 और 29 मई को सह्याद्री कॉलेज के मैदान पर खेला जाएगा। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, रन नॉट मोर देन अ सिंगल, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबल एट लास्ट। तो हमारे साथ एक और अतिथि इस वक्त मौजूद है, श्रीमान राघवेंद्र भट्ट, जो कि स्नेहा मलेमार के जो कि मैनेजर है, जो कि हमारे साथ मौजूद। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर, और गेंद सीमा रेखा पर इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well, and because of that he gets a boundary for that। 15 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत यहां पर कर चुका है कट्टे टाइटंस। तो मैं दरख्वास्त करता कि श्रीमान राघवेंद्र भट्ट कृपया स्टेज की ओर पधारें, अपना आसन वहां पर स्वीकार करें। ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति 15 रन। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर कटे टाइटंस चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 39 in 7 overs, and this is an absolutely fantastic start for them। सिर्फ रन से चाहिए 24 और इस बीच गेंदें बाकी हैं 36 और आस्किंग रन रेट अब उतर कर आ चुका है ठीक 4 रन प्रति ओवर। जैसा कि इस श्रृंखला के बारे में अगर फरमाया जाए, जैसे कि हम पहले भी कई बार फरमा चुके हैं, कोडिकल प्रीमियर लीग एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सीजन 3 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने सिल्वर जुबली, अपने सिल्वर जुबली 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। और ये श्रृंखला का आज ये तीसरे दिन का क्वालिफायर मैच, चौथा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ इस प्रखर धूप तले इस सुंदर से उर्वा क्रिकेट मैदान, लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए और दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, प्रतीक ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद हल्के से कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 16 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और प्रतीक इस बीच एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत सामना करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना दागा लेकिन एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले बल्लेबाज 1 रन न पूरा कर चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन बिना किसी नुकसान के। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी वो बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 4 के आसपास इस वक्त टाइटंस के लिए, कटे टाइटंस के लिए, और निस्संदेह यहाँ पर तख्ता उनका भारी लगता हुआ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕಂಚಾಡಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಇವರು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾಗೂ
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೊಂಚಾಡಿ for this wonderful Kodical Premier League Season 3 on behalf of Vishal cricketers Kodical as they are celebrating their silver jubilee in this most beautiful usage cricket ground by organizing KPL Season 3. So warm welcome on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizers to Mr. Raghavendra Bhatt Konchadi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर 19 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज के गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. गेंद इस वक्त जो हफीज फील्डर थे उनके बाईं ओर से निकली इस वक्त वाइड लॉन्ग पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. 5 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, पहले 5 गेंदों पर 5 सिंगल्स के रूप में. और इस ओवर में अंतिम बार प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चेप किया खूबसूरती के साथ कॉपी बुक स्टाइल लॉफ्ट और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. He just played that one right behind the line of the ball और निस्संदेह परफेक्शन परफेक्ट टेक्निक के साथ इस गेंद को उछाला था. गेंद के पीछे आते हुए और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए 4 रनों का इजाफा और निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेला था बल्लेबाज ने. क्यों सतीश? Absolutely, it was a copybook style, just like you were mentioning about Gopi. Technically very sound player. Doesn't looks like it's an undrummed cricketing stroke. It's just like you are watching in an international cricket match in the season ball cricket. The batsman one who got a very good technique of hitting the ball. Did is a real look at the way that he's played that stroke, right coming into the line of the delivery, and head is very straight and still. And look at the flow of the bat, the full face of the bat. He just lofted that one. You know exactly where the fielder is, and the placement is perfection. That was one of the delightful stroke to watch, Gopi. Absolutely classical stroke which is came from the bat of our batsman Praneeth. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक प्रणीत के द्वारा पिछले गेंद पर रखेला गया था चौके के रूप में. कलाकंदा श्रेया स्ट्राइकर्स के सर्व सदस्यों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन न दर्ज करने के लिए. तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ चेतन नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से भी बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर प्रणीत बल्लेबाजी करते हैं जबकि सुमन 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का. चेतन दाहिने हाथ राउंड ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद मिड विकेट पर. और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर बिना किसी नुकसान के. धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ पट्टे टाइटंस और चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं. इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट. लेकिन गेंद इस वक्त लपक ली गई है लॉन्ग ऑफ पर और निस्संदेह इस बार भी कॉपी बुक स्टाइल लॉफ्ट उन्होंने खेला था लेकिन प्लेसमेंट इस वक्त गलत था. और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर रिफाज मेरे हिसाब से मौजूद थे उन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है प्रणीत का और 25 रन के योग पर खट्टे टाइटंस अपना पहला विकेट खो चुका है. 16 रन प्रणीत ने बनाई. स्कोर 16 रन इनटू हिज क्रेडिट इंक्लूडिंग 3 बाउंड्रीज एंड आफ्टर बीइंग गुड नॉक फॉर द साइड ही इज बैकिंग टू पेविलियन. फैंटास्टिक नॉक. 25 for 1 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. कमल इस वक्त मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त कमल मौजूद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई सिर्फ 14 रन और चाहिए विजय के लिए. और चेतन की गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों से मिस फील्ड. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही कोडिकल इंडियंस को इस मैच पे वापस ला सकती है. फिलहाल उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाज कोडिकल इंडियंस के और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. सुमन 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार. चेतन की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. स्क्वायर फील्डर मौजूद. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए नहीं, दूसरा रन नहीं लेना चाहते और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर. ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था अंतिम क्षण में और
एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और अगली गेंद के लिए तैयार चेतन। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को बल्ले तक आने दिया, फ्रंट फुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया गेंदबाज की बाईं ओर से, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 28 एक विकेट के नुकसान पर 3 रन मेरे ख्याल से इस ओवर में 4 रन इस ओवर में बने, और कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक सुस्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ कट्टे टाइटंस। 11 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बाकी, और लक्ष्य इस वक्त काफी आसान इस वक्त लगता हुआ। एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से प्रतीक अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, सामना करते हुए कमल, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान यतिराज। ओवर की पहली गेंद लेकर प्रतीक कमल के लिए, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद निकली, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 29 और सिर्फ 10 मात्र रन दूर अपने विजय से कट्टे टाइटंस को, और कोडिकल इंडियंस इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए इस वक्त कप्तान यतिराज और प्रतीक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा। 30 रन, 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 9 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 22 बॉल्स। तख्ता भारी लगता हुआ इस वक्त कट्टे टाइटंस का। कोई जल्दबाजी की इस वक्त उन्हें जरूरत नहीं है, इत्मीनान भरी बल्लेबाजी की जरूरत है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज क्रीज पर इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर निशाना नहीं चूक चुका है इस वक्त। जोखिम भरा रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं 22 के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज प्रतीक अपनी ओवर की अगली गेंद हल्के से बेहतर गेंद थी, गेंद की टर्न को भाप नहीं पाए अंतिम क्षण में, और गेंद को फील्ड कर लिया गया। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 7 रन अब चाहिए विजय के लिए, बचे हुए 19 गेंदों पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, डीप मिड विकेट से बाहर, 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। सिर्फ एकमात्र रन चाहिए। बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद की लाइन को भापते हुए, थोड़ी सी सफल होते हुए, गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, छक्के के लिए बल्लेबाज कमल ने। अब सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई। ओनली फॉर्मेलिटीज इज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच। 1 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में। 0.33 रन की औसत इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट, और 1 रन 3 ओवर में चाहिए, यानी 18 गेंदों में। चेतन गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सुमन जो कि एक सेंसिबल पारी खेलते हुए सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। चेतन इस बार लेग स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। 16 गेंदें बाकी हैं, 1 रन चाहिए अभी भी विजय के लिए। इस बार काफी लंबा छक्का, बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर सुमन द्वारा, और इस छक्के के साथ कट्टे टाइटंस आर क्वालिफाइड फॉर द क्वालिफायर नंबर 2 to meet Kalakanda Asia Strikers, defeating Kodical Indians, and they are moving to the qualifier number 2. And now the qualifier match number 2 will be played between Katte Titans versus Kalakanda Asia Strikers, and
winners of this match will meet Kodical Create Challengers in the grand finale, mega final of this competition. And I request all the players of the second qualifier match to please report to the stage immediately for making a signature in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾಕಂದ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. And the second qualifier match will going to start right after 10 minutes, and we'll be taking a short break and we'll be back right after 10 minutes with my friend Satish in English in the second qualifier match number 2 will going to begin right after 10 minutes. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So man of the match, which is goes to all-round performance by the all-rounder of Katte Titans, Praneeth of Katte Titans, for his very good 2 overs, 12 runs and 1 wicket, and he scored valuable 16 runs and he deserves this man of the match award of this eliminator round. So I request Mr. Praneeth of Katte Titans, please collect your man of the match award from our chief guest Raghavendra Bhatt Konchadi, and in presentation stage I request Praneeth ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಣೀತ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ prestigious Kodical Premier League Season 3, and the chief guest for the presentation, and of course the big supporter of cricketer and former cricketer as well, Mr. Raghavendra Bhatt Konchadi will going to present this man of the match award. The presentation of man of the match award, and the Raghavendra Bhatt Konchadi will going to present the man of the match award for Praneeth for his all-round performance, 1 wicket and 2 very good overs with 1 wicket, and then scored a valuable 16 runs with the help of 3 delightful boundaries, quality cricketing stroke from the bat of Praneeth, and he deserves this man of the match award. Thank you very much. We'll take a short break, the short break of 10 minutes, and after that 10 minutes we'll right back in this qualifier number 2 between loser of qualifier number 1, that is CS Strikers Kalakanda, versus the winner of eliminator number 1, that is Katte Titans. I request both the teams players to complete your signatures, and afterwards the 10 minutes break we'll going to start this qualifier number 2. Thank you very much.
first. So it's a very good match, and don't go away. And after that lunch break, we are straight away into this the big match, and we are having one more commentator, Mr. Riaz is here in our commentary box as well, and welcoming him on behalf of Vishal Cricketers Kodical for this Kodical Premier League Season 3, and definitely as a guest commentator, and he will definitely going to share the mic along with us again. We'll take a short break, and we're back after short break. Thank you. So Cutter Titans, and the game plan is on between the two teams. Definitely need to get a very good game plan, the strategy along with of course the mentor and the coach, and along with the players having some game plan. And of course Cutter Titans, after winning the toss, a little bit correction. I think the captain of Kalakanda, they won the toss, elected to bat first, and they're having a game plan right now, and wait and see how well the strategy, the game plan will going to work out for Sia Strikers Kalakanda. And a very good match, and of course a lot of entertainment left in this season. The maybe the last tournament of the season, big tournament is coming up in 28th and 29th in Sahyadri Adyar Cricket Ground, and MLA Premier League 2022 will go into organize Sankalpa Foundation as well, and along with the Mangalore Youth presenting this MLA Premier League 2022, and definitely it's going to be entertainment cricket tournament under the franchise. The owners of 8 constituency will go into have ownership of the teams, their constituency, and that tournament suddenly will go into organize and the 28th and the 29th of this month, May 2022. And on behalf of organizer, we are welcoming all cricket lovers into the one of the most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar. And on behalf of organizer, once again, we are welcoming all cricket lovers. Of course, we have got a live telecast of this cricket tournament. V4 News 24/7 channel will go on to have a live telecast of this cricket tournament under the great leadership of Kiran Kodical, the corporator, and definitely is the leading from the front with the motive of raising a fund for the social activities, and without any entry fees, and the organizer organizing such a big tournament, the 1 lakh cash for the winners and 50,000 for the runners up, and definitely it's going to be one of the important and interesting day for the cricket 28 and 29. And again we are welcoming all cricket lovers to the Sahyadri cricket ground for that prestigious MLA Premier League 2022. We are all set now for the big match here, and we are inviting our guest commentator, Mr. Riaz, to take over the microphone for the first 3 overs of this qualifier number 2 of this prestigious cricket tournament. Welcome back.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಲಗ್ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ಬೇರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದದ್ದು ನಂಕನಡು. ಈ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ದ 2ನೇ ಬಾಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ಐದು ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ದ 3ನೇ ಬಾಲ್ ಧನುಷ್ ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅರ್ಧ ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಪೋಂದು ಕೋಶಿಶ್ 4 ರನ್. ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪೆಟ್ ಸೀದಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ ರೋಲರ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಪಂಡಿ ಅರೌಂಡ್ 4 ರನ್ ಎಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪೆಟ್. ನಿಜವಾದ ತೂಪು ನಂಜಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಹೊರವರ ಪೊಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಮರಡು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಡ ಪೋಪುಜಿ ನೀಲಗಿರಿದ ಬ್ಯಾಟಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಗೋರಿಯರ್ ಪೆಟ್ಟು 4 ರನ್. ಈ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಧನುಷ್ನ ಬಾಲ್ಗೆ ಮೂಜನೇ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ನ ತಡೆದು ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಟ್ ಶಿವರಾಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ದೆತ್ತು ಗೋರಿಯರ್ ಪೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಕ್ಕುಲ ಆಯೋಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಅಂಪೈರ್ ದಾರ್ದು ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಬಾಲ್ ಈ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಪೆಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ದ ಅಂಜನೆ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಉಲಾಯಿನ ಬಾಲ್ ಬದಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿದ ಉಲಾಯಿನ ಆಪಣಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಂಜಿ ಕೋಸಿ ಜಾವನೆ ನಗಲೆಗಲ ಗೋಸಿ. ಈ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ನ ದಾರ್ದು ಬಾಲ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ವಿಂಗಡ್ ಬಾಲ್ ಬೋಂಡು ತೂದ ಉಂಡೆ ಬುಡ್ಲೆಕ ಬೋಂಡು ಆಂಡ 6-10ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪಂಗ ಇದ ಮರದ ಬ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಓವರ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಆದುಂಡು 7 ರನ್ ಎದುರಾಳಿ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿಜೇರ್ ಸೋಕುದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ 2022 ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಲ್ಲಗಂಡ ದಕ್ಲು ಏರಾಂಡ ಒರಿಯೆ 17 ರನ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಪಾಟಿಯರ್ದಂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೂಜಿ 6 ಹಾಕಲಂದಾಂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೆಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೋಕುಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ 2 ರನ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಒವೇ ಬೌಲರ್ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಡ ದೆತ್ತದ ಕೊಲ್ಲುದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೆಟ್ಟ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಆ ಪಿದಾಯಿ ಬೌಂಡ್ 4 ರನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೆಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೌಂಡ್ 4 ರನ್. 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಸಂಜಿಮೇಟ್ ಬೊಕೋರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಲ್ಲಗಂಡವಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಒಯ್ತಿರಂದಾಂಡ ಯತೀನ್ ಪನ್ಪರಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇರ್. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಬಾರ್ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅಂಪೈರ್ ರೋಲೂರ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಬಂಡೇರು ಅವು ನೋಟ್ ಔಟ್ ನಿಜವಾದಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡಿದ್ರ ಬಾಲ್ ಶೋಕದ
रोलर पिंटर बारी उंजेड अंपायर अंचा दुपनगा दूसरी ओवर कोटे की चल रही है। एक गेंद गेम को उठाने के लिए कोशिश और गेम सीधा टर्मिनेट की दिशा पर जा रही है। एकमात्र रन, रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 14 रन बिना विकेट के नुकसान। दूसरा ओवर कोटे की चल रही है। गेंदबाजी डालने के लिए तैयार प्रणीत जो कि बॉलिंग मार्क राइट आर्म ओवर द विकेट के बीच जो गेंदबाजी डालने के लिए तैयार। इस बीच इस गेम को उठाने के लिए कोशिश और विकेट कीपर ने गेम को गैदर करते हुए काफी अच्छी गेंद है। गेम को उठाने की कोशिश नहीं है, हालांकि गेम सीधा विकेट कीपर के ग्लास पर गई थी और डॉट बॉल के रिजल्ट आ गई। रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 14 रन बिना विकेट के नुकसान। 14 फॉर द लॉस ऑफ नौलाश और अच्छी गेम गेंदबाजी डालने के लिए तैयार। ये गेम बाइट कर गेम को घुमाने के लिए कोशिश और विकेट कीपर ने गेम का लपक लेते हुए और स्टंप विकेट कीपर ने गेम को गैदर किया और स्टंप के लिए टच किया और अंपायर के करारी शॉट नॉट आउट का कर दिया। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्त। 2 ओवर की समाप्त के बाद रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 14 रन बिना विकेट के नुकसान और काफी अच्छी सेमीफाइनल मैच खेला जा रही है। विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल जो कि सिल्वर जुबली 2022 की इस मैच के लिए इसका आनंद लेते हुए सेमीफाइनल और काफी अच्छी टीम है। दोनों टीम इस मैदान पर पार्टिसिपेट कर रही है। काफी अच्छी क्रिकेट मैच के लिए आयोजन करते हुए इस मैदान और उर्वा स्टेडियम काफी बेहतरीन स्टेडियम है और इस मैदान में काफी सुंदर लगातार क्रिकेट मैच चल रही है। कम से कम 40 साल हो गई और अलग और आज की विशाल क्रिकेटर्स के लिए इस टूर्नामेंट के लिए आयोजन करते हुए नए गेंदबाजी को बुलाते हुए सुमन और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज महेश और ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ और नए गेंदबाजी को बुलाते हुए सुमन और कोई भी खिलाड़ी एक 3 छक्का उठा लिए तो 2000 का इनाम रखा है जो कलाकंडा क्रिकेटर्स के लिए और गेम को शॉर्ट कवर में गेम को ड्राइव करते हुए खिलाड़ी एकमात्र रन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 15 रन और बिना विकेट के नुकसान और इस ओवर के दूसरी गेंद के बाद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट के बीच गेंदबाजी गेम को बाइट कर गेम को घुमाने के लिए कोशिश। थर्ड स्लीपर गेम का जा रही है। एकमात्र रन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 16 रन बिना विकेट के नुकसान कलाकंडा क्रिकेटर्स और कोई भी खिलाड़ी के लिए 17 रन बना लिया तो जो 500 रुपया का नगद पुरस्कार भी रखा है और जो प्लेस कोडिकल के इसके लिए यहाँ पर इनाम रखा है और 2000 के लिए इनाम आपके 3 छक्का उठा लिया तो जैसे मजा चाहिए इस मैदान। और इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट के बीच बैठ कर गेम को घुमाते हुए गेंद सीधा मिड विकेट हवा में जा रही है। कैच होने के संभव शायद गेंद सीधा फील्डर ने गेम को कैच ने छोड़ लिया और काफी आसान से कैच था। इस कैच पकड़ने के लिए मौका भी था और इस कैच को छोड़ लिया और इस कैच छोड़ने के बाद रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 19 रन बिना विकेट के नुकसान। 19 फॉर द लॉस ऑफ विदाउट लॉस और इस बीच के बाजी डालने के लिए तैयार। एक गेंद ऑप्शन की थोड़ी बार जा रही है। गेंद विकेट कीपर ने गेम को गैदर करते हुए काफी सुंदर गेंद है और सुमन के द्वारा सेमीफाइनल मैच के लिए चल रही है इस मैदान और दूसरा सेमीफाइनल मैच जो है कलाकंडे की पहले की और इस गेम को उठाने के लिए कोशिश। विकेट कीपर ने गेम को छोड़ लिया और रन आउट की चांस और बाई का इशारा करते हुए अंपायर रोलर पिंटो और अतिरिक्त रूप से रन और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्त। 3 ओवर की समाप्त के बाद रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 20 रन बिना विकेट के नुकसान और 3 ओवर की समाप्त के बाद रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए कलाकंडा क्रिकेटर्स
20 रन बिना विकेट की नुकसान और आगे का ऑल सुनाने के लिए सतीश मैंगलोर का मैं बुला रहा हूं। धन्यवाद। So thank you very much, Riaz. So what a shot! What a shot! That was a magnificent strike. What a great stroke coming from the blade of Shivaram. That was a fantastic one. Let's look at that one in the replay. Just a stand and delivered. Magnificent strike. The way the ball is left the bat of Shivaram, everybody realizing this is a one stroke which is fit very cleanly from the bat. Middle of the bat, and the score jumped into 26 now for the loss of 3 wicket. Oh, good comeback, absolutely good comeback there from Pranit in the relegation, seeing that he cannot bowl that delivery is in the slot, so that he's bowled a little bit outside the line of leg stump, tried to bring the ball around his legs, but fortunately the ball is missed the bat, and one more addition to total scoreboard now moves on to 27 for the loss of 2 wicket. Again, and I'm just waiting for the turn of the delivery, and just gave the direction towards a backward point revision for a single scoreboard moves on to 28 on the board without loss of any wicket. Again, right arm over the wicket. That was a very good delivery. Lucky in the negation. The batsman now at last moment he got a bat onto that. Otherwise, that ball almost crashing towards the midline off stump, and but the batsman managed to get the single down to square leg region. Scoreboard now moves on to 29 on the board. 29 on the board, and already 15 runs which is came to Shivaram. That means he already got 500 cash prize from Jugal's Kodical. This time plumb in front of wicket. The last thing that doesn't want to see the fans of Shia Strikers Kalakanda that losing this man, because after getting a very good start for the first opening wicket, 29 valuable runs they scored, and I think they just got a damage what he wanted to do in this the qualifier number 2. The Mahesh before he's back into pavilion, he scored a valuable runs from his bat, and they got a very good start. And after winning the toss, elected to bat first. A lot of encouragement prizes here for the players. Of course, 17 runs plus the 500 runs, 500 rupees from Juggles Kodicals, and hat-trick 6 rupees, 2000, and Yatin and 1000 Yatin Malemar, and of course 3 wickets and 1000 rupees, and once again it's Juglos Kodical announcing this the cash prize, and also for Katte Titans, and Rohit Katte announced the 500 rupees for every the wicket, and Katte Titans the bowlers they got opportunity to grab the 500 rupees. Any player scored 25 runs, 1000 rupees from Rohit Moili and Vishal Kothara. So they're looking for the second, fumble from the field, and both the batsmen grabbing the opportunity to come back for the second. Little margin for when playing the qualifier number 2, where is a do or die situation. I think both the teams wanted to be in the finals of this prestigious Kodical Premier League season 3, and they got a very good start after completion of over number 3. It's a 31 for the loss of 1 wicket. What a fantastic progressing here for Sia Strikers Kalakanda. The run rate exactly 10.33 runs per over. That only because of both the opening batsmen, they really got an explosive start in the first tour of the power play, and because of that they really started to talk with the bat, and they got very good runs on the board. Now if Titans want to back into this game, they need to bowl 1 or 2 good overs. The economical overs is much required here if they wanted to restrict the batsmen of the opposition not to get a big score here.
Now Guru Raj came into middle as a number 3 batsman. He is also second highest run getter. Now umpire Roland Pinto not happy with Guru Raj after getting a several warning. Especially I just mentioned in the previous match also, and Roland Pinto sending Guru Raj to change your bat, because as for the rules and regulation, they're not more than 4.25 inches the width of the bat, and Guru Prasad has got 48 runs, and of course, but umpire Roland Pinto just asking Guru Prasad to go and change your bat and wait and see. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ and a wonderful the fielder as well in a cow point and backward point, and he is none other than Chandrahas of NF Zirwa is present at main stage, and I request Pritesh Vishal Kodical ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಇವರು this time lofted at one, but fielder in the right position to take the catch, just like I'm mentioning about if the Katti Titans want to back in this game, they need to pick the wickets. So we can see that in the main stage, Chandras the receiving the memento from Pritesh of Vishal Kodical, and welcoming him for this Kodical Premier League Season 3. And one more wicket is back into pavilion. That means both the opening batters are back into pavilion. That was a wonderful beginning for the over number 4 by Suman by picking up wickets. Now again, oh, that was very lucky in the day. Guru Prasad shuffled across the line of the delivery. Luckily that he's got a bat onto that, otherwise certainly is a flum. No doubt at all. And that's why the bowler knows that, Dhanush, that the batsman just survived from that delivery, and he just got 2 hands to his head, and seeing that just he missed the opportunity to get one more wicket. 32 for the loss of 2 wicket. Again went for the reverse sweep, appeal for us. Oh, chance of run out. This time bowler missing the stumps at non strikers, and oh my goodness, it's a golden opportunity missed out by the fielding side, Katti Titans. What could be a certain chance of run out, and both the batsmen has got a little bit confusion, and because of that they just survive from that run out. So 33 for the loss of 2 wicket. Now Guru Prasad is on strike, man who got a 48 valuable runs, second place in highest run getter, and Afiz is the one, I think is a leading run getter, 53 runs, and he is following him. Now he is batting on 50 exactly. He is batting on 50 throughout the tournament. Total score we are talking about. This time kept that one over that of that cow point fielder, and before the fielder from deep cow point region to run across to field the ball, ample time for Guru Prasad to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 35 for the loss of 2 wicket here in over number 5 in progress. Dhanush, if he is able to get 1 wicket here onwards, he will going to get 1,000. The last delivery remaining, last opportunity for Dhanush to pick the wickets. This time little bit that down the leg stump, chance of running in 1 second. This time he is out of the crease. Guru Prasad is not a good runner between the wicket, and that's why he couldn't manage to complete the run. He is well short of the crease. The wicket number 3 is back into pavilion of CS Strikers Kalakanda. 35 for the loss of 3 wicket. So here is a warm welcome for Riaz, the commentator of multi-language commentator, welcomed by Abdul Kader, the president of Vishal Cricketers Kodical.
So Hafiz is a very happy man to see that Guru Prasad is back into pavilion, because he is the one is following him, and now Hafiz might be very happy to see that if he able to play one more good innings, and definitely is the highest run getter for this tournament. Now one more highest run getter, and with the 45 runs, Ganesh came into middle. Ganesh will going to face the bowling of Suman. Oh, flum! Absolutely flum! Oh, my goodness, can you believe this? Suman striking regularly, 2 consecutive deliveries, 2 big wickets, and that was a fantastic comeback here by Kate Titans. What a good comeback! Absolutely, it's a flum in front of wicket. Just look at it on a replay. His ball a little bit wide of the crease, slightly cutter, and look at that. That was absolutely flum. No doubt in the mind of umpire Sriraj to raise his finger right across the line of the delivery. It's not a good shot selection from the batsman who got 40 plus runs throughout the tournament, and when you're playing this kind of competition where it was a do or die situation, qualifier number 2, I think a lot of expectation from the fans of Kalakanda Sia strikers must be a little bit disappointed with the dismissal of Ganesh, but certainly Kate Titans owners and fans happy with the performance of Suman. He is on hat-trick. He is on hat-trick. Can he able to pick the, no hat-trick, a little bit. The previous delivery is a wicket, and now it's the second ball. He's bowled outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. So Guru Prasad is back into pavilion. The last delivery of the previous over in the form of run out. Now Ganesh is back into pavilion in the bowling of Suman. Prashant is a new batsman. This time he lost it! He lost it and a handsome looking stroke. Oh my goodness, that was a huge one. Absolutely, it's a monumental. Just picking at a short pitch delivery right from the middle of the bat. Look at that one. Absolutely terrific hit. That ball is gone a long way out of the cricket ground. When he is in a arc, ball will going to disappear out of the park. What a fantastic struck here from Prashant. Suman still has got some encouragement prizes. If he get one more wicket in this over, he will go at 1,000 rupees. Again, this time very interesting to see. It's very interesting to see that the kind of strokes which is implemented. Absolutely right, umpire Sriraj just calling that is a deliberate padding. No stroke is offered because that was a leg cutter. And Prashant is thought it might be a wide delivery. That's why he's not really offered the stroke. Ball just deliberately hit the pads. And when you are not really offering the stroke, in the rightly umpire call, that is a no run. 41 for the loss of 4 wicket. Suman, right arm over the wicket delivers. Again, the quicker one is trying for shot outside the line of leg stump. This time, definitely the Suman will not getting away from the signal from umpire Sriraj to call that wide. A little bit problem here for the batsman. I think when he was trying for the stroke on the onside region, maybe he's just has got an ankle injury out here. Problem is there because little bit looks like he's feeling a lot of pain, and every sixes there is a 500 rupees again came from Vishal Kotara as well as Rohit Moili for the batsmen of CS Strikers Kalakanda. Every sixes there will be a 500 rupees. Now looks like it's a Prashant might be a little bit recovered, and maybe that it was an ankle injury. Sometimes it's happening when you are not having a good grip in your shoes. That was a little bit slippery, and the ball is of course some part of that what is a batting track. We can see that some part is a very nice surface, so very difficult to grip when you are looking for the big shot, and the chances of that was ankle injuries and is not really recovered enough here. Wait and see if can he able to continue or not, because this is the fans and the captain certainly wanted him to continue his batting because he is the one who hit mighty 6 from his bat.
and losing him in this juncture, I think it's going to be a big blow. That's why Prashant, I think, doesn't want to leave the field, and that was really good to see him. He is back again, and looks like he will going to continue. 42 for the loss of 4 wicket. Suman from the far end. Right arm over the wicket delivers. Again, wicketkeeper behind the stump, not up to the mark. At the same time, looks like the batsman Prashant is really struggling in the middle. We can see that in his face, that was a pain what he's feeling in the middle right now. It's now umpire just asking Prashant, can he able to continue or not? Because I think it's a big ankle injury. He cannot stand properly. Looks like he's maybe looking for some first aid and quick relief spray which is required, might be. And 42 for the loss of 4 wicket. What a fantastic cricket tournament is organized by Vishal cricketers. Kodical, as they are celebrating their silver jubilee. It's been it's a long journey, successful journey from Vishal cricketers Kodical, because any firm or organization, it's very easy to start, isn't it? But continuously 25 years, a successful run, that means it's a great achievement by Vishal cricketers Kodical, and that's why they wanted to make that one memorable, and they organized. So this is what you can see, that frustration. This is a result of frustration, as Prashant couldn't manage to tackle the pain what he's feeling, and he's just sacrificing wicket, just going for the big shot, missing the line completely. And Suman not only got a wicket, but he got rupees 1,000 for that wicket. And again, the players are getting a lot of money into their pocket, and especially the supporters, the owners is giving a lot of encouragement for the players, because it's a proud moment for any teams to qualify for the finals. Already the one team which is qualified for the final, and it's none other than under the captaincy of Sandeep and Kodical Create Challengers. They are into the finals of this wonderful cricket tournament, and winners of this match, qualifier number 2, will go into play for the title KPL season 3 after this match. So good comeback in the last 2 overs, really good comeback. But I think even the wicket is fallen in that previous over. But because of 1 6 which is came from the bat of Prashant, still we can see that is a very good run rate. 7 runs per over. 42 valuable runs already in the board, and they're dealing with the last and final over of their innings. Bhagwan, captain of the side, facing Karthik. There's a lovely shot, improvising, and no need to run for that. Ball running down to deep, third man boundary for 4 runs. Delicately played there by Bhagwan, just changing his position quickly and getting the line and the length so quickly, and just look at that one, just helping it down, isn't it? Not really putting a lot of power behind the reverse stroke. Look at the way he just absolutely using the pace of the bowlers, and then he's just delivering that one where he wanted to be. And you know exactly, the third man inside the ring, once he beat that fielder, and that will go into a certain boundary for his team. It's a very good boundary here for captain of CS Strikers Kodical, and 46 on the board for the loss of 5 wicket. Karthik, second time in this over, bowling away from us. Right on the wicket, delivers. This is a lovely shot. This is a stroke of the day. Absolutely, it's a stroke of the day. The Bhagwan way that he is just getting the placement, the magnificent stroke. Glorious, absolutely glorious. 50 comes up here for CS Strikers Kalakanda. Look at that one, absolutely magnificent stroke. Look at that one, absolutely, and that was one of the most delightful stroke to watch. The Bhagwan just making the room to play the shot. You know that the fielder is inside the ring, there is no cover point in the deep, and just going over the top of that infield, and you got a boundary for that. Imperious lofted cover drive from Bhagwan. Back to back 2 boundaries. The runs are coming in this last over. 50 comes up. Very good score here for CS Strikers. Karthik, third time in this over. Going down the leg stamp to be a wide.
Again the wide, frustration and the pressure straight away to the bowler Karthik. After getting a punishment from Bhagwan, 2 boundaries, it's very difficult to handle the pressure. Couldn't manage to handle the pressure, so they wanted to beat the batsman, and he bowled a wide delivery. This time just using his feet and coming down the track and driven that one to deep low one, looking for the second. But I think it's a right strategy from Yatish. Edgewith, in fact, because he wanted his captain to be in the strike. He wanted his captain to be in the strike. That's why he's running towards the non-strikers end. But Bhagwan is almost settled for that run, single run. And look at that one. Absolutely no chance at all for the second run. And that's why Bhagwan is not interested. I think, as far as the technique of this second run is concerned, I think the batsman Yatwij have to stay in the striker's end, and Bhagwan has to run towards the striker's end. Until he is coming to the striker's end, then Yatwij definitely wanted to leave the crease so that Bhagwan can get the strike. But here is Yatwij coming to the end of Bhagwan in the non-striker's end. He pays the penalty for that, and scoreboard is 52 on the board for the loss of 6 wickets. Now last 3 deliveries remaining of their innings. Akshay came into strike, the tall man. Again, a little bit down the leg stump. They're going for the run. 1+1. Already there is so many runs in the final over. There is a little margin for error in this big do-or-die matches. Karthik conceding some runs in the form of extra as well. Score jumped into 54 for the loss of 6 wickets. Still Karthik have to bowl another 3 deliveries. This time again, this time across the line, swinging that one, and Bharat Raj making no mistake at all at square leg. Takes a very easy straightforward catch, and Bhagwan's entertainment innings comes to an end. He's played a small cameo, and he got the runs what his team is wanted in the final over, and Karthik is at last is got a breakthrough here, but he already scored a runs in this particular over. 54 for the loss of 7 wickets. 10 runs in just 5 deliveries. Captain's knock from Bhagwan at the strike rate of exactly 200. That's the innings which is required from the captain in this qualifier number 2. Now, 5th delivery. Akshay is a very good volleyball player as well. The facing next delivery. This time he lost it, and he lost it with a mighty stroke. I think the catch is taken. Look at the reaction there from umpire Roland Pinto. He is also surprised with the catch. I want to see in the replay, but we are not having a good view of that catch. Look at that one, lofted that one. Looks like it's definitely going to be a 6. But I want to see what really happened in the deeper longer. Oh my goodness! Look at the jump. Look at the jump of that fielder. He's taken a blinder. Absolutely a blinder. What a magnificent catch. Oh, KPL is not lesser than the IPL, Gopi. This is a magnificent catch. Just like what we are watching in international cricket. So many catches taken in the similar way. Even in underarm cricket as well, we are having such a talent. I want to know the name of that fielder. Shobit. Oh, great catch. Absolutely, it's one of the best catch of the tournament. Already there are 3-4 catches is taken in the deep where could be a certain 6, and this is a one more catch we want to see again and again. And Mangalore media cameraman doesn't want to miss that golden opportunity to catch in his camera. What a magnificent catch that one. Last slashes that one again down to backward point region. They're looking for the second. In comes the throw from the deep. They're going hard, and chance of run out. It's gone. This is what the batsmen want to try in the slog overs and the last delivery of their innings. They are looking for everything. They wanted to convert a single into 2, but this time the very good throw coming from the backward point region. So the batsman just short of his crease, and the 55 runs which is scored there by Sia strikers Kalakhanda. Looks like they are happy with that total, and they won the toss, Gopi. They elected to bat first, and they once again just giving a strong message that why they are interested to bat first, because they knows that the potential of in the batting department. They wanted to get some big score. They wanted to put the opposition under pressure after getting a good score. I think all of them is got a contribution from the bat, and I think it's the best contribution of this
particular qualifier number 2 is the Mahesh and Shivaram, the two opening batters. They are the one that laid the foundation which is really required in the beginning, and scored 20 plus runs for the opening wicket. 31 runs. 31 runs for the first wicket, and there onwards they nearly not look back, and of course captain's knock in the end as well by Bhagwan, who scored a valuable 10 runs, and even Prashant played a small cameo of 6 runs, and all that we can see that Guru Prasad contributed a little bit, and scored 4 valuable runs. Altogether it's a very good score, 56 to win this match. So welcome back, and before the innings of Cutter Titans will going to start here, and it's a time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, the qualifier number 2, and just like what we're expecting, what the cricket lover expecting, the kind of competition in this do or die matches, and looks like the batsmen of Sia strikers Kalakanda, they really got what they really wanted. It's a match-winning total, isn't it? 55, which is a really good score. And what do you think if Cutter Titans wanted to win this match? What do you think? What kind of batting which is required to get this 56 to win this match? But altogether, Gopi, look at the way that the Kalakanda, they able to get that score, right? That only because of the opening batters that laid the foundation. 31 partnership for the first wicket, and after that Bhagwan, and the captain of the side becomes a god in the slog overs, just like his name is Bhagwan, and scored some 10 valuable runs in the slog overs, and altogether it's a big contribution. The total teamwork, isn't it, from the batting department, and they got 55. Now 56 is going to be a target, and I think a lot of hard work which is required from the batting department of Titans to win this match. But we cannot underestimate the batting department of Titans. They got some good players in the side, and just like the two opening batsmen just walking towards the middle, I think they're the one, they got opportunity to get the partnership going, just like what the opposition team has got, Mahesh as well as I think Shivaram. They got a very good start in the first over of the power play, and the same beginning which is required from the opening batsmen of Titans if they wanted to win the match. And Gopi, 20 to 25 runs, certainly the 2 overs of power play will going to open the gate for Titans. Otherwise, very difficult for them to chase the total. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, और यहाँ पर चाहिए एक्सप्लोजिव स्टार्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, विस्फोटक शुरुआत. 56 they have to score in the stipulated 7 overs. The required run rate at this situation is exactly 8 runs per over with the help of 10 wickets. They have to score at this situation, and their innings now going to start. और 56 रनों का लक्ष्य जहाँ तक बनाने हैं, तो इस वक्त कट्टे टाइटंस को चाहिए एब्सोल्युटली एक्सप्लोजिव स्टार्ट, और देखना यह है कि कट्टे टाइटंस के सलामी बल्लेबाज उस विस्फोटक शुरुआत को यहाँ पर दे पाते हैं या नहीं. और जहाँ तक इस बार पहली गेंद थी, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंचे. 1 रन का इजाफा, 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. हर विकेट के लिए 250 रुपए का नकद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है विशाल कोट्टारा और रोहित कोडिकल की ओर से. गेंदबाजों के लिए कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाज अगर कोई विकेट उखाड़ते हैं तो 250 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा. यह गेंद बेहतरीन गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. भगवान विकेट प्राप्त कर चुके हैं और सुमन
प्रणीत माफ कीजिए गेंद ऑन साइड पर सफल होते हुए उछालना चाहते थे, गेंद उनके पैर पर टकराई, लाइन पर टिप्पक आती हुई, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई और अंपायर रोलैंड पिंटो की उंगली धीरे धीरे उठी और आखिरकार यह पहला विकेट गिर चुका। 250 रुपए इस वक्त प्रणीत के खाते में जा चुके विकेट के लिए, माफ कीजिए भगवान के खाते में जा चुके विकेट के लिए। और जहां तक सवाल है तो एक और इनाम रखा है, 3 विकेटें अगर कोई गेंदबाज प्राप्त करते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार जुगलूस कोडिकल इनकी ओर से दिया जाएगा कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और पहला विकेट दूसरे गेंद पर गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त गेंदबाजों के, माफ कीजिए बल्लेबाजों के ऊपर। कट्टे टाइटंस को जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था कि एक बेहतर शुरुआत की उन्हें जरूरत है, अगर 56 रनों के लक्ष्य तक अगर उन्हें पहुंचना है तो। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो कमल नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में असफल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जस्ट played that one after being shuffling across and finds the gap well just wide of the square leg fielder and because of that he's got a boundary for that। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम पहले भी फरमा चुके हैं, कट्टे टाइटंस को चाहिए एक बेहतर शुरुआत, अगर उन्हें 56 रनों के लक्ष्य तक, लंबे से लक्ष्य तक अगर अग्रसर होना है तो। और भगवान इस वक्त चौका प्रदान कर चुके हैं, अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, यह गेंद अच्छी गेंद थी, सीधी रफ्तार के साथ गेंद को उछालना चाहा, लगभग मैं थिंक मैं समझता हूं इट्स गॉट जस्ट डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले का बाहरी सिरा शायद लगा होगा, जिस तरीके से विकेट कीपर का एक्सप्रेशन था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था। फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया, नॉन सेकंड बल्लेबाज सुमन के पैरों पर गेंद टकराने के बाद स्क्वायर लेग पर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 रन प्रति ओवर की औसत से कटे टाइटंस को रन्स बनाने 56 निर्धारित 7 ओवर में और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। भगवान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सुमन के लिए यह गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन केम अलोंग द कार्पेट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो पहले ओवर की समाप्ति और सतीश 7 रन, पहले ओवर में विकेट दूसरी गेंद पर प्रणीत का गिरा था, लेकिन उसके बाद यहां पर रन बने, चौका कमल ने झड़ा 7 रन। तो रिक्वायर्ड रन रेट्स 8 रन प्रति ओवर जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, 7 रन बन चुके हैं, यानी अब 49 रन चाहिए, 6 ओवर का खेल बाकी, 8 से कुछ ऊपर रन रेट जा चुका है, 8 दशमलव ऐसा कहना पड़ेगा 8.17 रन प्रति ओवर। मैं समझता हूं 1 या 2 ओवर कम से कम 1 या 2 ओवर्स में कम से कम 18 से 20 रन बनते हैं तो कट्टे टाइटंस इस मैच में वापस आ सकता है। Exactly, Gopi. As a comparison after completion of 1 hour, the same, isn't it? The 7 runs, they also got 7 runs, but they didn't lose any wicket. And there they lost the wicket of Pranit. I think it's a big wicket. And a lot of expectation from Pranit because he is a very technically sound player. The previous match also he played some delightful cricketing stroke. And losing him in the first over, I think it's a big blow for Titans, Gopi. And even though there's no much difference in the after completion of first over, but big difference came after that. After that, both Shivaram and of course Mahesh played a magnificent innings for the team after that first power play over, and same kind of comeback which is required for Titans if they back into this game. बिल्कुल सतीश, और हालांकि पहले 2 ओवर में रन की गति काफी धीमी थी, 14 रन बनाए थे कलाकंदा ने, लेकिन उसके बाद शिवराम और महेश की पारी ने कलाकंदा क्रिकेटर्स को सीधे बुलंदियों पर जाकर खड़ा कर दिया और उसी तरीके की पारी की इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजों द्वारा कट्टे टाइटंस के, अगर उन्हें इस मैच में कमबैक करना है तो। और यहां पर पहले ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ गणेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा इससे पहले कि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर, सेकंड क्वालिफायर मैच ऑफ कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 is now progressing here, which proudly, and this tournament is now proudly organized by Vishal Cricketers Kodical in the celebration of their silver jubilee 25th year। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो इस श्रृंखला का दूसरा क्वालिफायर मैच
यहाँ पर खेला जाता हुआ 8 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गणेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुमन सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार सुमन के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर उनके पैरों पर टकराने के बाद, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। हर गेंद पर रन बनाना जरूरी इस वक्त बन चुका है कटे टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए, और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है कलाकंदा स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। यह गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त सीधी रफ्तार के साथ, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा। हर डॉट गेंद के साथ तालियों की आवाज, सीटियों की आवाज सुनाई देती हुई कलाकंदा के डगआउट से, जबकि हर रन के साथ कट्टे टाइटंस के डगआउट से तालियां और सीटियों की आवाज इस वक्त सुनाई देती हुई दोनों टीमों के समर्थक अपनी टीम का जोश और उत्साह यहां पर बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ। यह गेंद को इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद ड्राइव कर दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर गणेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गणेश एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुमन के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया, विकेट कीपर चुके रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच रन पूरा कर चुके हैं। 2 रन 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और 13 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका। इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच में कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का सामना करेगी। और यहां पर गेंदबाज गणेश की ओर की अगली गेंद, यह गेंद चिप गया मिड विकेट पर, इनटू द गैप। गेंद इस वक्त सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, और जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोक लिया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। गेंद अपने रफ्तार को खो चुकी थी टिप्पा खाने के बाद, और आखिरकार डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को रोक कर फील्ड कर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाज कमल इस वक्त कुल मिलाकर 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार। गणेश की गेंदों का यह गेंद चिप किया इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में काफी लंबा अंतर था, उस खाली अंतर को चुनते हुए इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला। लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे काफी वाइड और जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद, काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक वो पहुंच नहीं सके, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 19 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। बेहतर स्ट्रोक कमाल का, और सतीश इस ओवर में बने 12 रन, 12 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और मैं समझता अब straight away coming back to the equation, 56 minus 19, 37 more runs now they have to score for victory. 6 overs remaining, and the asking run rate is now coming down to exactly 6.17 runs per over. अब मैं समझता मैच में कुछ हद तक वापस आ चुका है यहाँ पर कट्टे टाइटंस, और 1 या 2 ओवर अगले बेहतर होते हैं उनके पक्ष में। 18 से 20 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह पूरी तरह कट्टे टाइटंस इस मैच में वापस आ सकता है। Absolutely, Gopi. The Kamal ka batting from Kamal. Absolutely, to 2 wonderful cricketing strokes which is played from the blade of Kamal in this particular over, Gopi. And the previous stroke, which is excellent stroke, isn't it? Nothing wrong with the line of the delivery, but the placement is so good, isn't it? You know exactly the mid-on is up in the circle, and it's the fielder in the deep. It's a wideish mid wicket, so he's just choosing that one quite beautifully. And rightly, Gopi, this is a really comeback over here for Titans. They got runs what they really wanted, and 12 runs came from that over, and 14, Gopi, comparison. The same stage, CS strikers are 14 after completion of over number 2. That means they're well ahead, isn't it? They well had 19, the 5 runs they had from the opposition, and that means they are right on the track of winning this match. If the same flow, they're going to continue what they left in the 2 of the power play. But game will going to change, Gopi, here. Game will going to change here onwards, because the power play is now completed. The fielders really going to spread. There's so many bodies out there in the deep. Getting the boundary is not that much of easy, and different technique, different game plan which is need to be implemented in the remaining 5 overs if they wanted to win the match. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर देखते हैं द रियल टेस्ट बिगिंस हियर फ्रॉम द बैट्समैन। और इस वक्त पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि
40 रन फॉर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। 5 ओवर में बनाने 37 रन और पहली गेंद इस वक्त डॉट हो चुकी है। गेंदबाज शिवराम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। फुल टॉस, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची गली पर, एक रन मिलेगा लेग बाय के रूप में। 20। अगर इस ओवर में शिवराम 2 विकेट प्राप्त करते तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। रोहित मोइली और विशाल कोट्टारा इनके द्वारा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज और विकेट नंबर 1 यहां पर मिल चुका है शिवराम के खाते में। तो यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, एक्स्ट्रा बाउंस गेंदबाज के लिए, टॉप एज पर गेंद टकराई, हवा में उछली और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को लपक लिया गया और शिवराम के खाते में विकेट यहां पर गिर चुका है। जैसा कि हम पहले भी फरमा चुके हैं, अगर 2 विकेट इस ओवर में शिवराम प्राप्त करते तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। 1 विकेट वो अब प्राप्त कर चुके हैं, आधा सफर वो तय कर चुके हैं और इस ओवर में कुल मिलाकर गेंदें बाकी है 3। अगर बचे हुए 3 गेंदों में एक और विकेट वो प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह 500 रुपए के नकद पुरस्कार का हकदार वो होंगे। और देखते हैं यहां पर वो बचे हुए 3 गेंदों में विकेट प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। इस बार सुमन सामना करने के लिए तैयार। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतर 3 गेंदें इस ओवर में शिवराम फेंक चुके हैं। सिर्फ 1 रन लेग बाय के रूप में प्रदान कर चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुमन सामना करते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद, हल्के से कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया, स्टंप्स को कवर करते हुए, पैर और बल्ले को एक साथ लाते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज शिवराम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, धनुष नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और शिवराम अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, सीधी रफ्तार के साथ कुछ उछाल लेती हुई, गेंद को हल्के मौके पर अंतिम मौके पर हल्के से स्टीयर करना चाहा था, चूंकि हर गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। कुल मिलाकर अब तक बेहतर ओवर साबित हो चुका है शिवराम का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अंदर की ओर आते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला बिना किसी जोखिम उठाते हुए बल्लेबाज ने, और गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी तेजी के साथ अंदर की ओर आई कि बल्लेबाज ने उतनी ही तेजी के साथ गेंद पर बल्ला लड़ाया, गेंद को रक्षात्मक तरीके से इस वक्त पुश कर दिया और 23 रन बच चुके 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 3 overs completed, 23 for 2 and 33 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 8.25 runs per over। तो बेहतर ओवर रहा सतीश, जिसमें सिर्फ 4 रन बने और इस ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूं कलाकंदा शिया स्ट्राइकर्स जो कि इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। 33 रन और बनाने हैं, 24 गेंदें बाकी, 9 का फासला है बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच। और मैं समझता हूं सतीश, इस अगर मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो कट्टे टाइटंस को इस फासले को मिटाना होगा बचे हुए 4 ओवर में। Absolutely, Gopi, that we're talking about the difference is 9 between run and ball. I don't think it's going to be a big difference, but difference here is that lost the wicket of Kamal in the previous over. That was definitely going to be a big breakthrough actually. Kamal is looking in such a good touch and is hitting the ball quite nicely, and losing him in the juncture I think might be the Titans are in the back foot, but they can bounce back, Gopi. They can bounce back, and out of these 2 batsmen, one have to take the risk of accelerating the run rate, because each and every dot ball that the asking run rate is climbing up. They doesn't want to do that. They wanted to bring that difference between bat and ball and run, and then only they can reach the target. बिल्कुल सतीश, फासले को इस वक्त घटाना होगा दोनों बल्लेबाजों में। एक बल्लेबाज को इस वक्त जोखिम रिस्क उठाना होगा आक्रामक स्ट्रोक खेलने का, और यहाँ पर उछाला था, जोखिम उठाया था, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं सुमन द्वारा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 25 रन बन चुके हैं। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन ठीक तरह से नहीं, और लॉन्ग ऑफ पर गेंद जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है यहाँ पर गणेश का, जिसमें सिर्फ 3 रन पहले 3 गेंदों में सिंगल्स के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं। कुल मिलाकर 30 रन और चाहिए, 21 गेंदें बाकी, 30 रन टू गेट इन रिमाइनिंग 21 बॉल्स। सुमन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रन
टर्न पर 2 विकेट के नुकसान पर. It's 27 for the loss of 2 wicket. 29 to get now from 21 balls. और 2 विकेट इस ओवर में गेंदबाज प्राप्त करते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें. ये गेंद इस बार सिलमी राउंड पर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में और गेंद जब तक वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 28 2 विकेट के नुकसान पर. कुल मिलाकर उनकी पारी का चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर. 2 गेंदें बाकी हैं. गेंदबाज गणेश के दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुमन के लिए लेग स्टंप पर आती हुई पैरों पर टकराई गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर. जब तक गेंद पर फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 29-29 एक गेंद अब बाकी इस ओवर में. जस्ट 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. चौथा ओवर प्रगति पर उनकी पारी में. गणेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. सुमन सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद उछालना चाहा बैक लेग पर टकराई लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सही तरीके से अंपायर श्रीरज ने इस अपील को सही तरीके से नकार दिया. 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्त. Exactly 7.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. 26 to get in remaining 18 balls. The difference remains the same, 8. और द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 8.66 रन पर ओवर. और सतीश यहां पर कम बैक करना जरूरी है. इस ओवर में 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह यहां पर कट्टे टाइटंस कम बैक कर सकता है. लेकिन जहां तक कलाकंदा शिया स्ट्राइकर्स का सवाल है पिछले 2 ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजों ने की है 2 गेंदबाजों ने उसी तरह की गेंदबाजी इस ओवर में या अगले ओवर इस ओवर या अगले ओवर तक गेंदबाज बरकरार रखते हैं सिया स्ट्राइकर्स के लिए तो निस्संदेह कट्टे टाइटंस के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा. कुल मिलाकर ऐसा करना पड़ेगा. तख्ता कलाकंद सिया स्ट्राइकर्स का भारी लग रहा है लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त कट्टे टाइटंस के लिए. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Exactly, Gopi. And just like we were mentioning about, of course, the opportunity is still left for the chasing team Titans to bounce back this match. And just rightly, Gopi, it's every team's dream is to come into the finals and to play the prestigious finals of Kodical Premier League Season 3. For that, needed some hard work from the batting. Here is outside and off tempo across the line. He wanted to swing that one. Here is also opportunity for the bowler. If he able to pick 2 wickets, he will going to get 500 rupees. And that's what Vishal Kotara as well as Lohit Moile encouraging the bowler. This time he left it by the switching. The fielder has the right position. Can you believe this? This is what the supporters of Sia Strikers Kalaganda wanted to see, but what the fans of Titans doesn't want to see that when he took the position to play the reverse stroke, everything looks fine, but placement is not that much of fine enough to get past the fielder, and unfortunately he's got a connection, but he didn't got that much of placement what he's looking for. And wicket number 3 is back into pavilion of Katte Titans. Looks like they're in deep in trouble. And just like my friend Gopi is mentioning about that bounce back is still, I think, left for Titans if they bat well. And the difference which is now going towards 9 or 10 runs between run and ball, that is definitely going to be a huge difference. But that difference will going to be decreased only when the batsman is able to get the distance. In the sense, if they are able to get some big strokes, boundaries and sixes, which is really required in each and every over if they wanted to back in this game. And already the one team which is qualified for the final, just waiting for the winners of this match. Of course, the dream of these both the teams to qualify the final, but a dream does not become reality through magic. It takes a sweet determination and hard work, and so far a lot of hard work here from the batting side, but still not enough. It's still not enough. They have to carry the business. They have to work hard from the batting if they wanted to win the match. But it's a lot of hard work is coming here from the bowlers of Sia Strikers. So far, they are looking in a driver's seat of winning this match. 31 for the loss of 3 wicket. Another 25 more runs required for the victory. The new batsman Mohandas, technically very sound player, the classical player, will going to face next delivery from the bowler Shivaram. This time what we are talking about, technically very sound, as a Mohandas straight away is off the mark. He is the one, he's got a lot of experience. He is represented Hanuman cricketers for 1 or 2 years, and I'm still I also played along with him. He's a very good player actually, very cool customer, and his job is to pick the single and give the strike as much as possible to his partner. But this time excellent delivery indeed, and it's right across the line of the delivery.
tried to swing that one, but missed it completely from his bat. The wicketkeeper behind the stump. Again, Guru Prasad, he's got a very good tournament actually from the bat, and he won behind the wicket as well. He just uprooted the stump, giving some little bit work here for square leg umpire Sriraj. And now it's equation, that a little bit correction, that the comparison and equation looks like they're in upper hand. The opposition team, CS Strikers, are in the upper hand, 32 for the loss of 3 wickets. Still they have to get another 24 runs to win this match, but deliveries is remaining only 13 balls. 13 balls, they have to get 26. That means each and every ball required 2 runs here onwards if they wanted to back in this game. This time I went for the reverse stroke, not quite getting hold of that one properly. Mistimed reverse stroke, but managed to rotate the strike, keep the strike. Excellent over there from Shivaram. The over which is really required for CS Strikers in this situation. Now, coming to the last 2 overs of the innings of Titans. And 33 for the loss of 3 wicket and 5 wickets back into pavilion. The remaining 2 overs, 12 balls, and they have to get another 23 runs to win this match. And looks like Gopi, slowly the Titans is sinking towards the sea, just like the very popular Titanic movie. I still remember the ship which is sinking. Here is the Titans, looks like a little bit sinking out here. And the question raising is how well they're going to come out from this trouble. बिल्कुल सतीश, टाइटन इस वक्त सिंक जरूर हो रहा है, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। मैं समझता हूं एक या 2 करारा स्ट्रोक चौके या छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होते हैं तो टाइटन का टाइटैनिक डूबने से बच सकता है। और यहां पर देखते हैं बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, उम्मीदें बरकरार हैं और मैं समझता हूं निस्संदेह 1 या 2 चौके या छक्के उन्हें इस मैच में वापस जरूर ला सकते हैं। Absolutely, Gopi, that 1 or 2 big shot can lift the Titanic ship from not to fully sink into the sea, deep into the water. And but the work is going on, hard work is going on, but result is not coming here for the batsman. And he from the far end, right arm over the wicket, Bhagwan, captain of the side, 500 rupees for 2 wickets. Again, is looking for the drive, chance for the fielder to take the comfortable catch. And 1 more wicket is fallen here, and Titans look like they're in a deep trouble. 33 for the loss of 4 wickets. Bhagwan, the captain of the side, picking up the wickets, and just a big difference between these 2 teams is that sheer strikers, they got all-rounders. And just look at the bowling figure of Shivaram. 2 overs, 7 runs and picked up 2 wickets, and he got 15 runs from the back. This is what we're talking about, the difference. Bhagwan, captain of the side, came in the slog overs, scored a very quick fire, 10 runs in just 5 deliveries. Then he came into ball, picked up 2 wickets. This is a big difference between these 2 teams, that the better all-rounders in the side of CS Strikers. बिल्कुल सतीश, ऑलराउंडर्स जिस किसी भी टीम में ज्यादा संख्या में मौजूद होते हैं उस टीम के लिए हमेशा बेहतर होता है। और यहाँ पर जैसा कि आपने उदाहरण दिया, शिवराम न सिर्फ बल्लेबाजी में 15 रन बनाए, जबकि विकेट भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने प्रदान किए। तो इस तरीके की ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, सव्यसाची प्रदर्शन निस्संदेह टीम के मनोबल को हमेशा लिफ्ट करता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है एक्स्ट्रा क्विकर गेंद के जरिए। अब मैं समझता हूँ सतीश 33 रनों पर 5 विकेटें गिर चुके हैं और विजय की उम्मीदें इस वक्त काफी हद तक कम हो चुकी है। Absolutely, Gopi. Not only the Bhagwan picked up 2 wickets, but 500 straight away into the pocket, isn't it? And Vishal Kotara as well as Lohit Moili sponsoring that 500 rupees for 2 wickets, and already Bhagwan picked up 2 wickets for the 2 consecutive deliveries and putting Titanic ship deep into the sea now. And now I think it's very difficult for Titanic to bounce back, to come back. But come back in the sense still there, as Bharat just walking towards the middle with a lot of confidence that he can change the complexion of the match with the 2 big shots. If Bhagwan picked up 3 wickets in this over, he will going to get 1,000 rupees, extra 1,000. 3 already taken, so that he got 1,000 rupees. This time appeal for caught behind, but umpire unmoved rightly, so it's after ball is grounded, then ballooning up in the air. That's what umpire Sriraj, experienced umpire Sriraj, and even umpire Shukalag umpire Roland Pinto also is not
convinced with the appeal and says not out. 33 for the loss of 5 wicket. Bhagwan. Right arm over the wicket. Desai Bharatraj lofted, but placement is not good enough to get past that fielder. As a fielder in the deep long on, collected the run after one bounce. Just a single for Bharatraj. Scoreboard 34 for the loss of 5 wicket. Jugglers Kodical is sponsoring that 1,000 rupees for the 3 wicket for Bhagwan. What a fantastic tournament he's got as the captain of the side, leading from the front. Again, just using his feet, but not quite able to get the placement right. Defects the fielder, fields the ball. Excellent over there from Bhagwan, the captain. Really performing a captain knock. There will be a certain chance of extra runs, but both the batsmen are not interested. And over number 6 completed, chasing 56 to win this match. Still they are in a deep trouble. 21 more runs required for the victory in the last over. So 21 runs required to win the match. And the other day, Gopi, just going back to the IPL, and that was the qualifier number 1, when it's 16 runs required for the last over. And I think Gujarat Titans, David Miller, is completed a match with the 3 sixes. Can it's possible here in the KPL to getting 21 runs in the last over, Gopi? जरूर पॉसिबल है सतीश. क्रिकेट में कहावत है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज. जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए कुछ भी कहना मुश्किल है. और यहाँ पर रन्स बनाने हैं अंतिम ओवर में 21, और 21 रन बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं है. और 2 या 3 छक्के पहले 2 या 3 गेंदों में गिरते हैं, 3 छक्के पहले 3 गेंदों में अगर गिरते हैं तो स्ट्रेट अवे 3 गेंदों पर 3 रन बनाने होंगे बाद के. तो यहां पर जरूरी है कि पहले 3 गेंदों में 3 छक्के गिरने होंगे. और यहां पर देखना यह है कि 3 छक्के पहले 3 गेंदों में मारने के लिए गेंदबाज, माफ कीजिए, बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाते. फिलहाल लक्ष्य कुछ हद तक, काफी हद तक कठिन इस वक्त है. Absolutely, Gopi. And Nitin lofted that one, but straight to the hands of mid-wicket. Just like my friend Gopi is mentioning about, the first 3 deliveries going to be very important. They have to get a big stroke, and of course he's tried for that, but not quite enough to beat the fielder in the deep mid-wicket. And wicket number 6 is back into pavilion, and it was absolutely a domination performance. It was a really dominated performance here from Sia strikers Kodical. They absolutely, Gopi, they defeated in all 3 departments, isn't it? The fielding, the batting, and even in the bowling as well. That's why they are looking in the top. And now I think the opportunities looks to be a little bit difficult one here for Titans to win the match. Having some lower order batsmen have to complete the job. But I think 5 balls, 21 runs to win this match. Will it going to be a possible? Bharatraj, and he's the one, he can deliver some big shot. This time lovely delivery, but appeal for leg before we get a chance of run out here in the no strikers, and bails are off. But now this is what you call the presence of mind. The bails are off, Gopi, and quickly the fielder realizing that just hitting the stump is not enough. We need to uproot the stumps if we wanted to get the result. He just uprooted the stumps, and batsman back into pavilion. 35 for the loss of 7 wicket in the over number last in progress, and it's a last opportunity, and 4 sixes which is required. 4 sixes takes the match score into 24, but required is 21. And even I think 3 sixes and 1 boundary will go into do the job. It's not necessary that all 4 deliveries required 4 sixes, but 3 sixes and 1 boundary, which is badly required for Titans to win this match. This is what now we can see that dugouts of Sia strikers, they already started to celebrate here. Why not? Unless bowler making no mistake, bowling no balls and wide balls, no one can stop Sia strikers of this big final, the mega final of this Kodical Premier League Season 3. Again, right arm over the wicket, delivers lovely delivery. Look at the deviation from the bowler. This is a very difficult one for any batsman. The caliber, the technique, the quality of batsman, it's definitely going to be very difficult when you're having that kind of deliveries, that kind of line and length. It's always the difficult one. Now 2 balls remaining for the celebration for the Sia strikers. Kalakanda, 21 more runs required for the victory in just 2 deliveries. Nitesh balls again, lovely delivery, quicker one. Bharatraj completely missed out that delivery. Last ball, 20 required for the victory.
What a fantastic performance here from CS Strikers. They lost the first qualifier number 1 and they got a second chance, but second chance doesn't want to miss. They doesn't want to miss the opportunity to qualify for the final of this prestigious cricket tournament, and they are almost standing in the edge of that line of the victory, and just a single delivery which is required for the celebration of CS Strikers Kalakanda to qualify for the finals of this prestigious KPL Season 3. Right, over the wicket delivers. Again, that was looking for the reverse stroke. That's it. The celebration begins. Everyone now of the supporters, fans, the franchise, the coach, everyone happy with the performance. It's a highly dominated performance, and they defeated Khate Titans with a big margin of 18 runs, and they qualify for the finals, the mega finals of prestigious cricket tournament. And a handshake here from the batsmen and as well as the players of CS Strikers Kalakanda. Congratulations. Of course, this is one of the part of cricket, whatever the result may be, but congratulating after the match is so important. That will going to lift the spirit of cricket, what the cricketers want to see. And here is our congratulations coming from both the teams, and umpires are walking towards a pavilion for the big final now, the waiting. And two teams which is qualified for the mega final of this Kodical Premier League Season 3 is Kodical Create Challengers will going to take the challenge of CS Strikers Kalakanda. We'll take a short break, and after that short break we're into the mega final. Thank you very much. Time to announce the man of the match before that. So now time to announce the man of the match. It's a very difficult one because the two players, all-rounders of CS Strikers really performed very well, because they both are actually deserved for the man of the match. But we have to select one out of that two. As well, sometimes it's difficult for the selectors because everybody knows that Bhagwan bowled well and is batted well. Even I think Shivaraj is also batted well. He bowled well. But as looking at the bowling figure, the economy rate of these two bowlers, Shivaram bowled 2 overs, conceded just 7 runs and picked up 2 valuable wickets. The economy rate is 3.5 and Bhagwan's economy rate is 4.5. He picked up 1 extra wicket, 3 wicket, but 5 extra runs in the account of Shivaram. So that it's going to be a Shivaram is a man of the match. Shivaram of CS Strikers Kalakanda is judged as the man of the match, Shivaram, for his wonderful performance. I request Shivaram ದಯಮಾಡಿ ಕಲಕಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ NFC ಉರ್ವ ತಂಡದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಭಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ AVFC ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಔಟ್ ದೇರ್ and Shivaram, what a fantastic tournament he's got, and Bhagwan is a very very happy captain as receiving a cash prize from the president of AVFC for his wonderful performance. 1,000 rupees cash as well as 500 rupees for Shivaram, and they deserve the place in the big final, mega final of this prestigious cricket tournament. Thank you.
It is announcement for the final match. The final match played between 8 overs. The 4 bowler has been bowled. The toss will be going on 4:25 and middle of the pitch. For the players also coming forward lines of 4:25. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಮಗಿಯು 4:25ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಖಂಡ ಆಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಮಗಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು 8 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 8 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ 8 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
for the final toss, of course, with the presence of our chief guest. At the same time, I request the owners of both the teams, please present. ಎರಡು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೆ ನಾಯಕರು, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ, ತದನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ರ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 8 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, we have Nandan Kulshekar. So warm welcome for Nandan Kulshekar for this final match. And before the final match, there is a final toss will go into start. And I request all the chief guests please presence in this very historical moment of this cricket tournament. The finals, the mega finals of this prestigious Kodical Premier League Season 3. ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜಿನಮಗೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸನತ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ for the introduction of the players as well as for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ supporter of Andhram cricket.
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿರವರೇ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅನನ್ಯ ಚುಂಬಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶಾಖ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KPL ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಕಂಡ ಸಿಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು UCG ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ KPL ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಆವೃತ್ತಿ 3. Ready. Mr. Aspak, please report here. Mr. Aspak, umpire calling for you. ದಯಮಾಡಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So welcome back for the mega final, and it's a big moment out here. The big moment of this Kodical Premier League 2022 Season 3, and umpires walking towards the middle. Here is Arish Padil and Shiraj for the mega final, and two teams which is qualified for the mega final, and two teams did a great job in league matches as well as the playoff round, and they deserve the place in the big final. And the two teams which is qualified for the final is Kodical Create Challengers under the leadership and captaincy of Sandeep, as well as another team which is came into the big final, Sia Strikers Kalakanda. The captain Bhagwan did a great job to taking his team into the finals, and I request the captain of
Yes, captain of Create Challengers, Sandeep, please report here. Please report to our organizers. Maybe they're talking about that final match, the rules and regulation. And Gopi, just coming back to this, the big final. And one team which is unbeatable so far, that is Create Challengers. So far, they're not really faced any defeat in this match. And coming back to the another team, they faced only one loss, that was in the qualifier number 1. And the same team which is they are facing in the big final as well. And coming back to these two teams, Gopi, and both the teams, certainly they are so good, and they got some good leaders actually. And leaders, in the sense, Gopi, they are the inspiration for the other players. Whenever the captain performs, and all in sudden, there is inspiration for the other players, because captain leading from the front is performing, and that's why both the captains is very important here to perform in the big final if they wanted to become the champion. बिल्कुल सतीश, इस फाइनल मैच में कप्तानों को पहले अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन देना जरूरी है। जैसा कि आपने फरमाया, अगर कप्तान बेहतर प्रदर्शन देता है तो दूसरे खिलाड़ियों के लिए वो इंस्पिरेशन कहलाता है। जैसा कि आपने कहा, दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो ग्रैंड फिनाले मैच में जो कि कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स और कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स जो कि टीम भिड़ रहे हैं, और कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का सवाल है, जैसा कि आपने कहा, अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। और सिया स्ट्राइकर्स का जहां तक सवाल है, एकमात्र हार का उन्हें सामना करना पड़ा था सेम कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के सामने। तो यहां पर निश्चित रूप से उस हार का बदला इस फाइनल मैच में वो लेना चाहेंगे। लेकिन कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के खिलाफ अगर उन्हें खेलना है तो निस्संदेह बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इन तीनों डिपार्टमेंटों में कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें खेलनी होगी। और देखते हैं किस तरीके से वो कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का सामना करते हैं इस फाइनल मैच में। और जहां तक कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का सवाल है, अनडिफीटेड टीम इन दिस टूर्नामेंट, अजय अभियान को बरकरार रख चुका, और निस्संदेह एक और पड़ाव इस वक्त बाकी है उन्हें इस श्रृंखला में अपने अजय अभियान को पूर्ण करने के लिए। और इस फाइनल मैच को भी अगर वो जीत लेते हैं तो निस्संदेह कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इस श्रृंखला का चैंपियन वो कहलाएंगे। और मैं समझता हूं जहां तक विजय का सवाल है इस श्रृंखला का, तो दोनों टीमें संतुलित है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट में तीनों में दोनों टीमें संतुलित है। कुछ बेहतर खिलाड़ियां दोनों टीमें में मौजूद है। और विजय की संभावनीयता का जहां तक सवाल है, 50-50%, इट्स गोइंग टू बी 50-50 इन दिस फाइनल मैच, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड बैटल इन दिस ग्रैंड फिनाले मैच। Absolutely, Gopi. And meanwhile, there is, of course, in our main stage, there are so many dignitaries out here in the stage. They're enjoying the big final. And on view for Vishal cricketers, Kodical, and certainly it's a warm welcome for Vishal, a little correction for Nandan Kulshekar. And I request the president of Vishal cricketers, Kodical, Abdul Kader, please welcoming him by presenting memento for Nandan Kulshekar. And he will just honoring him, welcoming, and that was really good to see that Nandan Kulshekar is the one who is leading from the front, especially when you're going into the social media. He is the one, he is leading from the front, he is having encouragement for the half lift of underarm cricket by encouraging each and every players with his own style. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, we are back to this big final, the first ball of the mega final. Bhagwan right above the wicket delivers, and first ball itself, Alfaz a little bit played that one in there, but played it one in the gap between square leg and mid wicket, and he got a couple of runs. A positive start here from Alfaz. He got a couple of runs. That's what he required here. And again, we want to remind to the players, the batsmen, if any players will going to hit that advertisement board, that is Shreyas Kalakanda banner, and this time appeal for a caught, direct, it is gone. It's a lazy running between the wicket, and Alfaz pays the penalty for that. It's a presence of mind here from the fielder. Look at that. The crowds, the supporters started to encourage their players, and suddenly it's a Sia strikers Kalakanda got a big wicket.
The electrifying atmosphere out here in this UCG cricket ground for the big final. Look at that one in the screen here. One of the supporter is so excited to see that the wicket of Alphas back into pavilion. He's just dancing and enjoying that wicket in his own way. And that's what the cricket is all about, isn't it? Underarm cricket, definitely they got the supporters and the supporters definitely will going to enjoy each and every wicket taken by their the favorite bowlers. Again, the Bhagwan picked up a wicket, not to his account, but certainly the first wicket for his team. And the fielder at square like Ganesh, it is shy at the stumps, and Alphaz is not in the picture at all when the bails are off. And due for the loss of one wicket. Bhagwan bowling from the Birvir Kulla end, right arm over the wicket, a full toss delivery, that was a punishable one, and the batsman Prithviraj couldn't manage to take the advantage of that full toss, and this is not really the opportunity. I must say the power play overs when it's a full toss is offered, you need to grab the opportunity to deliver that one into the gap to get some good score, and again outside the line of leg stump but well within the reach of the batsman, and one more dotted delivery. So Bhagwan, being the captain of the side, is always leading from the front. He's the inspiration. Already we have mentioned about both the captains, those who are in the final, they performed from the ball and from the bat. Oh my goodness, there's an appeal for caught behind, but umpire not interested, rightly so, because ball is after grounded, then ball ballooning up in the air, and short touch, third man fielder takes that one, but no question of out there, and rightly so, umpire unmoved. So score remains on 2 for the loss of one wicket. As per the rules and regulation of this particular final is concerned, if there is something will going to interrupt this match, something in the sense of the rain, if we're going to interrupt, but match will not going to stop. The match will going to continue, and this time is goal Bhagwan. It's a dream start from the captain of Sia Strikers. 2 wickets in the first over. They're in the deep trouble now. Thank you for the entertainment. Of course, the supporters of Sia Strikers, Kalakanda, they're on their feet. Why not? Picked up 2 valuable wickets in the first over, and it's a dream start, isn't it, Gopi? 2 runs and 2 wickets, just like I mentioned earlier before start of this big final. I just mentioned about captains always leading from the front. They are the inspiration for the other players, and getting such kind of start from the first over, Gopi, certainly they're in upper hand in the first over. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा, जब कभी भी कप्तान अपना बेहतर निर्वहन देता है तो बेहतर प्रदर्शन देता है तो निस्संदेह वो दूसरे कप्तानों, दूसरे खिलाड़ियों के का मनोबल बढ़ जाता है। और यहाँ पर पहले ओवर में जो शुरुआत दी है भगवान, जो कि कप्तान है सिया स्ट्राइकर्स के, तो इस तरीके की शुरुआत निस्संदेह आने वाले गेंदबाजों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ाएगी। 2 रन 2 विकेट पहले ओवर में, और जो उम्मीद अपेक्षा की थी, स्वयं कप्तान भगवान ने बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत की, वो बेहतर शुरुआत वो खुद गेंदबाजी में अपने जरिए यहां पर दे चुके हैं। और निस्संदेह सतीश, गेंदबाजी की बेहतर शुरुआत इस वक्त गेंदबाज भगवान ने की है। Exactly, Gopi, and Bhagwan has got a dream start now. Ganesh will go and continue from the far end. This time, lovely shot, single-handed stroke, and ball is carried to the field, and that wide is long on. The wicket number 3 is back into pavilion. Now it's a competition between run and wicket here. What a dream start here for Sia Kalakanda. Absolutely, they're striking the wickets of their opposition. So what a fantastic start here. 3 wickets for just 2 runs, and what a good catch taken there by the fielder at wideish long on. Absolutely very good run he made, and moving to his right very quickly and takes a wonderful catch. Now 2,000 rupees cash for
back-to-back 2 6s. That's only for the batting side, I think, for create challenges, which is announced by Ratish Raj, and he's just enjoying the big final, mega final here in our commentary box, and just supporting, encouraging his favorite team. Ganesh from the far end, right arm over the wicket delivers, and Palos back drive, a good piece of fielding there from Ganesh, trying for the run out, but no question of run out in dedication. That was a fantastic piece of the bowling there by Ganesh. He's not exactly the kind of bowling which is required in this mega final. Now, I think another announcement, 3 wickets, if any batsman will going to get, and you get 1,000 rupees, which is announced by ABFC, the president Ganesh, announcing there's 1,000 rupees for the 3 wickets by any bowler of CS Strikers Kalakanda. So one more dotted delivery, the start which is needed in the big final. We are not having that much of a good start, but captain himself walks to the middle. Lovely shot, beautifully driven. That was an imperious cover drive towards the deep cover point boundary for 4 runs. Just breaking the shackle, and look at the stroke there from Prashant. I want to see it in the replay because this is such a delightful stroke to watch. Look at that one, little bit outside the line of off stump, and batsman stretching his front foot to the line of the delivery, and look at that beautiful square cut. Absolutely magnificent stroke to get the boundary. Then scoreboard now moves on to 6 on the board. 6 for the loss of 3 wicket, and again right arm over the wicket delivers. Again, that was a sensible batting, absolutely sensible batting here from the batsman Prashant. I still remember he's played one more good innings in the early morning, the first or second match against Kodical Indians. The same man Prashant played some glorious extra cover and cover drives, and just is continuing that strokes in this big final as well, because his team is in deep in trouble. Actually, they lost the 2 wickets for just 3 runs, and along with the captain, they need to anchor the innings, isn't it, Gopi? They need to anchor the innings because they got a shackling start, and they lost 2 wickets for just 3 runs. Now captain Sandeep will going to face. That was a really sensible batting. That was intelligent batting there from Sandeep, quickly realizing that he won the power play is on, but the situation asking him to play that defensively, and he made a single, and he's off the mark with single. 2 overs completed. After completion of over number 2, it's 8 for the loss of 3 wicket. And Gopi, straight away coming back to this match, 2 over of the power play, and it's unusual to see the scoreboard. One stage is 2 for 3, now it's 8 for 3, and I think they need to rebuild the innings. They need to construct the innings, because after losing 2 wickets in the first over, and the Sandeep and the Prashant need to reconstruct the innings. It's not easy, because after losing 2 power play overs, the remaining 5 overs, they not only they need to build the partnership, at the same time they need to accelerate the run rate. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर एक साझेदारी की इस वक्त जरूरत है। 3 विकेट पहले 2 ओवर में गिर चुके हैं। पहले ओवर में 2 विकेट गिरे थे, दूसरे ओवर में 1 विकेट गिरा। कुल मिलाकर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज संदीप और प्रशांत जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आन पड़ी है कि एक साझेदारी यहाँ पर निभाए। सेंसिबल क्रिकेट के जरिए वो यहाँ पर उन्हें साझेदारी निभानी है और एक टीम को बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करना है। और संदीप के पास अपार अनुभव है, इससे पहले भी ऐसे हालातों का कई बार उन्होंने सामना किया है, और यहाँ पर इस मैच में उनके ऊपर बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी आन पड़ी है कि कप्तान की पारी वहां पर खेले प्रशांत के साथ मिलकर और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सके। देखते हैं ये दोनों बल्लेबाज लंबी साझेदारी निभाने में किस हद तक यहाँ पर यश प्राप्त करते हैं। Absolutely, Gopi. And now it's first delivery of the over number 3rd is started as Shivaram bowls right arm over the wicket, delivers. This time again Sandeep looking for the square cut, but not to cut, getting hold of that one properly. So one more run is added total for Sandeep and as well as his team. And now it's 3,000 now, increasing, and going towards a 5,000 for the hat-trick, 3 wickets for any bowler of CS Strikers calendar. They will going to get 5,000 rupees from Vishal Kotara and Rohit Moile announcing that cash prize. Shivaram, right arm over the wicket, delivers. That was sensible, absolutely sensible bowling performance there from Shivaram, seeing that Prashant wanted to play the switch it and just changing the line and bowled quite beautifully down the leg stump and defeat the bat of Prashant. Shivaram, right arm over the wicket, oh beautiful, absolutely, it's unplayable, and it's a peach of the delivery there from Prashant, and
Prashant, who known as a technically very sound player, but he's not really having any answer for that delivery. Look at that one delivery from Prashant, the way that he bowled, the ball pitching in the middle stump, little bit deviation, and Prashant thought that it might be the big leg cutter, but a slight deviation in that delivery, and batsman has got no clue at all in that particular delivery. And such kind of dismissal is Gopi. If you go to that international cricket, Anil Kumble is a master of doing that the dismissal, because he is not a spinner, he is not a fast bowler, he is not a medium fast bowler, but he is a different kind of spin bowler who is not having a big spin in his bowling, but bowling some slight deviation. He getting a lot of wickets in international cricket. Same kind of delivery in non-run cricket as well from Prashant. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जो अनिल कुंबले जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, फ्लिपर उसे कहा जाता है, फ्लिपर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें कई विकेटें उन्होंने उखाड़े, और यहाँ पर उसी तरीके की गेंदबाजी, गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा रेस हुई, उछाल ली, अपनी रफ्तार को वृद्धि की, और आखिरी मौके पर इस तेजी को बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। इससे पहले के बल्लेबाज उस गेंद पर खेले, गेंद उनके बल्ले को वंचित करते सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराए। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी सतीश जो पिछले गेंद पर गेंदबाज ने की है। Absolutely, that was the beauty of the delivery there from that was a japper, absolutely japper there from Shivaram. That was unplayable delivery, because that kind of a line will go into confuse the batsman whether to go for the front foot or back foot. That was really good line to ball to the right-hander batsman. Again, Shivaram bowling with a shot on off right arm over the wicket. Delhi was, look at that one, absolutely. Even Sandeep, he's got a lot of experience behind him, but still he is just searching for the ball, where the ball is going, and he missed it completely from the bat. And after completion of over number 3, it's a 10 for the loss of 4 wicket. And a warm welcome for Mr. Vishwanath, the proprietor of Kavya Studio, is a professional photographer and my close friend, my long time the friend as well. So he is a professional photographer, and so far in this particular tournament he is of course presence in the inaugural ceremony as well, and now he's came to that closing ceremony as well. So on behalf of Vishal cricketers, Kodical welcoming him and for this mega final of Qualifier Premier League Season 3. Warm welcome to Kiran Kumar Kodical as well. He is already appeared here. He's just enjoying the game of cricket right in our the main stage, right of our commentary box from the far end. Right above the wicket delivers. Nice looking drive towards the cow point region and they're just settled for the single. Now both the batsmen are realizing that they lost 4 wickets, and more than hitting the ball, just they wanted to rotate the strike. At least they wanted to get 40 plus in this big final. This is 8 overs game. This is not a 7 overs game. It's a long time. Plenty of time for the batsman to settle down and get some good score here. Oh, behold him! Clean him up! Ganesh has got a dream wicket. The captain of Create Challengers departs. What an electrifying atmosphere out here in this UCG ground. It's a really good sign of KPL Season 3, and entertainment and entertainment and entertainment in the big fine, but not that much of entertainment in the dugout of Create Challengers Kodical, because they lost half of the wicket back into the pavilion, and more than anything else, the captain himself walks back to pavilion. That means they're in a serious problem, isn't it? 11 for the loss of 5 wickets. And just like I mentioning earlier, the Sia strikers, they got a fantastic bowling department, and they're dismantling the batting department of their opposition so far. Again, pedal that one, Sumit, down to short fine leg division before the fielder from deep backward square leg to run across to field the ball. The ample time for the batsman Sumit to pick the couple of runs here, and with that couple of runs, scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of a 5 wicket. Ganesh, so far he's got a wonderful tournament from the bat and from the ball. He's a leading wicket taker. He's in the hunt as a leading wicket taker along with the Sumit is now facing the ball. This time appeal for leg before wicket. They're appealing and appealing, but umpire Harish Patel is not on board, rightly so, because the bowler Ganesh is not really learning from the mistake, because he is coming right in front of umpire. After that, after he delivers a ball, the follow through is not good. He is bowling right, he is coming right in front of umpire Harish Patel, so that umpire Harish Patel not interested to raise his finger. Now again,
Ganesh, right arm over the wicket delivers. Nicely driven, right in the gap towards the deep extra cover. And a little bit fumble from the fielder. The batsman's grabbing the opportunity to come back for the second. And they complete it quite easily in the end. With that couple of runs scoreboard, Namuzanto 16 for the loss of 5 wicket. Slowly and steadily, these two batsmen really wanted to build a partnership. Is so important here for create challengers. To have to bat well. Lovely shot, beautifully driven. That was a wonderful shot there from the batsman Prajwal. And in the previous 2 matches also he played a very good cameo and helping his team when the team is required some runs from his bat. So 4 overs completed. After completion of 4 overs and after winning the toss, surprisingly elected to bat first. Create challengers are a little bit struggling in the middle. Didn't got that much of runs in the board. At the same time, the half of the wickets, that means 5 wickets, top order 5 batsmen are back into pavilion. And now I think really testing time here for the batsmen of create challenges, how well they managed to complete their remaining 4 overs and they got only 5 wickets in hand, but still they got opportunity to bounce back in the remaining 24 deliveries. And wait and see how they will going to come back, and wait and see how well create challenges, how well CS strikers will going to continue that bowling attack what they did in the first 4 hours. So before the next over going to commence, it's time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further description of the match in our national language Hindi. And Gopi struggling 17 for the loss of 5 wicket, but still Gopi, it's a 8 overs format game. And opportunity is still there here for the create challenges to back into this game with some good runs. But problem here is top fired batsmen. Top order batsmen, 5 wickets back into pavilion, and now little bit hard work which is required in the middle order of the batting department of create challengers. एग्जैक्टली सतीश, इस वक्त हार्ड वर्क की जरूरत है क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं सिर्फ 17 रन पर, और ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है अब तक 6 रन बटोर चुके हैं 6वें विकेट के लिए प्रज्वल और सुमित। और इस बार गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और यहां पर सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए एक इनाम घोषित किया गया है। कोई भी गेंदबाज अगर अपने 2 ओवर की कोटे में 3 विकेटें प्राप्त करता है तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। तो इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कदमों के सहारे गेंद को फ्लिक कर दिया, शॉट फाइन लेग पर, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। एबीएफसी इनकी ओर से 1000 रुपए का नकद पुरस्कार 3 विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज को इस वक्त घोषित किया गया। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए गेंद ओवर पिच, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। सेंसिबल क्रिकेट की यहां पर जरूरत है और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज प्रज्वल जूनियर और सुमित जानते हैं कि उन्हें इस वक्त क्रीज पर जमना है, अपने टीम को रन बनाने हैं। और इस बीच अपील होती हुई कॉल पॉइंट के लिए नकार दिया अंपायर ने, और इसी के साथ अंतिम क्षण में सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। 5 ओवर की समाप्ति, 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है गेंदबाज भगवान का, और एक बेहतर स्पेल उनका खत्म हो चुका है। 3 रन इस ओवर में बच चुके हैं 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज यहां पर संघर्ष करते हुए। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और जहां तक सवाल है तीन ओवर का खेल बाकी। अगले हफ्ते सह्याद्री कॉलेज पर एमएलए प्रीमियर लीग खेला जाएगा। 8 प्रतिष्ठित एमएलएओं की टीम इस श्रृंखला में हिस्सा लेगी। लीग दौर का मैच, और वो मैच यहां पर माफ कीजिए सह्याद्री कॉलेज पर 28 और 29 यानी इस शनिवार रविवार को खेला जाएगा। सह्याद्री क्रिकेट
सह्याद्री क्रिकेट मैदान पर। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इस मेगा श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच यहां पर प्रगति पर इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी पारी को संवारने की कोशिश में 10 रन अब तक जोड़ चुके हैं छठे विकेट के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा एक कसी हुई गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार उछाला है गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को वो लपकने में सफल। सुमित बल्लेबाज थे जिन्होंने गेंद को उछाला, काफी उम्दा, काफी ऊंचा, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। तो 10 रन की साझेदारी बनी और छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। और मैं समझता हूं ये विकेट एक बार फिर से कहना पड़ेगा कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स को मुश्किलों के दलदल में ढकेल चुका है। 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर 4 विकेट सिर्फ अब उनके लिए बाकी। और नए बल्लेबाज के रूप में इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में प्रज्वल सीनियर इस वक्त मैदान पर उतरते हुए हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया विशाल कुटारा और रोहित मोइली इनकी ओर से। और जहां तक सवाल है गेंदबाज इस वक्त तैयार, हितेन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और प्रज्वल जूनियर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट हितेन गेंदबाजी करते हुए गेंद अंदर की ओर आती हुई ऑफ कटर गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, चुके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और निस्संदेह अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेकर गेंद इस बार गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती है और पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद इस वक्त फेंके थे और इस लेग कटर के टर्न को पहले ही भाप लिया था। विकेट से हटते हुए गेंद को साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ बल्लेबाज प्रज्वल सीनियर ने और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर चुकी है, वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स के पारी में लगता हुआ प्रज्वल सीनियर के बल्ले से और कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और छक्का प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर, दाहिने हाथों पर द विकेट अपने अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, बेहतर और इस बार उछाला लेकिन बेहतर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद उनके हाथों में बैठ गई ऊपर की ओर छलांग लगाने के बाद और इस कैच की बदौलत 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रज्वल सीनियर की पारी समाप्त और एक बार फिर से कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स संकट में नजर आता हुआ। सिर्फ 3 विकेट बाकी और छक्का जब प्रज्वल सीनियर ने लगाया था तब ऐसा लग रहा था वो यहां पर छा जाएंगे, लेकिन अगली गेंद पर एक बेहतरीन कैच के जरिए इस कैच को लपक लिया लॉन्ग ऑन फील्डर ने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए सीमा रेखा के अंदर और ये विकेट यहां पर प्रज्वल सीनियर के गिर चुका। तो 7 विकेट 27 रनों पर गिर चुके। अब निस्संदेह इस वक्त कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि वो अपने बचे हुए 3 विकेटों की मदद से बचे हुए कोटे के 8 ओवर को पूर्ण करें, यानी बचे हुए जितने भी ओवर्स है कुल मिलाकर 2.1 ओवर बाकी है। 13 गेंद जो बचे हुए उन 13 गेंदों को बचे हुए 3 विकेटों की मदद से पूर्ण करें और जितने भी ज्यादा रन से बटोरते हैं उतने ज्यादा रन वो बटोरे। ये गेंद टेक ओवर विकेट, कंसेक्यूटिव विकेट फॉर द बाउलर। 8वां विकेट गिर चुका है 27 रनों पर। हितेन तीसरा विकेट प्राप्त कर चुके हैं और इस तीसरे विकेट के प्राप्त करने के बाद 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं। AVFC इनकी ओर से 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार हितेन प्राप्त कर चुके हैं। तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए कलाकंदा
सिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाज और सतीश यहाँ पर परेशानियों के बादल साफ इस वक्त मंडराते हुए कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के ऊपर। Absolutely, Gopi. It is not really coming out of the trouble. The first over itself, the wickets are tumbling like a house of cards, isn't it? And in this particular over, Gopi, when Prajwal Senior hit 1-6, looks like they are slowly back into this game. But very next ball, Hitesh is able to pick the wicket of the Prajwal, and once again the match is really out of the hands of create challenges. But they lost 8 wickets, Gopi, and now onwards I think is last opportunity of the batsmen. At least they complete their 8 overs quota, isn't it? So that they can at least get 35 to 40 runs, which is definitely dependable, because create challenges, they got a very good bowling department, and for that I think, Gopi, they need to consume remaining deliveries. They need to consume remaining deliveries and need to get some runs as well, and then only they get some fighting total in the big final. बिल्कुल सतीश, ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन बल्लेबाज बटोर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। और जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, और मैं भी पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूं, चंद गेंद पहले की बचे हुए ओवर्स को इस वक्त पूर्ण करने होंगे कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को। बचे हुए 2 विकेटों की मदद से ये गेंद बेहतर गेंद, लेग कटर, परफेक्ट लेग कटर, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ शिवराम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट इस वक्त मैंगलोर मीडिया के सदस्य करते हुए श्री जनाब कमल इनके सारथी में ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। शिवराम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ ऑफ द टोस खेल दिया, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड होते हुए क्लीन कलेक्शन, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ बढ़ चुका है 30 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद के लिए तैयार, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद तेज रफ्तार के साथ कुछ हद तक टर्न लेते हुए सबसे लगभग 1 या 2 इंच दूरी पर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। एक बार फिर से ऑन साइड पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 31 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 7 overs have been bowled, लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन their innings, और निस्संदेह इस बचे हुए लास्ट ओवर में यहां पर 2 विकेटें जो बचे हुए, उन 2 विकेटों की मदद से देखना यह है कि उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है गेंदबाजों ने। कलाकंदाज या स्ट्राइकर्स के फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाज हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज हितेन तैयार, 5,000 रुपए उनका इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। अगर इस गेंद पर वो हैट्रिक, इस गेंद पर वो विकेट लेते हैं तो ब्रोकन हैट्रिक कहलाएगा। पिछले ओवर के 2 गेंदों में, अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे, और अगर इस ओवर के पहले गेंद पर वो विकेट प्राप्त करते हैं तो ब्रोकन हैट्रिक के रूप में वो 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। देखना यह है, ये गेंद हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, चूंकि 5,000 रुपए इस वक्त जा चुका है और गेंद सीधे पहुंची उनके विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और एक बार फिर से गेंदबाज हितेन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चूंकि रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर गेंद तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं। 32 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सब कुछ इस वक्त कलाकंदा स्ट्राइकर्स के पक्ष में चलता हुआ, और सब कुछ इस वक्त कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के खिलाफ यहां पर चलता हुआ। 4 गेंदें बाकी, और 4 गेंदों में अब कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को कुछ करारे स्ट्रोक्स लगाने होंगे छक्के या चौके के रूप में अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग। 2 रन कम से कम मिलेंगे, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर। दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी। मैं समझता हूं गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी, और वाइड के रूप में 2 रन इस वक्त जुड़ चुके कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के खाते में। हितेन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, टॉप एज गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, काफी देर तक हवा में रही थी, लेकिन
काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक नहीं पहुंच पर वहां पर कुछ हद तक चोट आई है उनके पैरों में, शायद कैच को लपकने के प्रयत्न करते समय शायद उनके पैर में मोच आ गई है और वो इस वक्त मैदान पर लेटे हुए और दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार यहां पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। 8 विकेट गिर चुके हैं। अल्फाज आउट हुए थे 2 रनों पर, पृथ्वीराज आउट हुए 0 पर, फारूक का विकेट गिरा था 0 पर, उसके बाद पारी आई थी प्रशांत का 5 रन पर, वो आउट हुए थे। संदीप आउट हुए 2 रन बनाकर। प्रज्वल अभी भी बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों पर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए। सुमित का विकेट गिरा था 4 रनों पर, उसके बाद प्रज्वल सीनियर आउट हुए छक्का लगाने के बाद 6 रनों पर। अविनाश का अंतिम विकेट गिरा 0 पर और नंबर 10 बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त प्रकाश मौजूद, प्रज्वल जूनियर का इस वक्त साथ निभाते हुए। हर हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त रखा गया है, लेकिन अब गेंदे बचे हुए हैं 4, मेरे ख्याल से 3 गेंदे बचे हुए हैं और 2 विकेटें बाकी हैं और हैट्रिक विकेट का कोई यहाँ पर प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो इस बीच खेल कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। शाम का वक्त 5:25 यहाँ पर बच चुके हैं। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच इस कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। इस सुंदर से उर्वा क्रिकेट मैदान पर यूसीजी लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जाना जाता है और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, और यहां पर इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का खिताब प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स और कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बीच में। और इस बीच फील्डर अब काफी हद तक सही सलामत, खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। 3 गेंदे बाकी उनकी पारी में। धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद, सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी कम होती हुई, लेकिन क्रिकेट के लिए, खेल के लिए पर्याप्त रोशनी अभी भी मौजूद है इस मैदान पर। और हितेन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ कटर प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ 9वां विकेट गिर चुका है। 4था विकेट हितेन के पक्ष में। गेंद अंदर की ओर आई डिविएट होते हुए और लाइन पर थी गेंद, उनके पैरों पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई। इस बार उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट पगबादा यानी लेग डी 4 विकेट घोषित करने में। 9वां विकेट गिर चुका है 35 रनों पर, 2 गेंदें बाकी, अंतिम जोड़ी मैदान पर और नंबर 11 और अंतिम बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स के लिए। ऋत्विक नंबर 11 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, 2 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में और गेंदबाज हितेन जो कि 4 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। एक गेंदबाजी, सफल गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बढ़ना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, ऋतिक के लिए खतरा, थ्रो काफी धीमा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। विकेट कीपर ने जो थ्रो किया था वो थ्रो काफी धीमा था और ऋतिक के साथ वो नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचा और इस बीच सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। 36 रन बन चुके 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। हितेन गेंदबाजी करते हुए और प्रकाश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार उनके पारी की अंतिम गेंद का। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछलना चाह और अंतिम गेंद पर यहां पर अपील जारी है लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और इस बीच 1 रन पूरा कर चुके, दूसरा रन नहीं मिलेगा, रन आउट हो चुका है और इसी के साथ ठीक निर्धारित 8 ओवर में कोडिकल क्रिकेट चैलेंजर्स की पारी सिमट गई 37 रनों पर। दे वर बोल्ड आउट फॉर 37 रन्स इन देयर एग्जैक्टली 8 overs of the stipulated quota and they set a victory target of 38 now for Kalakanda CR strikers. 38 रनों का लक्ष्य and as far as the required run rate is concerned, exactly 4.75 runs per over they have to score for victory. They have to score 38 in 8 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. Meantime
their innings now going to start within just short while. 38 रनों का लक्ष्य इस वक्त कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स को इस वक्त रखा है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के खिलाड़ियों ने, और इस प्रतिष्ठित कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 का खिताब अर्जित करने के लिए 38 रन बनाने कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को, और देखना यह है कि इस लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं। तो 38 रनों का लक्ष्य, और निस्संदेह बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट देखिए किस तरीके से खुद हमको यहां पर दिखाया जा रहा है मैंगलोर मीडिया द्वारा, जो कि इस वक्त एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट करते हुए श्रीमान कमल इनके सारथ्य में मैंगलोर मीडिया एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देता हुआ इस प्रतिष्ठित कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 मेगा श्रृंखला का 2022 इस मेगा श्रृंखला का, और यहां पर 38 रनों का लक्ष्य, और सतीश 38 रनों का लक्ष्य निस्संदेह एब्सोल्युटली द 100% मार्क गोज टू द बॉलर्स ऑफ कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की और सिर्फ 37 रनों पर कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को उन्होंने रोक कर रखा। अब पारी है उनके बल्लेबाजों की 38 रन बनाने हैं, और मैं समझता हूं कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, अगर उस सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप का सही तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, एक बेहतर शुरुआत देते हैं, तो निस्संदेह अपनी मंजिल की ओर वो अग्रसर हो सकते हैं। और जहां तक सवाल है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का, हालांकि उनके बल्लेबाजों ने रन से सिर्फ 37 बनाए, और अब 37 रनों के अंदर अगर उन्हें कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक घातक गेंदबाजी करने की, और कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के पास बेहतर गेंदबाजी का लाइनअप जरूर है, और अगर उस बेहतर गेंदबाजी का सही तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं पहले ही ओवर से, तो कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के ऊपर दबाव आ सकता है। कुल मिलाकर इस कोडिकल प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 का सत्र, अंतिम सत्र एक बहुत ही रोचक यहाँ पर होगा, और हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार, हर चौके के लिए 250 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए विशाल कोट्टारा और रोहित मोइली ने। फॉर एवरी 6 500 रुपीज कैश प्राइज एंड एवरी बाउंड्री फॉर 250 डिक्लेयर्ड बाय विशाल कोट्टारा एंड रोहित मोइली फॉर द बैट्समैन ऑफ कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। In fact, one more prize. Every 6, one more 500 rupees declared by AVFC for the batsmen of कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। तो इनामों की बौछार यहां पर लगाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा हर छक्के के लिए 1000 रुपए नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया AVFC और विशाल कोट्टारा के इनके द्वारा, और हर चौके के लिए 250 रुपए का नगद पुरस्कार रोहित मोली इनके द्वारा घोषित किया गया है। तो 38 रनों का लक्ष्य, द लास्ट सेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू बिगिन। और सतीश, जो मैंने पूछना था वो मैं पूछ चुका हूं, अब जवाब देने की पारी आपकी है। आइए माइक्रोफोन पर सतीश। So thank you, Gopi. Absolutely right. And of course, just like you were mentioning about how difficult it's going to be to defend the small total like 37 runs and 38 to win the match for the opposition. And I think some unbelievable and some miracle bowling which is badly required from the create challengers Kodical if they wanted to become the champion. And for that, Gopi, they needed some attacking bowling performance. It cannot control the runs, Gopi, because it's a 8-over format of games, and just like we're mentioning about the less than 5 runs per over is the required run rate. I think if they wanted to restrict the opposition, they need to pick the wickets. Without picking up wickets, I don't think Kodical create challenge will going to create the history here. If they wanted to create the history, the create challenge have to pick the wickets from the first delivery itself. They need to attack. But this kind of what you call negligency and not that much of good commitment from the fielder in the deep extra cover, and what could be a certain single because of the poor piece of anticipation by the fielder in the deeper wideish long off region. The batsman just grabbing the opportunity to come back for the second. Two without loss of any wicket. Bowler from the commentary box and Prashant with a short run up, bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. This time lovely shot, beautifully driven down to deep cover point region. The fielder chasing the ball, but at last the ball winning the race against the two fielder.
That was an excellent and glorious cover drive coming from the blade of Mahesh. And he got a 250 rupees as well along with that stroke, which is neatly coming from the blade of Mahesh. Magnificent stroke coming from the blade of Mahesh. Nothing wrong with the line of the delivery. You know exactly the fielder is inside the ring at deep cover point. There is no fielder return. Once he defeat that cover point and extra cover fielder, and then no one can stop the boundaries. A quick outfield in usage cricket, and he got a boundary for that. Again, then defeating the infielder. Long chase here for the fielder at square leg and backward point, backward square leg fielder running back and fields the ball. Ample time for the batter Mahesh to complete that couple of runs. What we are talking about, some wicket taking delivery which is required, but you are watching that runs are coming very freely in the first over itself for Kalakanda CS strikers. They are in the driver's seat. 8 without loss of any wicket. Went for the reverse sweep. This time bowler did a good job to ball that the negative line, because that negative line in the sense is bowled outside the line of leg stump, seeing that the batter going for the reverse stroke, and he just changing the line and defeat the bat of Mahesh. 8 without loss of any wicket. Bowling away from us, Prashant. Right arm over, delivers again the mistake. Absolutely mistake in this big final, mega final. You are not depending a big total. When you are depending a small total like 38 to win this match, a little margin for error. He cannot do the mistakes, and you need to pay the penalty for that. 9 without loss of any wicket. 9 without loss of any wicket. Prashant bowling with a short run off. Right arm over the wicket, delivers. Just pushing that one quite cleverly down to backward point region. You know exactly, no need to panic at all. Just rotating the strike is enough for them to win the match, to become the champion, and so far are looking in a commanding position. Great start here from the opening batsmen of CS strikers Kalaganda. They are looking in a commanding position. Now I think everything seems to be a difficult condition out here for create challenges. We are talking about the more cricket. Already Gopish mentioning about that MLA Premier League will go into commence in coming Saturday, day after tomorrow. Saturday and Sunday, definitely one of the best day for cricket. You've never seen that kind of concept in the history. The first time in the history of tennis ball over cricket. And Sankalp Foundation along with the Mangalore Youth presenting this MLA Premier League. Of course, one of the organizer Kiran Kumar Kodical already witnessing this mega final of Kodical Premier League Season 3. He is the one, is leading from the front, is organizing such a wonderful cricket tournament, and we are once again requesting all cricket lovers, please support that MLA Premier League 2022. And one more special day here is for Kiran Kumar is that he is celebrating his wedding anniversary. So on behalf of all cricket lovers, on behalf of Vishal cricketers Kodical, we are wishing him very, very happy wedding anniversary. So, happy face out here in dugouts and of the supporters of create little correction from Kalakanda CS strikers, because they are chasing the runs quite beautifully. Oh, lovely shot, no need to run for that. Ball went like a tracer bullet. And not only that, ball went like a tracer bullet, and just like what we're talking about, a 250 went into the pocket just like a tracer bullet. Altogether, you're not only getting the boundaries for his team, but also he's putting some money into his pocket. Already 500 rupees here for Mahesh for 2 boundaries. Again, he going for the cut shot, not quite getting hold of that getting hold of that one cut shot, but he managed to get the single, and with that single scoreboard, moves on to 15 on the board. Everything looks like it's very difficult now to stop the winning runs of CS strikers. Kalakanda are looking in a commanding position. Again, lovely delivery there from Prithviraj. So far it's a first dotted delivery, and Shivaram also faced the first delivery, and all we can see that Mahesh is dominating all the overs, power play overs deliveries, and first time Shivaram facing first delivery, and that is a dotted delivery. Prithviraj bowling from the Aloysius D'Souza, and we are just talking about
create challenges. If they wanted to back into this game, they need not do this mistake, need to pick the wickets. But so far, I think they are not only able to pick the wickets, but at the same time, they're conceding some runs. Frustration and pressure. Maybe whenever you're not able to pick the wickets, that was the scenario we can see regularly in cricket, because the bowler's trying for something special, something invention from the bowler, but it's too much as ball going far outside and off tempo. White call by umpire, 17 for the without loss of any wicket. Prithviraj, right arm over the wicket, delivers. This time appeal for leg before wicket, but nothing has happened in this occasion. I think ball just missed the stumps, or maybe the ball kissed the wicket or not. Looks like the excitement behind the stump, wicketkeeper behind the stump, but nothing has happened. Ball might be missing that leg stump of the batsman, and Mahesh is survived. Good delivery there from Prithviraj. Again looking for the big shot, missed it completely, and still it's no problem whatsoever for the team. CS strikers Kalakanda are in a commanding position, 17 without loss of any wicket, and Gopi just 12 more runs to get, and plenty of deliveries remaining. 21, did correction, 30 is the target, and 21 more runs required for the victory. And coming back to this match, Gopi, will it going to be any possibility of bouncing back in this match? But I don't think so. After getting 17 runs in 2 overs of the power play, we are talking about some attacking bowling which is required to defend a small total. So far, I think the both opening batsmen are dominating. बिल्कुल सतीश, बेहतरीन आरंभिक शुरुआत जरूर दे चुके हैं, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। गेंदबाज जो इस वक्त गेंदबाजी पर लगाए जा रहे हैं, सुमित, उनके पास वो काबिलियत, क्षमता मौजूद है कि 13 विकेटें इस श्रृंखला में वो ले चुके हैं, और उनके पास वो एबिलिटी मौजूद है कि बाउंस बैक कर सके। और यहां पर चंद विकेटें, कम से कम 2 या 3 विकेटें वो इस ओवर में उखाड़ते हैं, किफायती गेंदबाजी करते हैं, तो निस्संदेह यहां पर कुछ हद तक इस मैच में वापस आ सकता है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं सुमित की गेंदबाजी जो है ये उनके लिए अंतिम अवकाश होगा, और यहां पर सुमित बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इस ओवर में विकेटें उखाड़ते हैं। देखिए किस तरीके की गेंदबाजी, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा पेस के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, और यहां पर इस ओवर में देखना यह है कि और यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, पैरों पर गेंद टकराए। देखिए किस तरीके से काफी तेज रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, ऑन साइड पर गेंद को स्वीप करना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची पॉइंट पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। विकेटें इस वक्त उखाड़ने ही होंगे कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के गेंदबाजों को, और सुमित उसकी पूरी कोशिश में इस वक्त लग चुके हैं। ये गेंद उछालना था, बॉल आउट। और बिल्कुल जैसा कि मैं पहले इस ओवर के पहले फरमा चुका सतीश, सुमित के पास वो एबिलिटी, क्षमता है कि वो विकेट उखाड़ सके। पहला विकेट वो इस वक्त उखाड़ चुके हैं, और अब चंद विकेट और गिरते हैं इस ओवर में, तो निस्संदेह दबाव इस वक्त कलाकंदा सीआर स्ट्राइकर्स के ऊपर आ सकता है, अगर 1-2 विकेट इस ओवर में गिर जाएं तो। Exactly, Gopi, and just like you mentioning about, it's all about the mind game, Gopi. Even though they're defending a small total after getting conceding 17 runs, if you think that it's very difficult to win this match, I think it's their problem. It's always a mind game. Strong mindset is very important, and along with the confidence, the level of confidence is so important, because confidence comes naturally with the success, but success comes only to those who are confident enough. I think he's very, very much confident enough that Sumit, he can dismantle the batting department of the opposition. He got 2 very important overs. At least he had to get another 3 or 4 wickets in this particular, in the 2 overs, then they can bounce back to this match. But support which is required in other end, Gopi. He cannot take the wicket, he cannot do the job in on end. Another end also, supporting role is very important. बिल्कुल सतीश, दूसरे छोर से भी सपोर्ट मिलना जरूरी होता है, लेकिन अगर 2 या 3 विकेट इस ओवर में उखाड़ते तो सहज रूप से आने वाले गेंदबाज का मानसिक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा जब वो नया ओवर शुरू करने के लिए अगले छोर जाएंगे। फिलहाल इस ओवर में विकेट उखाड़ना जरूरी बन चुका है। गुरु प्रसाद जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस श्रृंखला में दे चुके हैं, अपील इस वक्त, और लेग कटर गेंद थी इस वक्त, और गेंद सीधे पहुंची, बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड बार पर सही तरीके से अंपायर सीधे ने इस अपील को नकार दिया। तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए यहां पर सुमित, और 2 यहां पर 19 रनों पर स्कोर बोर्ड बढ़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित जीतोड़ कोशिश इस वक्त करते हुए विकेट उखाड़ने की, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए, जानते हुए बल्लेबाज
कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के कि कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, काफी ओवर्स बाकी है, रन्स बनाने हैं अब सिर्फ 18, जबकि ओवर्स बाकी है कुल मिलाकर 5 और रिक्वायर्ड रन रेट है जो 3.60 रन प्रति ओवर। यहाँ पर कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाने की पूरी कोशिश वो यहाँ पर करते हुए, और देखते हैं सतीश 18 रन बनाने हैं 5 ओवर में, और देखते हैं इन 18 रन बनाने से रोकने के लिए कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के गेंदबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाते हैं। Exactly, Gopi, and just like we were expecting from Sumit is a kind of over. Of course, he's picked up only one wicket, but it's not enough. It's just like I mentioned, Gopi, the other end, they needed some supporting bowling, and wait and see how well Prajwal Junior will go in to give the support. He needed to bowl some economical and wicket-taking overs if they wanted to back into this game. Prajwal from the LOCS, this was the end. Right, clean him up! This is unplayable delivery. This is absolutely a stunner. Look at the delivery that coming from the hands of Prajwal. Absolutely, the batsman, the subtle batsman Mahesh is no clue whatsoever. Look at that one, the flighted one, a slight leg cutter. Batsman completely misleading. He thought it might be the incoming delivery, but it's a deviation, is a slightly leg cutter, and he's just defeated with that turn of the delivery, and he's back into pavilion. 20 for the loss of 2 wicket. Just like we were mentioning about Gopi, of course it's a difficult job here for the bowlers, but always the difficult roads leads to beautiful destination. Without difficulties, you can't expect some big success here, but here I think the bowlers of create challenges have to do something special from the bowling if they wanted to win the match, and already just like we are talking about the support which is required from the other end, and Prajwal Junior really got a very good start from that over. The wicket here for him, but needed some another 2 more wickets, and this time is oh my goodness, ball almost suddenly is a good decision coming from umpire Harish Padil. When ball is hitting the pad, everyone is up, even closing fielders is very excited that will go into a wicket. Even myself, I thought it might be the close one, but because of that ball is a half cutter, that the ball just going down the leg stump. Right decision there from umpire Harish Padil. Chip that one, fielder there in the deep mid wicket, misjudging that one, and ball went towards a deep mid wicket boundary for 4 runs. Just look at that one in a replay. The flighted delivery, batsman just chipped that one, half-hearted stroke. The fielder and the deep mid wicket couldn't manage to judge that catch very well. Ball just landing in front of that fielder and defeating his hand. Ball going over him and towards the deep mid wicket boundary for 4 runs. 250 rupees into pocket, but at the same time, the momentum which what the fielding team has got, they just lost that one. This time again across the line of the delivery, he just wanted to pick the single. He played that one across the line, but he's so confident. Picked up a single down to square leg region with that single scoreboard. Now moves on to 25 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Prajwal bowling from the far end, right arm over the wicket, beautifully bowled. But look at that, I don't think it's the fielding set. I think needed some closing fielder, isn't it, Gopi? Because they're not dipping a small turtle, and look at that how easily they're getting the runs by pushing the ball inside the rings. And again, there is no problem whatsoever as the rotation of strike is concerned. 26 for the loss of 2 wicket. Again, nicely turns that one. Ganesh looking very confident in the middle. He's the one, he got a wicket from bowling. He's the one, he got a runs from his bat. He's a fantastic all-rounder for the side of Sia Strikers Kalakanda. After completion of over number 3, 27 for the loss of 2 wicket. What a fantastic cricket tournament is going on here. Kodical Premier League Season 3, which is proudly organized by Vishal cricketers Kodical as they're celebrating their silver jubilee. And what a fantastic tournament is progressing here. And especially the Mangalore media has got a fantastic live telecast of this cricket tournament in last 3 days. And once again, special thanks to the very young talents in the Mangalore media. We got the operator Rizwan, and a fantastic job is done so far. And as a scorer, Muhaz and Pritesh done a great job in the technical department, and cameraman Jasir, Unes and Sinan. 3 youngsters of Mangalore media so far done a great job for the success of this cricket tournament, because they are the one has got a very good live telecast of this fantastic Kodical Premier League Season 3. Now, Ganesh,
little bit correction, Guru Prasad just came into middle, and Guru Prasad is the one who scored 53 valuable runs in so far in this tournament, and Afiz of Kodical Indians, he's also scored 53 runs. That means if Guru Prasad able to pick a single run, it is bowling, clean him up. We are talking about the runs, but he's a man, he came into bowling, he's thinking about the wicket, Gopi, and he's 12 wickets so far him. We are talking about the highest run getter, but here is the highest wicket taker. Sumit he's become the highest wicket taker of this tournament as well. 12 wickets so far in this tournament, and will it go into a chance, Gopi? 27 for the loss of 3 wickets, another 11 more runs required for the victory. मौका जरूर है सतीश इस वक्त, और सुमित के बारे में हमने जैसा कि जिक्र किया था पिछले ओवर शुरू करने से पहले, सुमित एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया, यहाँ पर अपना दूसरा विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ पर अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ 11 रन बनाने हैं अब कुल मिलाकर 23 गेंदों में, और एक घातक गेंदबाजी ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल सुमित अपना विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और देखना यह है कि इस ओवर में वो और कितने विकेट प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस, हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्लाइमैक्स जो कि कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 का यहां पर प्रगति पर, और जहां तक सवाल है ग्रैंड फिनाले का, तो तख्ता इस वक्त कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स का भारी लगता हुआ इस बीच अपील, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। बेहतरीन स्टंपिंग, और जैसे ही बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकले स्ट्रोक खेलने के प्रयास में लगभग कुछ हद तक अपने संतुलन खो बैठे, और यहां पर विकेट कीपर के हाथों में जैसे ही गेंद पहुंचे विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। देखिए किस तरीके से हुआ है, लुक एट दिस वन, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 गिर चुका है। और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, बाउंस बैक करने का मौका हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन संभावनाएं काफी कम है। लेकिन मैं समझता हूं, जैसा कि चंद गेंद पहले मैं जिक्र कर चुका सतीश, घातक गेंदबाजी ही, चमत्कारी गेंदबाजी ही अब कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। सिर्फ 10 रन चाहिए विजय के लिए, और कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स को इस वक्त चाहिए एक सेंसिबल क्रिकेट की। Exactly, Gopi, sensible batting which is required for Sia Strikers Kalakanda, because they are almost standing in the edge of that victory, because another 10 more runs required for the victory. But Sumit not really given up this match. He's not really given up this match. You know exactly the potential what he's got, the taking a wicket taking delivery, which is much important here, and Sumit is trying his level best. Another 2-3 wickets in this particular over will going to change the complexion of this match. 28 for the loss of 4 wicket. Sumit has got another 3 deliveries to spare in this over. 3 deliveries and 2 wickets will go and change the match. And here is Sumit, right arm over the wicket. Delhi was quicker one, absolutely quicker one. And look at the captain, Sandeep, smallest is standing in unorthodox the mid-off region, and he's very close to the batsman to saving the singles, and diving effort for him to saving the runs, and he succeeded. Again, Sumit bowling. Oh, current delivery negotiated very well in the last moment by Vijay. This is not a Yorker, Gopi. This is a slower Yorker, one of the invention there from Sumit's side, and it is a beautiful delivery indeed. A slow Yorker line delivery, and Vijay negotiated very well till the last moment. And last delivery off. This time Flum, absolutely Flum in front of wicket. The wicket number back. The 5 wickets are back into pavilion of Sia Strikers. Kalakanda are looking now little bit under pressure, Gopi, and this is the beauty of cricket, isn't it? Beauty of underarm cricket, and especially beauty of UCG cricket ground, Gopi. So many times, even so many spectators, maybe they left the field, thought that it might be a one-sided game. Why to watch the cricket? But now they wanted to bring back that all spectators who left this cricket ground, because the match is still not over. बिल्कुल, इस गेंदबाज के बारे में हमने जिक्र किया था जब वो अपने कोटे की गेंदबाजी शुरू करने जा रहे थे। 2 ओवर में 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। देखिए सुमित की गेंदबाजी, और उस बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत सतीश अब मैच में कुछ हद तक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के लिए। 10 रन अभी भी चाहिए, ओवर्स पूर्ण हो चुके हैं 5, ओवर्स बाकी है 3, रन चाहिए 10, 18 गेंदें बाकी, और सतीश यहां पर एक और विकेट का पतन निस्संदेह उनको यहां पर कहना पड़ेगा कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को मुश्किल में और ढकेल सकता है। फिलहाल इस वक्त कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के
गेंदबाजों को इस वक्त विकटें ही उखाड़ने होंगे और उस प्रयत्न में यहां पर गेंदबाजी पर लगाया जा रहा है प्रज्वल जूनियर, जो कि एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार भगवान, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर प्रशांत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पलट स्वीप कर दिया, फील्डर काफी पीछे, एकमात्र रन मिलेगा। कोई ज्यादा उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई दूसरे रन के लिए, सिर्फ एकमात्र रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए 29 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इस वक्त विकेटें ही उखाड़ने होंगे कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स को। सिर्फ 9 रन अपने विजय से दूर चैंपियन कहलाने के लिए कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स को। और इस बीच रक्षात्मक तरीके की खेल ऑफ द बैक फुट, उनके पैरों में हालांकि कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए, और पिछले मैच में जो वो चोटिल हुए थे, इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। अब इक्वेशन 15 balls remaining and 8 more runs now, 9 more runs now they have to score for victory। और चंद डॉट गेंदे और यहां पर मुश्किल में ला सकते हैं कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स को। इस बार अपने पैरों से दौड़कर काफी मुश्किल के साथ एक रन ने यहां पर पूर्ण किए दोनों बल्लेबाजों ने, और जो कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर जो मौजूद है काफी इस वक्त दर्द महसूस कर रहे हैं अपने पैरों में। 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदें यहां पर बाकी है। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया, और इस बीच दौड़ते हुए एक रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके। 31 नाउ, 7 to get and 13 balls remaining in their innings। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद इस वक्त जान चुके हैं, इस वक्त उन्हें अपनानी है सूझबूझ भरी क्रिकेट, और यहां पर सेंसिबल क्रिकेट वो अपनाते हैं। बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। तो छठा ओवर पूर्ण हो चुका है, 32 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, 6 to get from last 12 deliveries, 5 विकेट्स रिमेनिंग फॉर कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स। और मैं समझता हूं सतीश, अब कलाकंदा क्रिकेटर्स, कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप, और कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स को इस वक्त चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है। Absolutely, Gopi. The magical bowling which is badly required. That's why the magical bowler is in action. That is the captain himself. He's took a ball in his hand because he's got a potential. He's got experience behind him. And Sandeep is the one who really bowled well in the league matches when his team is required some restriction from the runs. He bowled beautifully. And I think he's bowled 1 hour, just considered 3 runs and picked up a wicket. And it's the same kind of bowling which is required in the situation. Wait and see how Sandeep will going to restrict the runs. It's need to restrict. He bowled maiden over, I think so, in the previous the league matches, and wait and see how Sandeep will going to restrict the runs in this particular over. Not only need to restrict the runs, but at the same time he need to pick some wickets. Oh, brilliant bowling here from Sandeep. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, 1 more wicket is back into pavilion in the form of run out. The 6th wicket is back into pavilion of Sia Strikers. Oh, the match is not still yet over. The match, the excitement, the thrilling moment still remaining in this moment. Why not? And it's very interesting to see, Gopi, and it's really the beauty of cricket, undrum cricket. Sometimes we feel that all doors are which is close to the team create challenges, but sometime all the doors may not be locked. They may be waiting for the knock, and here is Sandeep knocking that door which is not locked, and it's going to be a chance here for the opposition team to bounce back. Will it go into a chance here? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 6 required, 10 balls remaining, excitement still remaining in this. Oh my goodness, can you believe this? Oh,
It's really not required in this situation, but certainly required for the supporters of CS Strikers. This is nicely done, beautifully down to square leg region. Long chase here for the fielder, but before the fielder to run back to feed the ball, ample time for the batter to pick the couple of runs. This is sensible batting, absolutely sensible batting here from Yatvij. Is know exactly that Sandeep is bowling a leg cutter, just using the depthness of the crease very well, just going back and nicely turns that one, got a gap, and 34 on the board. Now 4 runs required for the victory. Must require dotted delivery. Now balls remaining 8. Runs required 4. Absolutely sensible batting here from Yatvij. You know exactly the kind of situation. He knows the situation. There is no need to panic at all. Just pushing the ball here and there. He can get the winning runs. And now just 3 more runs required to become the champion. Again, captain leading from the front. And he is really playing a captain's knock Bhagwan here. And certainly for the fans of CS Strikers, Bhagwan looks like a Bhagwan. He looks like a god for the supporters of CS Strikers, as he is really handling the pressure very well. Now, last over remaining of this big final, and 2 runs required for the victory, Gopi, and 4 wickets ran. Looks like it's almost 75% of this game is in the hands of CS Strikers. Only 25% which remains in the hands of Create Challengers. And if they wanted to convert that 25% into 100%, I think 1 good over which is badly required. Wicket taking and economical. बिल्कुल जैसा कि पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं सतीश, मैजिकल गेंदबाजी इस वक्त, मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी ही इस वक्त अंतिम ओवर में उन्हें इस वक्त इस मैच में वापस ला सके। सिर्फ 2 रन, 4 विकेट सुरक्षित है, अंतिम ओवर बाकी है और यहाँ पर लक्ष्य बिल्कुल आसान दिखाई देता हुआ, और इस अंतिम ओवर में देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। पहली गेंद ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर रन नहीं मिलेंगे और थोड़ा सा दबाव इस वक्त पड़ता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। 5 गेंदें 2 रन चाहिए और यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार। From 4 deliveries, 3 wickets remaining, and this is going to be absolutely fantastic match. Exactly, Gopi, and I want to see the Gopi. If the match is scores are level, what could be the decision? And I think it's going to be very interesting. 1 for the tie, 2 for the victory. Will it going to be a super over? Yes, it is a super over. What the organizers decided to play a super over, Gopi, and not only the organizer want to see, but even the spectators and even the fans of Create Challengers. Little bit correction out here in the scoreboard. Sorry for that. 37 is the total score. Scores are level. Just 1 run required for the victory. Because in the previous over bowled by Sandeep, the 2 runs which is taken, yes, that is added as a single. So that was a little bit correction we want to make here. And that's that was understandable, Gopi, because that much of excitement of this game is definitely, maybe the mistake is common, but but it's a big mistake, Gopi, not a common. If the match is ended in a tie, it's going to be a big mistake. But I think a scoreboard, that was what we are talking about, a little bit correction we want to see. Now 1 run required for the victory. The scores are level, 4 balls remaining, and 1 run required for the victory. And what a game cricket, Gopi, and it just looks like a one-sided game at one stage. And but I think need to appreciate the word of appreciation which is required for the create challenges, because of the way they back into this game with the bowling. The winning and losing is a part of cricket, but I think both the teams won the heart of our cricket lovers. Now Akshay will go into face, and bowler Prajwal Senior searching for the wicket. Right arm over wicket delivers. Oh, Sandeep drops the catch. It's a difficult catch, but here's a winning run. And Create Challengers, of course, they lost the match, but here is a CS Strikers Kalakanda are becoming the champions of the Kodical Premier League Season 3. They are the champion, defeating Create Challengers by 3 wickets. It's a thrilling victory. It's not an easy victory. This is a very hard fought victory here for CS Strikers Kalakanda. At last they managed to win the match.
by the thrilling finish, 3 wickets victory for CS Strikers Challengers. Very happy faces. Of course, coach of CS Strikers, a very happy face. Even the owner of CS Strikers, very happy. The captain, Bhagwan, he is the one, he is a very successful captain leading his team and takes his team into the final, and then he is just lifting that prestigious Kodical Premier League Season 3 by defeating the unbeatable team Kodical Create Challengers by 3 wickets, and they lost their first match of the tournament, and that was in the final, unfortunately, for the Create Challengers. So that's it, champion out here, Kodical Premier League Season 3. And Vishal cricketers proudly organized this wonderful cricket tournament as they're celebrating the Silver Jubilee, and they made that one really a memorable one by organizing a very successful cricket tournament in this most historical UCG cricket ground. That's it from the commentary box. We'll right back in our post-match presentation ceremony. Till then, we are saying goodbye from our commentary box. Myself, Suresh Sali, and Mr. Gopi Hinindi, and of course, a wonderful job it's done by our scorer Naushad as well as Ratish Raj. So far done a great job along with the technicians and cameramans of Mangalore Media, and special thanks to the operator Rizwan and the scorer Muhaz, Pritesh, and cameramans Jasin and Unais and Sinan. They all done a great job for the success of this cricket tournament, and more than anything else, special thanks to our officials leading from the front under the leadership of Roland Pinto, Harish Padil, and Shiraj. Done a great job for the success of this wonderful cricket tournament, and we are straight away goes into the first match presentation ceremony. Thank you.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಗಂಡ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
He is a very successful and proud owner of the winning team as well. So congratulations for him. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. They wanted to organize this cricket tournament being the part of their Silver Jubilee celebration. So they are successfully organized this wonderful cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಿಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಕಂಡ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ sitting deputy mayor of city corporation. We have Sumangala Rao. So warm welcome for Sumangala Rao for the prize distribution ceremony of prestigious Kodical Premier League. And I request Mr. Srimati Tara Suresh Ji Pujari to come over here to honor ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್. ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಸಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜಿ ಮೊಗೆರೋ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ Aloysius D'Souza. So I request Mr. Manjunath of Vishal Kodical, please welcoming him. ದಯಮಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ದ ಹಾನರ್, ವಿತ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಶಾಲ್. ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದಯಮಾಡಿ ಭರತ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಹಾಗೂ
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು 17th ವಾರ್ಡ್ ಇದರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಿರಣ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಕೇಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದ ಬೌಲರ್ ಕಿರಣ್, the fantastic performer, present cricketer honoring Mr. Manoj Kumar as one more cricketer. So that's the very good the moment out here in this presentation ceremony. And one more chief guest for this presentation ceremony. We have ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು BJP ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನವೀನ್ ರಾವ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ. ಸೊ ನವೀನ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಮಾನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಮಾನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ರಾವ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಇಮಾನ್ ಕೋಡಿಕಲ್, Ayman did question Ayman, son of Abdul Qadir, the president of Vishal Cricketers Kodical. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕರಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಅಫೀಸ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್, I must say, Abdul Qadir. It's a warm welcome on behalf of all cricket lovers and thanks for the wonderful cricket tournament which is organized successfully in the last 3 days in this most beautiful UCG cricket ground. So warm welcome for Abdul Qadir. Yes. Just so far it's a very successful cricket tournament which is organized in this most historical UCG cricket ground. ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ದಿವಸ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Of course, the one who behind the screen so far done a great job.
ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಯಾರಂದರೆ ಸ್ಕೋರರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವ್ರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿ, ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಡೆಯಲಿ, the man behind the successful cricket tournament is none other than the Kiran of the Mangaladevi cricketers, the present cricketer of Mangaladevi cricketers. So we would like to honor him for his great job for the success of this wonderful cricket tournament. Kiran, please come and take your respective seats, and with the presence of all chief guests, we would like to honor him, and I request all the chief guests, please honor him. This is really going to be one of the memorable moment. And for Kiran, what a great job he's done. Absolutely fantastic. The mastermind behind the success of this cricket tournament. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀಲಿ, ಅದು ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೀಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಕಿರಣ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್ and definitely is the one behind the success of this cricket tournament, and is deserve this felicitation. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಇನಾಯತ್ ಹಾಲಿ ಮುಲ್ಕಿ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಈ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದಂಥ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದಂಥ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಗೆದ್ದದು ಒಂದು ಟೀಮ್, ಆದರೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹ 50ನೇ ವರ್ಷ, 100ನೇ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡಿದೆ.
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಆಟ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹೆಸರುಂಟು, ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಶುಭಾಶಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. 2-3 ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಟಾಡುವಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಮಳೆಯ ಇದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಗೆದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಸೋತವರು ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುಂದಿನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದಂಥ ರೋಹಿಣಿ ಕಲ್ಬವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯದ ಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸಹಾಯಧನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ.
ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ we are straight away going to the prize distribution ceremony. Already we are having a shortage of time, and ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ 8 ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಮಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ Kodical Create Challenges, please report here. ಜಗದೀಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ 8 ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇವರು ಸಾಲು ಓದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಕಂಡ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಇವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಯಾರಾದರೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಿರಾಜ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಯತಿರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಯತಿರಾಜ್, a fantastic striker of the ball of cricket ball. ಯತಿರಾಜ್ ಇವರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಯತಿರಾಜ್. ಸ್ಕೈ ಹಾಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಾಗರಾಜ್, ಸ್ಕೈ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ex-corporator of City Corporation, will go into present memento. ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿರಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ಪರವಾಗಿ ಐಮಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಾಗು ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, all the supports by the 8 teams owners. Thank you very much for your cooperation. Thank you. And without wasting our time, we are straight away coming into the presentation ceremony. And before that, individual prizes, we'd like to give a special thanks to the official. They are the one responsible for the success of cricket tournament. And really, under the great leadership of one of the most popular and leading umpires in South Kenda district, Roland Pinto sir, definitely because of his having some important work, so he's left here, so that we would like to give special thanks to Roland Pinto for your wonderful work for the success of this cricket tournament. Next we are coming to Arish Padil, one more very popular and experienced umpire. I request Arish Padil, please come forward. So big hand ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂಥ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, 26 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್. So next one more umpire is so far is an outstanding and matured a lot, and is becoming one more very very talented umpire, Shiraj of Gori Young Boys. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂಪೈರ್. Thank you very much, Navin Rao, for the presentation of the memento to our official Sriraj. So, the next one, I think it's coming to the cricket. Without the commentary, we can't expect anything in UCC cricket especially. And my friend Mr. Gopi has done a wonderful job as a commentator in our national language. May I request Mr. Gopi, my friend, please come forward and collect your memento from our chief guest. And Manoj Kumar, the corporator of 17th ward, will go in to honor him. So big hand for Gopi for the entertainment in 3 days, the wonderful commentary in our national language. Thank you very much, Gopi, for your support for the success of this cricket tournament. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆದಂಥ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಜೊತೆಗಾರನೂ ಆದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕಾರನೂ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Absolutely a fantastic English commentator of all time in the under-arm and over-arm cricket both. Thank you, Mr. Satish. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದರ ಮುಂಚೆ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೋರರ್ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ so far done a fantastic job for the success of this wonderful cricket tournament. He is a very popular the man. Ratish Raj is famously known as a Tamanna, and Ratish Raj done a great job as for the success of this cricket tournament. And one more popular name in the scoring department, Naushad. Again, the Naushad, may I request Mr. Naushad please come forward.
He's done a great job as a scorer in this Kodical Premier League Season 3. I request Mr. Naushad, please come forward and please collect your memento from our popular corporator, Mr. Ganesh Kulal. The big hand here for Naushad for his wonderful job. At the same time, I request one more popular name. He's an all-rounder, he's a commentator, and he's a scorer, he's a player, and he's none other than Sujit. I request Mr. Sujit, please come forward. Sujit ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸುಜಿತ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So thank you very much. This man also done a great job as a volunteer so far in a commentary box. And now we are coming to the very important stage of this presentation ceremony, because Vishal Cricketers Kodical, they wanted to make this Silver Jubilee as one of the most memorable one. If you wanted to make a memorable one, we need to have some good talent, good quality live coverage of this cricket tournament. So far in these 3 days, we are witnessing a lot of viewers from Mangalore Media YouTube. So big hand for all the staff members, cameramans, technicians of Mangalore Media. And on behalf of Mangalore Media, I request Mr. Kamal, if you are here, please come and collect the memento from our chief guest. ದಯಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಕಮಲ್, so brother of Kamal will go in to collect a memento. He is the one as a behind the screen success of Mangalore Media, and thank you very much Mangalore Media for your support for the success of this cricket tournament. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಸಚಿನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಸಚಿನ್ ಆಫ್ ಸುದೀಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೀಪ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ Kodical Create Challengers. Sandeep, please come forward. Is provided a wonderful sound system for the final day of this cricket tournament. I request Arisham Shetty, please present memento. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಿಯಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request Navin Ram, please present this memento. The member of Star Shamiana. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಿಶನ್ ಅಮೀನ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರು
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕಿಶನ್ ಅಮೀನ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲವ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ceremony. Now straight away coming back to the presentation ceremony, and before that, if you hear the name of Vishal Cricketers Kodical, you will never get Vishal Cricketers Kodical in any tournament rather than the World Cup of Underarm Cricket, that is RR Pai Memorial Trophy. ನಾವು RR Pai Memorial Trophyಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, 2 ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪಡೆದಂಥ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ and winning the prestigious RR Pai Memorable Trophy, which is organized by Urva Friends Cultural Association, and definitely it's a big honor for Vishal Cricketers Kodical. So that I will start with the players. I request one of the senior player of Vishal Cricketers Kodical, Jai Sheila. Jai Sheila, the big hand for Jai Sheila, one of the dashing and very, very aggressive opening batsman. Jai Sheila, please come forward. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಷಿತ್, ಬಿಕಾಸ್ being the part of winning team is definitely going to be a big achievement for Vishal Cricketers Kodical. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ RR Pai Memorial ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Rizwan, one of the best all-rounder of Vishal Cricketers Kodical, and he is the one is responsible for the success in the last 4 years for Vishal Cricketers Kodical. And Rizwan, so big hand for him. He is the one. He's really contributed a lot for the success of the team. And one more guy, one who is definitely going to be a magician as far as the 30 overs is concerned. He is more than 5 times he won the man of the series only because of his magical bowling. Kiran of Vishal Cricketers Kodical. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮನ್ ಇವರನ್ನು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲರ್. And I request Mr. Kiran, please come forward, collect your memento from our chief guest. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ ನವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನವೀನ್. Thank you very much, Naveen, for your contribution for the success of Vishal Cricketers Kodical. ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪು ಬರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ he is the one who got a mastermind of underarm cricket, the lion of Ashok Nagar, ತ್ರಿಶಾಂತ್. ದಯಮಾಡಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್, who is famously known as Neetu. Neetu, please come forward. One more wicket taking bowler of Vishal Cricketers Kodical. One who got a potential of dismantling the batting department of their opposition.
Kishore Babu, a little bit correction. Manoj Kumar is going to present this the memento for Neetu. One more player, Prajwal Page. Please come forward. Prajwal is a player of winning team and is a member of Vishal Cricketers Kodical as well, and is done a fantastic job for the success of Vishal Cricketers Kodical. I request Mr. Mangalore, please present this memento for Prajesh. One more fantastic cricketer, and he is not only the very good batsman but he is a very good fielder as well, and the famously known the Divin, and one of the master class fielder at Cow Point region. I requested Divin ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀತು ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದಂಥ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಬು ಯಾನೆ ಸಮೀರ್, and on behalf of him I request ಐಮಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಐಮಾನ್ ಇವರು ಅಬ್ಬು ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಸ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಬ್ಬು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ Hafiz ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ ಗೋಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್. Hafiz will go into collect memento and a honor from Elosis D'Souza. One more player, Suman of Vishal Cricketers Kodical, and he's also got a very good tournament for his team, home team. So I request Mr. Suman, please come forward and collect your memento on behalf of him. Pachu will go into collect the honor and memento from our chief guest Hinayat Ali Mulki will go into present this memento. One more player, Vikesh. May I request Mr. Vikesh of Vishal Cricketers Kodical, please come forward. The one more fantastic cricketer for Vishal Cricketers Kodical. The one more fantastic performer, he is also a fantastic all-rounder, the famously known as Patu Pratap of Vishal Cricketers Kodical. Please come forward. ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. One more player who has contributed for the success of Vishal Cricketers Kodical is none other than the tremendous striker of the ball, explosive batsman ಮಂಜು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್. He's done a great job for Vishal Cricketers Kodical. The one more cricketer, the very popular player who is famously known as Billy, ಸುಹೇಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಹೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. And last and final, the man who is leading from the front. Always it's when captain performs, definitely is an inspiration for the other players. The man leading from the front, the captain of Vishal Cricketers Kodical, he is the one leading the team twice
as the winners and as the runners is witnessing and leading from the band under his captaincy, Vishal cricketers Kodical. They are really conquered the art of cricket lovers and 2 times champions of UFC trophy, RP Memorial Trophy, and at the same time runners up. So congratulations Ashfaq, and we are wishing him the same kind of performance in the incoming tournaments as well. After a long wait, of course, it's a big prize distribution ceremony. Sorry for that, for the waiting, because we understand that after that 3 days of cricket, it's a very difficult one, and especially today is a hot, sunny day, and a wonderful performance at last. 2 teams qualify for the finals, and 1 team has to lose, 1 team has to win. And champion, which becomes here, is Sia Strikers Kalakanda, the big end for Sia Strikers, and even nothing to lose the heart, because the runners of this cricket tournament is Kodical Create Challengers. Once again, big end for the runners of as well. Now it's coming to the individual performance. First, we are coming to the man of the match of the mega final, and which is goes to any guess? Any guess? Yes. Very difficult one, but it is a low scoring game. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ನವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒನ್ ಹೂ ಪಿಕ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್. Absolutely, Hiten, who is the man of the match. Hiten of Kalakanda, Sia Strikers, picked up 4 wickets, 2 overs, no maiden, 12 runs, and picked up 4 wickets. And he just dismantling the batting department of unbeaten team. So my request, our chief guest, to kindly present the man of the match award. Also, he will going to get 1,000 rupees. Hiten, please don't go away. There was encouragement prizes in form of cash prize 1,000 rupees for his wonderful performance. And I request ಸೊ ಕಲಕಂಡ ಸಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ನಿತಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿತಿನ್. And we are coming to the next part of the individual performance. So far in the 3 days, we are witnessing some wonderful performance in the fielding department. There was a fantastic and spectacular catch has been taken. Some boundaries is stopped, some possible sixes which is saved, which is not lesser than the international cricket. And 3 days, a wonderful performance, and the best fielder of this KPL season 3, which goes to any guess. Of course, everyone is a name what I am hearing. Sumit has done a wonderful job, but we have to choose one. And one which is taken in the final day of this cricket tournament. What could be a certain six? He's jumped like say long jumper and taken a wonderful catch. It's none other than Shobit. Shobit of Katte Titans, who judged as the best fielder of this Kodical Premier League. I request Navin Rao to present this the best fielder award for Shobit for his wonderful catch. And if you watch that live telecast, if you go to home and watch this live telecast, even Roland Pinto sir is really surprised to see this reaction when he's taken a catch. This is a wonderful catch which is taken by Shobit. Congratulations. Next we are coming to the next department of individual performance. So far I think this tournament which is dominated by the bowlers, and the best bowler of this cricket tournament, those who are picked up many number of wickets, highest number of the wickets. Any guess? Now we are not going to disappoint the fans of Sumit. Sumit will going to be the best bowler who picked up 14 wickets in the tournament. So I request Sumit, please come forward. Sumit of Kodical Create Challengers. He is a magician as far as the bowling is concerned.
He's tried his level best in the final, but couldn't manage to give the victory. But he's tried his level best. So congratulations, Sumit, and better luck for the future. The next one, the player who got highest number of runs, who is being awarded as a best batsman of KPL season 3. Any guess? Yes, lot of competition. Afish is also in the run. Guru Prasad is also in the run. But at last we have to choose one who got the highest run. And he played some important matches. When the teams are looking for some runs, he's come and delivered. And that is none other than Guru Prasad again. The Guru Prasad who scored 53 runs. And Guru Prasad of Kalakanda Sia Strikers will go into collect not only the attractive trophy but the bat which is signed by all officials and some legend cricket players. The big moment here for Guru Prasad. It's a wonderful tournament he's got from the bat, and he is definitely awarded with a bat and attractive trophy. So we are coming to the biggest award as far as the individual prize is concerned. It's definitely going to be a dream of each and every player to become the man of the series of KPL season 3. And man of the series, certainly it's always opportunity for the all-rounders, because they got opportunity to pick the wickets, they got opportunity to get the runs from the bat, and only all-rounders get the opportunity here. And please tell me the name of all-rounders who is, yes, called as a man of the series. Absolutely right, it's a Ganesh of Kalakanda Sia Strikers, who scored 49 valuable runs and he picked up 10 wickets from his bowling. This is absolutely a match, the tournament winning performance. That's why he is a man of the series of Kodical Premier League season 3. Straight away we are coming to the biggest award of the tournament. Of course, at last the two teams which just came into the final, and one team, of course, they're unbeaten in the league matches, they're unbeaten in the playoff, but in the final they couldn't manage to win the match, but they won the heart of cricket lovers because they really deserve these runners up because of their performance. So I request Kodical Create Challengers captain Sandeep as well as all the players, please come forward. Very attractive trophy they will going to get along with the cash prize of rupees 20,000. So what a comeback here for the captain Sandeep. He's been injured in the last tournament and he's bounced back like a phoenix bird, and he takes his team into the final, and definitely is deserved this place. The runners up, absolutely fantastic performance, leading from the front. Sandeep and all the players did a great job to become the runners of this prestigious Kodical Premier League season 3. Everyone is responsible. This is a teamwork, along with the leadership of Sandeep and ownership of course, owner really happy with the performance. So congratulations, Kodical Create Challengers, for your performance. So congratulations, Jagadish is the owner of yes, Kodical Create Challenge, a very happy owner, and thank you very much. Congratulations each and every one of Create Challengers. Really, they played a very good game of cricket. And now it's a time to announce the champion of Kodical Premier League Season 3. It's none other than Kalakanda Sia Strikers. Sia, the name of a baby.
the child of our owner, baby girls, Sia. So Sia strikers, Kalakanda, big hand for the champions. They really played like a champion and they deserve this place. The champions of this Kodical Premier League Season 3. So big hand for the champions. Here is the champion of Kodical Premier League, Kalakanda Sia Strikers, becoming the champion. It's a very happy captain along with the owner and Srimati Tara Suresh G. Pujari definitely is the happy owner and they are lifting the prestigious trophy. So big hand here for Kalakanda Sia Strikers deserve this champions of this prestigious Kodical Premier League. Thank you very much and congratulations for the winners, congratulations for the runners up. Nothing much to lose the heart for the losers because winning and losing is a part of cricket. That's it from the presentation ceremony. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಲೋ ಬಂದಾಕ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ತಿಂತಿ ಇನ್ನೇ ಪಾಠ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಯ್ಲೆ ಬಂದಾಕ್ರೆ ಓಕೆ.